السلام علیکم، میں ہوں علی آفتاب سعید اور میں ہوں اس وقت اسلام آباد میں T4JF کی ایپ لانچ ہے. باہر ابھی تک ایونٹ شروع نہیں ہوا لیکن آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ کتنی رونق ہے، کتنی گہما گہمی ہے، کتنے لوگ ایکسائٹڈ ہیں. اور آج میرے جو وکیل آن لائن کا باکس ہے اس کے پہلے گیسٹ ہیں عادل عزیز قاضی صاحب، اسلام آباد بار کاؤنسل کے ممبر ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. سر پہلا بہت ہی ضروری سوال یہ ہے کہ ہم لاہور سے آئے ہیں اور ہمیں یہاں پر نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی مل رہا ہے اسلام آباد میں. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ اسلام آباد اور لاہور کے وکیلوں کے مزاج میں کوئی فرق ہے اس کی وجہ سے؟ نہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ جو ٹھنڈا پانی ہے اس کی تو کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، لیکن مزاج میں فرق ہے. دیکھیں نا، ہر شہر کا، ہر علاقے کے لوگوں کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی جس طرح کی پبلک ہوتی ہے، ہم بھی تو اسی پبلک کا ایک حصہ ہے. تو وہ جو مزاج ہے وہ شہر ٹو شہر ویری کرتا ہے. اس سے وکیلوں کا وکیل نہ ہونے کا کوئی نہیں ہے. اچھا سر، آپ بہت آئیڈیل جو ہے نا ہمارے گیسٹ ہیں پہلے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود سے ٹیک میں انوالوڈ ہیں، آپ خود سے ایک ایپ بھی بنانے جا رہے ہیں. تو یہ جو اس طرح کے انیشیٹوز ہیں، یہ جو لیگل سائڈ کو ٹیکنالوجی کے ساتھ امبیڈ کیا جا رہا ہے، اس پر آپ کے کیا تاثرات ہیں، کیا تحفظات ہیں اور کیا چیزیں آپ کو لگتی ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت بہتر ہو جائے گی؟ بیسیکلی تو دیکھیں نا جی کہ جس طرح ساری دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے، ہر چیز، تمام بزنسز جا رہے ہیں، تو لیگل فیلڈ بھی تو اسی طرح کا ایک بزنس ہے. تو ہمیں بھی تو اسی طریقے سے بھی آپ جب دنیا کے ساتھ چلیں گے تو پھر ہی کمپیٹ کریں گے باقی پروفیشنز کے ساتھ. تو جب آپ اس طریقے سے ساتھ نہیں چلیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے، کمپیٹ نہیں کریں گے. اور ساری دنیا جس طریقے سے چل رہی ہے ہمارے لیگل پروفیشن میں، جس طرح سے فار ایگزامپل ہے کہ پہلے ہم جو ہے جب ہم نے پریکٹس شروع کی تھی تو لا سائٹ نہیں تھی PLD والوں کی یا اس طرح دیگر لا سائٹس پر. تو ہم جو ہے وہ بکس سرچ کرتے تھے تو ایک پرپوزیشن کے اوپر سارا دن لگ جاتا تھا. اب اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ پرپوزیشن آپ ابھی موبائل پہ لکھتے ہیں اور 1 منٹ میں آپ کا وہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ سالو ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ خالی یہ یوزیج نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی جس طرح سے ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو تمام کا تمام جو ریکارڈ ہے اس کو آپ ویب سائٹ کے اوپر جو بھی آرڈر لینا چاہیں تو آپ لکھیں گے تو ویب سائٹ پہ آرڈر لے لیں گے. تو یہ بینیفٹس، اس طرح کے بہت سارے بینیفٹس ہیں. بالکل ٹھیک. اور آپ کے خیال میں ابھی تو بہت گنجائش ہے نا؟ ابھی تو سیچوریشن والی بات تو پتہ نہیں کب آئے گی. ابھی تو جتنا بھی لوگ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ڈیجیٹلائزیشن میں، اس میں کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی جی کرنا چاہیے. تو وہ جو آخری سچویشن ہے وہ اس میں نہیں آئے گی. اس کی وجہ یہ کہ جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوگی اور ٹیکنالوجی لیٹسٹ آتی جائے گی اس کی ضرورت رہے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی زیادہ ہم ایڈوانس ہو جائیں کہ بس آخری کنارے تک پہنچ جائیں، وہ ہو نہیں سکتا. تو ٹیکنالوجی کی ضرورت بھی رہتی ہے اور آپ جب اس کو استعمال کریں گے تو ڈے بائی ڈے اس کی یوزیج میں اور اس کی ضرورت میں مزید اضافہ ہوگا. تھینک یو سو مچ سر. پلیز انجوائے دا ایونٹ. تھینک یو. I thought कि नोटरी का क्या फंक्शन है? I was like, नोटरी का काम यही है ना कि थर्ड पार्टी नोटरी का काम यही था ना, basically third party you can, if you that's what software yes, so if in doubt you go and check the notary तो बैठे तुम्हारे पास साइन किया
I never did. Then I saw the QR code issue. QR code is and then you can verify. Then we added privacy settings. अब आप मुझे सिग्नेचर के प्लेटफॉर्म अभी करें more and more people. I think बोल दीजिएगा थोड़ा इधर भी भाई अब आपकी तरफ से उसी तौर पे all the way from my side. Request everybody to take a seat, please. We'll be starting shortly. Kindly take a seat. Mr. Justice Sayyid Mansoori Shah Sahab, Honorable Mr. Justice. वेलकम बैक। मैं आज आपकी जान नहीं छोड़ूंगा, बार बार आता रहूंगा लाइव। इस वक्त मेरे साथ हैं बैरिस्टर ख्वाजा अजीम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मुझे ये बताएं कि यंग लॉयर्स क्या सोच रहे हैं, उनको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी था इसको एम्बेड करना लीगल साइड को टेक में, और क्या हम टाइमली आए हैं, लेट हो गए हैं, जल्दी कर रहे हैं, किस जगह पर हैं? First of all, I would say it's a wonderful initiative, and the young lawyers especially are really looking forward towards technological advancements in our legal industry. I think over the past decade, पूरी दुनिया भर में जो जितने भी businesses हैं and industries हैं, the tech side has redefined and reshaped them, and our legal industry is no such exception. So, and I think we are far from the world in terms of technological advancement in our legal industry, but it's never too late. And I think it's time that we should utilize the technology at its maximum, because I've been studying about it lately that in US, as you know, the concept of metaverse, जो मार्क ज़करबर्ग ने इंट्रोड्यूस किया। सो यूएसए में तो अभी बातें चल रही हैं कि जी हम वर्चुअल कोर्ट्स बनाएं जिसमें लॉयर्स एंड जजेस की इवन अवतार्स होंगे,
and they will be sitting in their offices or homes, and the judges will be sitting in their offices, which also ensures access to justice. And I think it's a wonderful initiative. And other than that, I think in our criminal justice system, हमें बहुत ज़रूरत है technological advancements की, especially जो हमारे criminal investigation procedures हैं, they need a complete overhaul. It's very unfortunate that even in 2022, हमारी जो police है ना कि वो scientific method से evidence trace करे, they still resort to measures such as torture to extract as much as evidence as they can. Unfortunately, that's inadmissible in court, which results in miscarriage of justice. So I think पूरी दुनिया भर में modern digital forensic scientific investigations का दौर चल रहा है. So we also need to think on this side, and I think it's the need of the hour. अच्छा, आपकी तो ज़रूर मुलाकात रहती होगी अपने हम उम्र लॉयर्स के साथ. आपको लगता है कि जो यंग लॉट है वो टेक सेवी है, या उनको कुछ सिखाना पड़ेगा, उनकी कोई वर्कशॉप्स करनी पड़ेंगी? I think सबसे बड़ी बात ये है कि the young lawyers are welcoming towards any sort of technological advancement. और जब आप welcoming होते हैं, unlike our seniors, it has been seen that in our fraternity as well as the judiciary, there has been a reluctance कि वो technologies को somehow adopt करें. Even in courts, हम देखते हैं आज भी judges इतराज करते हैं, इसको बुरा समझते हैं. If you have electronic devices such as tabs, mobiles, जिसमें से आप अपनी case brief लाके share कर सकते हैं. So I think जो young lawyers हैं, they're very welcoming, and I think with the right type of training and workshops, they will hugely benefit from it. थैंक यू सो मच. इवेंट शुरू हो चुका है. हम छोटी सी ब्रेक लेंगे ताकि आप इवेंट देख सकें, और उसके बाद हम मजीद गेस्ट के साथ इसी पेज पर वापस आएंगे. Transforming the practice of law across the globe, not just in Pakistan. If it is used effectively in Pakistan, technology will be able to solve to a very great extent the critical issues of access to justice. This year, the forum brings together everybody to the table, and it sheds light on tech innovators that are committed to ensuring access to justice and strengthening the rule of law through the use of technology. So it's crucial to note that technology can bridge the gap between those who are the most in need of legal help and those who can provide that help. At Justice Project Pakistan, we've been focused on increasing access to justice for Pakistani prisoners at home and abroad. And we're doing this through launching our digital platform that pairs lawyers from across Pakistan with families of prisoners in need of legal representation. Vakil Online, the digital ecosystem of which I speak, is already making waves. Just under a year prior to its official launch, the platform has enabled socio-ethically inclined legal practitioners to answer over 10,000 legal questions posed online by citizens. It has connected these lawyers to countless litigants and generated economic activity for them as well. Now, in just a very short time, we're going to talk a little bit more about the impact that Vakil Online is having, but I want to frame it first in the context of when it came about. So currently, there's around 10 to 11,000 Pakistani prisoners overseas. And these Pakistanis, far from home, are at the mercy of local courts. They don't have access to lawyers, they don't have access to impartial translators or counselor assistance from their diplomatic missions. These prisoners often face the harshest of punishments because of their lack of understanding and engagement with the foreign legal system, and also because of their inability to directly communicate with the court, and also, one of the most important, their inability to actually produce any evidence in their defense because they're so far from home. So with JPP's digital platform, Vakil Online, we will pair these poor Pakistani prisoners and their families with legal representation in their foreign country, in the hopes that even though they're the farthest from home, they're able to find the help that they so desperately need. I will quote a much recent example where we had 41 prisoners, Pakistani prisoners who had been repatriated from Sri Lanka back in November 2020. They came under the transfer agreement that was signed between the two countries, and they were in a Gala jail, waiting under Pakistani law to have their sentences adjusted. We, as Justice Project Pakistan, used Vakil Online, and we posted a query, and within 24 hours, we got hundreds of qualified lawyers willing to come forward and represent them pro bono
In the end, we settled on 12 of the brightest young legal minds who represented them before all forums, including before the Ministry of Interior, before the CNSA courts in Pindi, and before the Islamabad High Court. And I'm very happy to say that right the day before Eid, all 41 of them, after 18 months, were finally able to go home and spend time with their families. So some of those young lawyers are in the audience today, and I would like them to stand up and take a bow because they're the real heroes of defending these prisoners. Can you please stand up? Thank you so much. So across its various platforms, Vakil Online has allowed over 60,000 citizens across Pakistan to receive legal advice. Its first Facebook group amassed over 40,000 members. It had 30,000 requests for legal assistance and over 120,000 responses. Approximately over 500,000 plus people view the legal content each month, and the content ranges from case law and precedents, and they've had over thousands of client and lawyer pairings on their own. We have another initiative by Justice Project Pakistan, along with the Research Society of International Law, which is called Benchbook PK, which is also a curated human rights resource aimed at the judiciary and aimed at actually equipping the members of the judiciary to facilitate the judgment writing, the capacity building, and general awareness of both domestic and international law. Now, in conclusion, it must be noted that this vision for digital transformation of access to justice that you see being realized around you today could not have been possible without the assistance of the Federal Republic of Germany. Thank you, Ambassador Schlaget, for giving wing to this vision for a digital legal Pakistan and for reposing your trust in us to do so. Lastly, going forward, we hope that all civil society organizations are inspired, like JPP, to take advantage of the trends highlighted today at the forum. We hold the knowledge and the key to some of the most complex and pressing problems faced in this country. So I hope that with all of the funders and the investors here, that you do not count out civil society when you think about investing in technology that truly has the power to bring systemic change. Thank you so much. Thank you, Justice Ananda. I'd like to invite His Excellency Mr. Ambassador Schlagek. Mr. Schlagek is the patron in chief of the Technology for Justice Forum. The organizers of this conference, ladies and gentlemen. Let me say at the outset how delighted I am to be here this afternoon, and that particularly for two reasons. Reason number one is to express my appreciation for and it has a lot to do with talk today about the really thriving digital ecosystem here in Pakistan. वेलकम बैक। अब मैं हूँ इकरा मुसद्दिक के साथ, जो कि डायरेक्टर लाइसेंसिंग हैं STZA में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आपको इवेंट का एम्बियंस कैसा लग रहा है और आपके ख्याल में इज दिस नीड ऑफ द आवर? Thank you very much for having us here. It looks fantastic. I'm so excited. I think it's the need of the hour to have legal tech finally in Pakistan. In other countries, this has been done 10 years ago. And for the past decade, we've seen a boom, especially in the last 3 years or so, where legal tech has really come to the forefront. So it's absolutely essential for Pakistan that, we give our legal community that space. अच्छा, और आपको ये ऐसा तो नहीं लगता कि हम शायद बहुत लेट हो गए हैं, कभी कैचअप ही नहीं कर पाएंगे? देखिए, लेट हम डेफिनेटली हुए हैं, नॉट जस्ट लीगल टेक स्पेस में बट ओवरऑल टेक्नोलॉजी स्पेस के अंदर। लेकिन क्या हम कैचअप कर पाएंगे या नहीं, देयर इज ऑलवेज अ चांस इफ वी हैव द राइट पॉलिसी इनिशिएटिव्स एट द मोमेंट।
गवर्नमेंट सपोर्ट आता है प्राइवेट सेक्टर के लिए एंड वी हैव द राइट ट्रिपल हीलिक्स मॉडल एंगेजमेंट जिसका हम एफटीसीए में कहते हैं कि आपकी इंडस्ट्री गवर्नमेंट और एकेडेमिया मिल के काम करें इफ यू डू दैट नाउ वी हैव द बेस्ट टैलेंट इन द वर्ल्ड आवर पीपल आर अमेजिंग सो देयर इज नो स्टॉपिंग व्हाई वी कैन डू इट मेरा एक बड़ा जाती किस्म का सवाल है प्लीज बताएं। और वो ये कि इस्लामाबाद में इतना बेहतर मौसम है, यहाँ पे रहने वालों पे ज्यादा टैक्स नहीं लगना चाहिए? देखिए मैं एफटीसीए से हूँ हम तो टेक्नोलॉजी वालों को टैक्स इंसेंटिव्स दे रहे हैं तो चाहे इस्लामाबाद हो चाहे लाहौर कराची हो मौसम के बगैर हम आपको टैक्स इंसेंटिव्स देंगे लेकिन ये ऐसा ऑन लाइटर नोट बिल्कुल होना चाहिए अच्छा, एक और चीज ये कि हमारा जो ये सारा एक वो है माहौल, वो आते साथ ऐसे नहीं लगता कि कुछ वकला का कन्वेंशन हो रहा है, तो आपके ख्याल में ऐसे ही होना चाहिए या बहुत फॉर्मल कर देना चाहिए इसको? मेरे ख्याल से बिल्कुल ऐसे होना चाहिए इट्स अबाउट टाइम कि आप लीगल कम्युनिटी से बाकी लोग भी इंगेज करें और वकला की सॉफ्ट साइड भी देखें और ज़रा ज़्यादा इंटेलेक्चुअल साइड भी देखें सिर्फ हम कोर्ट साइड देखते हैं मेरे ख्याल से ऐसे फोरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपका भी व्यू थोड़ा सा चेंज हुआ है आई एम श्योर इसके थ्रू और लोगों का भी थोड़ा सा व्यू चेंज हो गया इस बारे में थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच जी प्लेजर ठीक है ऑलराइट when it comes to access to justice. Here, technology is indeed not an end in itself, and should never be, but is a mere tool for making justice more accessible and equitable, hence making people's lives better. In that sense, I'm very much obliged to Justice Project Pakistan, with which the General Embassy has been collaborating for years in a very trustful and productive manner on human rights issues. One upshot from this very close collaboration is the app Akil Online, which I am certain will also be presented here in the course of this event. With the decision to fund the programming of a smartphone app, the embassy has entered uncharted territory even for us. Initial aim was to develop an app which enables inmates on death row, respectively, and families and relatives to get in touch with suitable lawyers who might take up the case even pro bono. And you know, we are very much engaged in encouraging steps leading to the abolition of the death penalty, or at least moves towards it. Since then, the usability of the app has evolved way beyond the initial scope. And Sarah has alluded to the, I think, very pertinent use of this app, particularly to the benefit of Pakistani prisoners of war. But there are other legal services imaginable which provide people an easier and affordable access to the legal system. To discuss and evaluate options and feasibilities will certainly be worth of today's consideration. Needless to say that in our view, the human rights dimension, for instance, pro bono approaches for those who have not the financial means to cover legal expenses, should always be on our mind when in future and further developing this app. With that, all the best for future endeavors surrounding Justice Project Pakistan. मैं मुजफ्फर मिर्जा साहब के साथ हेड ऑफ लीगल अफेयर्स हैं एससीसीपी में। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आपको एम्बियंस कैसा लग रहा है, इवेंट कैसा लग रहा है? Marvelous, Ji. It's a great effort, and I must congratulate the organizers and you for such a beautiful event. Let's hope we'll conclude something good for the nation as well. और आपको लगता है कि ये ऐसी चीज है जो कि एससीसीपी में आ सकती है? जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी इज वेरी इम्पोर्टेंट और हम तो आजकल यूज़ करते हैं इसको। हमारी मोस्ट ऑफ द हियरिंग्स में खुद एक एपलेट अथॉरिटी को हेड करता हूँ, रजिस्ट्रार्स की अपील आती है तो हम वीडियो कॉन के थ्रू अपनी
میرے خیال سے 90% ہیئرنگس اس کے تھرو کرتے ہیں. اسی طرح ہم نوٹسز وغیرہ سروس ڈسٹریبیوشن آف جو نوٹسز ہوتے ہیں یا ریپلائز ہوتے ہیں, کمیونیکیشن ود وہ سب ہم تھرو ماڈرن مینس کرتے ہیں, واٹس ایپ, ای میلز اینڈ ویڈیو کال ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی. تو ٹیکنالوجیز ہم انکریج بھی کر رہے ہیں فار کمپنیز کہ وہ کمپنیز بھی زیادہ زیادہ اڈاپٹ کریں. اور اسپیشلی کووڈ کے دوران تو ہم نے کافی بورڈ میٹنگز ہر چیز اس پہ ہم لے گئے تھے. ہماری لاء میں کافی پروویژنس تھی, ہم نے آلریڈی کیٹر فور کی ہوئی تھی 2017 کا جو کمپنیز ایکٹ تھا. کافی ہم ٹیکنالوجی پہ ہمارا ایمفیسس ہے. اچھا, اس طرح کبھی آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے انیشیٹو سے جو خواتین ہیں ان کو زیادہ انکریجمنٹ ملے گی یا موقع ملے گا کہ وہ بھی زیادہ پریکٹس کر جی سکیں؟ بالکل, بیکاز دیکھیں آپ پریکٹس میں اگر پریکٹس پیورلی پریکٹس کی بات کی جائے, پریکٹس میں آپ کو پتہ ہے کورٹس کی ہماری انوائرمنٹ اور ہماری جو سوشل کنڈیشنز ہیں, ریکوائرمنٹس ہیں, اس میں انیبیشنز ہوتی ہیں پلس کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. تو خواتین آگے کورٹس میں اپیئر نہیں ہوتی. اور میرا کوئی 20 سال سے زیادہ ایکسپیرینس ہے, تو یہ تو بڑا انیبل کرے گا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری اپیلز میں خواتین آتی ہیں, وہ ویڈیو اپنے گھر میں یا آفس میں جہاں بھی بیٹھی ہوتی ہیں وہاں سے ہم سے کمیونیکیٹ کرتی ہیں, پلیڈ کرتی ہیں. تو ایٹ دا کنوینئنس آف دیئر ہوم یا ایٹ دیئر آفس وہ پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں پروسیڈنگس میں. سو اٹس ویری کنوینئنٹ اینڈ اسپیشلی عورتوں کے لیے تو یہ بہت ہی اچھا, بلکہ سب کے لیے. آئی تھنک اس میں کوئی جینڈر بائس والی بات نہیں, یہ تو سب کے لیے کنوینئنٹ ہے. ہمارے لائرز بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. ہمارے خیال سے تھوڑا سا اپریہینشن ہمارے ہاں یہ تھا کہ شاید لائر دے آر ناٹ ٹیکس سیوی, حالانکہ یہ اٹ از آئی تھنک موسٹ ٹیکنالوجی از موسٹ فیوریبل ٹو لائرس, اسپیشلی ٹو بزی لائرس. ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آفس سے نکلیں, آئیں, کورٹ کا ویٹ کریں. اٹس بیٹر کہ وہ ان کی ہیئرنگز اوور دا ویڈیو کال ہو جائیں. اب تو بڑی اچھی زوم آ گیا ہے, ڈفرنٹ ٹیکنالوجی اویلیبل ہے. I think for men and for women this is a very good option. Yes, ہمارے سوسائٹی میں کیونکہ بیریئرز ان کے زیادہ ہیں, much easier and much helpful. اچھا سر, آپ نے وہ نوٹ کیا ہوگا کہ نیوز کاسٹرز میں سب سے پہلے یہ ہونا شروع ہوا کہ اوپر سے بالکل سوٹڈ بوٹڈ اور نیچے نکر پہنا ہوا ہے کیونکہ نظر نہیں آ رہا. تو آپ کو لگتا ہے کہ وکلا بھی ذرا ریلیکس ہو جائیں گے؟ تو اچھی بات ہے نا یہ, میرا خیال سے وہ اکاؤنٹس بہتر طریقے سے کریں گے. ابھی ایسا لگتا تھا کہ شاید وہ دے آر ناٹ ان دیئر مائنڈ, جو سو ٹائٹ ٹائی انہوں نے لگائی ہوتی ہے. شکر کریں گے انگلینڈ نہیں ہے تو انہوں نے وہ وگ بھی پہننی ہو رہی تھی. تو آئی تھنک دیٹ ول ہیلپ, اور اس سے وہ بہتر طور پہ ایکسپریس کر سکیں. میں سے آن اے لائٹر نوٹ میں ہر گیسٹ یہ بتاتا ہوں یا آپ کہنے شکایت لگاتا ہوں کہ جو لاہور میں لانچ تھی نا اس میں کھانا پہلے سرو کیا تھا اور ایونٹ بعد میں تھا. یہاں پہ ہمیں ایونٹ پہلے کروا رہے ہیں اور کھانا بعد میں. کھانا بعد میں, لیکن اس لاہور میں تو پھر آپ کے ایونٹ میں رہا کوئی نہیں. اسلام آباد میں پھر تھوڑے سے لوگ سوفسٹیکیٹڈ ہیں. ایسے آخری سوال, اسلام آباد میں موسم اتنا اچھا ہے, یہاں پر لوگوں کا بجلی کا استعمال کم ہوتا ہوگا, تو مطلب آپ کا نہیں خیال کہ اسلام آباد میں رہنے والوں پر زیادہ ٹیکس لگنا چاہیے؟ اسلام آباد میں نہیں, اسلام آباد والوں نے بیچاروں نے کیا کیا, موسم اچھا ہے, یہاں کے لوگ بھی اچھے ہیں. بلکہ ہمیں تو آپ کو اسلام آباد کے انکریج کرنا چاہیے, لیس ٹیکس کرنا چاہیے, کیونکہ ہم تو آپ کے کیپٹل میں بیٹھے ہیں اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے آپ کو تو ہمیں اوور ٹیکس کم کرنے چاہیے, اسپیشلی جو ہماری طرف آفیسرز ہیں, زیادہ تر یہاں لوگ آفیسرز ہیں ود لمیٹڈ مینس, تو وہ آلریڈی دے اوور ٹیکس. سیلریڈ کلاس آپ کو پتہ ہے اوور ٹیکس, تو ان کو تو اور ریلیف کوئی نہیں چاہیے. اور اسلام آباد میں مہنگائی زیادہ ہے, آپ کو پتہ, تو پرائسز زیادہ ہیں کمانڈیز کی بنسبت اور سٹیز کی. سر مجھے یہ لگا کہ ویسے تو ظاہر ہے میرا بہت زیادہ وکلا سے ملنا جلنا ہوتا ہے اور میرا پرسیپشن بہت زیادہ بدلا ہے اسی وجہ سے, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد میں زیادہ خوش اخلاق ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ کہ ان کو نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ملتا ہے. مجھے سائنٹیفک ریزنز تو نہیں پتا, شاید یہ بھی انوائرمنٹ, میرے خیال سے پانی سے زیادہ از این انوائرمنٹ آلسو.
Islamabad is more green, and I think उसकी वजह से लोग खुश रहते हैं. हमारे बदकिस्मती से दूसरे शहरों में ग्रीनरी बहुत कम होगी. यहाँ भी काफ़ी कम होगी है बरस में, लेकिन फिर भी काफ़ी ग्रीन है. तो इंसान को खुश रहने के लिए ग्रीन एरिया और जहाँ ग्रीनरी होगी, इसका मतलब है वाटर रिजर्व हैं, थोड़ी सी गर्मी पड़ती है या बारिश हो जाती है, तो गॉड गिफ्टेड एरिया तो है. तो मेरा तो ग्रीनरी बड़ी ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई खुश रहने के लिए ग्रीनरी होनी चाहिए. Thank you so much, You're sir. welcome. Enjoy the Thank you, event. thank you very much. Thank you for inviting. Include Maniza Jahangir, leading journalist and board member of the Asma Jahangir Legal Aid Cell, Sadia Khan, the commissioner of the SECP, Rahat Gunain, the chairperson of the Competition Commission of Pakistan, Dr. Tariq Manuri, chairman of the Higher Education Commission, and Amir Ahmed Hashmi of the Special Technology Zones Authority. I don't see him yet, but there are other people who are here already. Javed Iqbal and Ikram Asadik have joined us. Please call him, find out where he is. We look forward to hearing from all of these people about the role that they can and do play in improving public trust in government institutions, as well as the ways in which they are enabling tech-based innovation in Pakistan. The Chief Justice of the Islamabad High Court, Justice Athar Minallah, will deliver closing remarks, and if the newly appointed Federal Minister of Law gets free from earlier commitments, he will deliver a closing remark as well. Indeed, your patronage, Lordship, of this event is a great honor and inspiration to us all. Lastly, and I'm just getting done here, I would like to thank key members of our own team who have been engaged with T4JF since the beginning. Muhammad Ahmed Mansoja, renowned lawyer, he's very active on television, and brand manager of Vakil Online, Faisal Aftab of Zain Capital, and he's sitting right here in case any of the innovators need checks written. It's the guy right here in the corner. And my own CTO, Abdul Ghani, who has cemented my belief that homegrown legal technologists exist, that they can innovate, and that we need more of those people. To all the lawyers here, I would suggest that you take a good, long, hard look at technology. Technology lawyers, people who practice the law and understand technology, are the future of the profession. And of course, there is Sara Bilal, who convinced me to bring my enthusiasm for tech-based reform in the public education sector to law and justice. That was, I think, 3 years ago, Sarah. You've really thrown me down the rabbit hole. It's fun though. Lastly, no conference is possible without key logistics personnel. Mughis, Bhatt, Mariam Tabassum, Hassan Shader, other team members of Justice Project Pakistan who have brought these events to life. There is Ali Aftab Saeed in the Vakil Online studio back there, interviewing all the attendees, and there is my own, my number 2, Ramla Beg, who has been with me on this journey as well. Through the forum, we are exploring the idea that legal tech can be a game changer for Pakistan. We are exploring what a digital legal Pakistan may look like. We are discovering how to overcome structural resistance to change. We are also discussing ways in which to speed up the growth of the legal tech industry in Pakistan and what government can do to create a more enabling environment. And hopefully at the end of this day, policymakers may leave here with a better idea of how to speed up Pakistan's legal tech transformation. A great Indian philosopher, Jiddu Krishnamurti, once said, "It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society." Today, Pakistan sits on the precipice of economic disaster. Our society is largely uneducated and polarized, and our institutions are failing to realize the promise of Pakistan. This must change, and this forum is committed to promoting the use of technology to create greater transparency and accountability in our justice system and to create much needed tangible hope for a better future. Thank you. Thank you very much, Fandi. We're going to move swiftly along to the product presentations.
where legal tech entrepreneurs and innovators will showcase to you their products and how citizenry can use their products to promote efficiency in our profession. For this, I'd like to invite Syed Bakhtiar Kazmi, a young advocate, leading enthusiast of technology, and he's just completed his clerkship at the Supreme Court of Pakistan. Thank you, Prince, for the invitation. I'd like to welcome all our honored speakers and guests for showing up today. We're truly honored by the people who have arrived. Without further ado, let's kick off the conference. And we'll have our first product demonstration from World Agreements, and the presentation will be done by Mr. Umar Gilani. Welcome to worldagreements.com. Entering into contracts used to be expensive, slow, and difficult, and keeping track of them was even worse. We've made agreements cheaper, easier, and more secure than ever before. Human beings have been entering into written agreements for thousands of years, on leather, on parchments, and on paper. But the IT revolution was bound to transform the way we do agreements. That is what we've done at World Agreements. It provides you powerful tools to create new agreements, view existing agreements, verify their authenticity, upload your agreements, and search third-party agreements. Write, sign, register, archive, and verify agreements all in one place. From car sale and purchase and rent agreements, employer contracts to non-disclosure agreements, and many more. What if there was a place where you could store all your agreements and then retrieve them whenever needed? At World Agreements, you can find all your agreements in one place. Incomplete, pending, completed, canceled agreements. Agreement stats. You can sign contracts sitting anywhere in the world. Drafting was never this easy. You can now use our formats developed by eminent transactional lawyers to draft agreements for your clients or for yourself in minutes. You can also sign and download the agreement. You can also verify your agreements using our signature platform. The signature meets all the requirements for authentication laid in the Electronic Transactions Ordinance 2002. Download it or share it via WhatsApp. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। मैं इस वक्त खुश भी हूँ और अफसरदा भी हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं नीलोफर आफरीदी काजी के साथ हूँ, ये मेरी दोस्त हैं, और अफसरदा इसलिए हूँ क्योंकि मुझे इनको देखते साथ भूख लग जाती है और मैंने खाना भी नहीं खाया हुआ। और मैं आपको यहाँ पे शिकायत लगाना चाहता हूँ कि लाहौर में आपको पता है ये इवेंट जब हुआ था ऐप लॉन्च, तो खाना पहले था और इवेंट बाद में था। यहाँ पे खाना बाद में है। ये कितनी ज्यादती हो रही है हमारे साथ। आपको बिठाने के लिए ना सुने स्पीचेस पहले, फिर खाना देंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी तो किताब भी आ गई, बिल्कुल पाकिस्तान में कब मिल गई? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप किताब खानों से पूछें, यहाँ के जो पब्लिशर्स हैं उनसे जरा पूछ लें। मैंने बहुत कोशिश की थी कि किताब यहाँ छपे, मगर वो उनका इंटरेस्ट नहीं था। मेरी बलूचिस्तान की वजह से कि इसलिए मेरी किताब बलूचिस्तान पे और उनकी जो रवायती खाने हैं उनके बारे में है, कुलिनरी टेल्स ऑफ बलूचिस्तान। और आपको तो पता है पाकिस्तान में। अच्छा चलें आगे चलते हैं। बात ये है कि इस वक्त हम एक ऐप लॉन्च पे हैं और ये वुकला की ऐप है। जी। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान में खाने की ऐप कब आएगी? और दूसरी चीज ये कि इस तरह की एप्स का क्या फ्यूचर है? मेरे ख्याल में बहुत अच्छा फ्यूचर है, इसलिए पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा मसला है ना वो इंफॉर्मेशन, और वो है ट्रूथ इंफॉर्मेशन। हम बहुत सुनते हैं ना फेक न्यूज।
सो अगर आपने इस ऐप के तहत आपने डायरेक्ट लिंक किया हुआ है टेक्निकल एक्सपर्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ तो लॉयर्स और क्लाइंट्स के बीच में आपने एक वो मिडिल मैन हटा दिया है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई मसला है और आप चीचावती में बैठे हुए हैं या फैसलाबाद में बैठे हुए हैं या स्कर्दू में बैठे हुए हैं, और ये होना चाहिए आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, एक फ़ोन होना चाहिए और पता होना चाहिए कि ये ऐप एग्जिस्ट करता है। वकील ऑनलाइन आपको वो वकील आपको दे देंगे, मगर आपको पता होना चाहिए कि ये अवेलेबल है। तो उसमें थोड़ा आपको मेरे ख्याल में मार्केटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, मगर ये जो मिडिल मैन है, सिफारिश की ज़रूरत नहीं होगी आप लोगों को, फिर आपको सीधा पता लगेगा कि कितना कॉस्ट होगा, इसलिए वकील आपको सीधा बता देगा कि इस काम के लिए ये प्राइस है। आप मेरे ख्याल में शॉप भी कर सकते होंगे ना, 2-4 वकीलों को कंपेयर भी कर लें अगर वो राजी मंद है आपका काम करने के लिए। तो ये मेरे ख्याल में इसकी बड़ी अच्छी फ्यूचर है, जिस माहौल में आपको बहुत सिफारशी ज़रूरत पड़ती है एक्सपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए। सो मैं दाद देती हूँ कि वकील ऑनलाइन ने एटलीस्ट ये जो बहुत बड़े मसले होते हैं कि कैसे करें, और लाइक लीगल इश्यूज पे, पर्सनल हो, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो या मैरिज हो, जो भी चीज़ें होती हैं, एक जान भी पता भी करना होता है कि आपके हकूक क्या हैं ना। बिल्कुल, पहले तो आप वो भी जान पहचान भी करना पड़ता है। सो अगर आप खुद गूगल नहीं कर सकते या खुद तहकीकात नहीं कर सकते, वकील आपको समझा देगा या आपकी वेबसाइट बता देगी। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि हम अमूमन जब वकला के बारे में सोचते हैं तो हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं, और जब से ये ऐप आई है वकला ने ज़्यादा इंटरेक्ट करना शुरू किया है पब्लिक के साथ, तो उससे भी उनका एक सॉफ्ट इमेज सामने आया है। ये भी है, और मेरे ख्याल में वकला को उनकी जो सियासी जो इमेज है वो थोड़ा हट जाता है कि वो जिसका वो जो काम के लिए जो उनने ट्रेनिंग की थी उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी आती है। इसलिए ये भी आप सोचें कि वकला को भी क्लाइंट्स चाहिए होते हैं ना, और क्लाइंट्स भी चाहिए होते हैं जो पे भी करते हैं। इसलिए ये भी आपने सोचना है कि आपने 16 साल आपने ट्रेनिंग की है या 20 साल आपने ट्रेनिंग की है, उसके बाद आपको एक जॉब तो चाहिए होती है, और जॉब के लिए आपको क्लाइंट्स चाहिए होते हैं। और ट्रेडिशनली आप या वकील का कोई दफ्तर होता है या कोई उस किस्म का, मगर आजकल आपने वो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जॉब्स के लिए आपने सोचना पड़ता है। सो ये एक टेक इंडस्ट्री और ये ऑनलाइन जॉब्स की अपॉर्चुनिटी को बढ़ाते हुए वकील ऑनलाइन ने ये मेरे ख्याल में एक इंटरेस्टिंग जॉब अपॉर्चुनिटी वकीलों के लिए भी शुरू की है। सो इट्स गुड फॉर बोथ साइड्स। Thank you so much for your You're time. welcome. That they were serving their communities and building successful commercial practices all at the same time. If I did tell you this, I'd be speaking of Vakil Online, Pakistan's most rapidly growing digital legal ecosystem, one that is transforming the way citizens access justice. That transformation is set to continue with the introduction of the new Vakil Online digital app, one that puts legal awareness and legal assistance quite literally in the palm of your hands. Hello. Well, thank you everyone for coming. My name is Mohammad Abdul Ghani. I'm a lawyer and a computer programmer. I've been working in the legal tech industry for the past 6 years. 2 years ago, Mr. Kasuri reached out to me to join this initiative, Vakil Online, to make it a success. In September 2020, we started off with a small Facebook group with only 300 members and a handful of lawyers. Today, Vakil Online exists across multiple social media platforms, and we have over 60,000 subscribers and a digital reach of 3 million. Vakil Online presents the opportunity for lawyers to build their profiles and connect with the citizens. And citizens, on the other hand, can post their questions anonymously and connect with lawyers. And so this system was built, and we launched dedicated platform. Hello.
We launched a dedicated platform, wakilonline.tk, and also the mobile apps. And Wakil Online today is a potential game changer, transforming the way in which citizens interact with the law. That's right. Wakil Online is truly a game changer for women, for lawyers like me who are trying to build their practice, and for those women who require immediate or discreet legal support. It is hope for those vulnerable citizens that lack the means to protect themselves against the harsh realities of the justice system. It is a platform that gives us lawyers equal opportunity, equal access to build practice and capacity, regardless of our gender or background. In essence, Wakil Online has empowered the next generation lawyers. One amongst them, our very own youngest. वेलकम बैक. मैं हूं इस वक्त अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब के साथ. इनके बारे में सेफली ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के लीगल सिस्टम को वकला और अदलिया से भी बेहतर शायद ये जानते हैं. सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. पहला सवाल ये है कि हमारा जो लीगल सिस्टम है इसमें टेक की इंटीग्रेशन कितनी ज़रूरी है? नहीं, ये तो एक तो पहली बात है कि अब तो लाइफ लाइन है, और सबसे ज्यादा जो है जो आम आदमी पिसता है वो एक्सपेंसिव लीगल जस्टिस सिस्टम जो है उसकी वजह से पिसता है. तो टेक्नोलॉजी की वजह से अब ये देखें कि अभी जैसे अभी तो सुप्रीम कोर्ट में ये एक दो जगह पे ये शुरू हुआ है कि वीडियो लिंक के जरिए प्रोसीडिंग जो है वो हो सकती है. तो आप ये देखें कि एक वकील ने अगर कराची से आना है और फिर उसने मैरिट के टाइम में 5 दिन केस चलना है तो उसने 5 दिन के मैरिट का खर्चा भी बर्दाश्त करना है, उसको क्लाइंट ने करना है. तो वो लिटिगेशन कॉस्ट जो है वो सिर्फ एक छोटे से स्टेप से कितनी बच जाती है. तो टेक्नोलॉजी एक तो अवेलेबिलिटी एडजस्टमेंट्स को डिस्करेज होता है. वो जो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाली बात है उसमें ये है कि वो कहता है जी मैं कराची से नहीं आ सकता, आप कहते हैं जी ठीक है अब जाएं. और मेरा तो ख्याल है कि इसको और आगे बढ़ा के वकला की चैम्बर्स तक लेके जाना चाहिए कि वकला अपने चैम्बर से जो है बैठ के वकील आपको कर सके. जजेस अगर कहीं पे भी हैं, कहीं पे भी बैठे हुए हैं, एक बेंच बन सकता है. आप स्काइप को अवेलेबल है आपके पास चीजें. एक्चुअली टेक्नोलॉजी जो है फौरी इंसाफ की तरफ एक कदम है मेरे ख्याल में. अच्छा, आपके ख्याल में हमारे अदलिया, हमारे वकला सब इस चेंज के लिए, इस ट्रांजिशन के लिए तैयार हैं, या कोई हमें इसके लिए ट्रेनिंग या वर्कशॉप या इस तरह के भी इकदाम लेने पड़ेंगे? नहीं, देखिए जहाँ पे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगी जाहिर है उसमें टेक्निकलिटीज है बहुत सारी. तो उसकी बेसिक ऑल्दो के मोबाइल स्मार्टफोन के जरिए से जो है वो बहुत सारी चीजें आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जो ओल्ड एज है वो अभी भी थोड़ा सा कतराता है उस चीज से. लेकिन जो यंग लॉट है, यंग जनरेशन है, नए लॉयर्स जो आ रहे हैं, एक तो माशाल्लाह एजुकेशन सिस्टम में जो नई इंडक्शन हो रही है वो बड़ी अच्छी है. यंग लॉयर्स आर होप, और उससे जो है उनको ट्रेन करना, वो एक ट्रेनिंग की बहरहाल जरूरत रहती है. बस फर्ज करें अब तो कंप्यूटराइज हो गई है सारी चीजें ऑनलाइन पड़ी हुई हैं. इसमें बड़े मजे की बात है कि अगर एक ऐसा टेम्पलेट बन जाए कि जिसमें जो है आप फैक्ट्स जो है अपने केस के डालें और लॉ जो है वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाए, ऑटोमेटिकली पिटीशन बन के आपके पास पड़ी हुई होगी. तो उसके लिए आपको किसी लीगल एडवाइस की भी जरूरत नहीं पड़ती है. आप चाहे हाँ ठीक है असिस्टेंस हो सकती है, मगर लोग जो है जितना पिस गए हैं इससे हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम, इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो आसानी पैदा होगी. और ऑनलाइन अगर अवेलेबिलिटी है लोगों की, जैसे अभी मैं यह जिक्र सुन रहा था कि कोई एप्लीकेशन जो है वो भी आ रही है. आप देखें डॉक्टर ऑनलाइन है, वकील ऑनलाइन है, जर्नलिस्ट ऑनलाइन है. तो बहुत सारे शोबे जो है वो उस तरह से आ गए. तो उससे इनएक्सपेंसिव जस्टिस की तरफ जो है वो मेरा ख्याल है स्टेप. सर, आखिरी सवाल, आपको ऐसा डर तो नहीं है कि जो जरा सीनियर लोग हैं इस फील्ड के, या जिनकी ऑलरेडी इस सिस्टम में प्रैक्टिस बहुत चलती है, कहीं वो इसमें कोई रोड़े अटकाने की कोशिश तो नहीं करेंगे? कितने अटका लेंगे? टेक्नोलॉजी को देखिए, तरक्की को नहीं रोका जा सकता है. और एक दिन रोड़ा अटका लेंगे, दूसरे दिन अटका लेंगे, लेकिन अब जहाँ सारी दुनिया के अंदर सारी डिजिटाइज हो रही है, कोर्ट्स डिजिटाइज हो रही हैं, उस पे आ रहे हैं, और फिर वो उस मतलब मैंने देखा जो भी रिसेंटली खालिद अनवर साहब जो है वो नहीं आ सकते सीनियर है,
लेकिन उन्होंने वहाँ बैठ के जो है आराम से अपना केस भी आगे कर लिया। सो उनके लिए भी सहूलत जो है वो हो रही है। एक जगह पे जरूर ये होगा कि प्रोफेशनल एडवाइस जो है वो आपको उसमें थोड़ा सा होगा, लेकिन बाकी सारे प्रोफेशंस की तरह नहीं है, तो जो एक्सीलेंस है तो वो तो आएगी इसी तरह से आएगी। पुराने मिटते जाएंगे, नए आते चले जाएंगे और इसी तरह से तरक्की होगी। अच्छा, आखिरी सवाल, और वो ये कि हम जब वकला के बारे में सोचते हैं, एक आम आदमी अदलिया के बारे में सोचते हैं तो घबरा जाते हैं अमूमन लोग। तो आपके ख्याल में इस तरह जैसे जब उनका इंटरेक्शन बढ़ेगा जनरल पब्लिक के साथ, तो उसमें भी उनका एक अच्छा इमेज सामने आएगा? बिल्कुल, हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव तो है, मतलब आज भी जो है अगर आप हम तो देखते हैं कि वकील को लिटिगेंट चला गया तो उसको तो रोल देता है ना वकील, लिटरली मतलब को मुंशी बना छोड़ता है, किताबें उठा रहा होगा, वो ये कर रहा होगा, उधर जाके पर्ची करवा रहा होगा, पर्सनल नौकर बना देते हैं। वो बंदा लिटिगेंट जो पे भी कर रहा है, वो उसकी किताबें भी उठा रहा होगा, वो वकील साहब को ढूंढ ढूंढ के ला भी रहा होगा, वो नोटिस भी सर्व करवा रहा होगा। लिटरली बहुत बुरा हाल हो जाता है लिटिगेंट्स का। और फिर आखिर में होता ये वो बाबा जी, फिर हम तो देखते हैं अभी रिसेंटली कुछ 60-70 साल बाद एक सिविल केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट से हुआ, तो नस्लें गुजर जाती हैं। मैं ये पता नहीं अभी हो पाएगा कि नहीं, टेक्नोलॉजी इसमें कंट्रीब्यूट तो कर रही है, लेकिन अगर जर्नी होने हैं केस तो वो फिर ये शायद ये जुडिशरी को देखना होगा कि एडजर्नमेंट्स को कितना डिस्करेज करते हैं। सर, थैंक यू सो मच। And all that you have to do is just upload your submission. What does it actually look like? So if today anybody in the audience were to decide that they want to be a judge or train themselves as one, all that they have to do is just go on to law practice, and what you see in front of yourselves are these 3 tags in neon blue. The first tag says judicial induction, which is a career fit. The second tag says writing a judgment, which is a skill. And the third tag says family law, which is the subject that you might be interested in. If I were to play a video when it comes to interactivity of the platform itself, we approached a retired civil judge to train people and talk about matters that he himself had to deal with in his time in court. So this is the platform itself and the learning experience. We have a case in front of us in which the wife has filed suit for dissolution by way of khula, and she has leveled certain allegations against her husband. She has also demanded the dower amount from her husband. Now, in contra, husband has denied all the allegations of the wife, and he has also said that he has already paid the dower amount at the time of nikah. Now, after all this, we have 3 issues in front of us. Firstly, whether the plaintiff is liable to be granted the khula or not. Secondly, whether the plaintiff is liable to be granted the dower amount or not. And thirdly, whether what should be the dignity. So now you have to deliver your judgment on all these 3 issues within 2 hours. As has been mentioned, you get your relevant instructions and very clear task as to what you're required to do, followed by the relevant resources in the shape of statute and common law, which are clickable links that you can access. And all that is required from the candidates interested in training themselves as judges or interested in exploring their judicial aspirants is to submit their answer. Now, what happens after an answer has actually been submitted? You get graded. Grading insights are as follows. The instructors making the case studies on our platform set the objective criteria of being graded themselves, which allows anybody who's attempting these case studies to truly understand how far they're required to actually go in their journey. And after they've gotten this report, candidates can attempt a plethora of case studies that are already available on our platform. Now, at this point, I will ask a very crucial question from the audience members today. Are we all ready to actually learn beyond boundaries and transcend or trespass the provincial barriers when it comes to our learning? If such is the case, then you might be interested in what I'm about to show you next. Oh yeah.
We received a query from a pharmaceutical company in Canada. We've been engaged by a client who is currently in the United Kingdom with her 2 children. For this purpose, the client needs to understand how Pakistan law works. Right now, all we know is that the arbitration was held in Singapore. अब ये 3 जो हैं separate matters हैं, and none of them are connected to the other. We have to prosecute them. This is a very high-profile case. We have been saddled with a responsibility. We need absolute pinpoint research. जहाँ तक मुझे याद आता है, Justice Mansoor Ali Shah साहब की judgment है 2010 में PNB. I'll send you the client's instructions. Please go through them and prepare your response. And you have 48 hours to do so. Good luck. Lastly, remember, this isn't law school anymore. This is law practice. Ladies and gentlemen, we appreciate your valuable time, and we hope that you can help us develop this platform further to become the one-stop solution for capacity building in the legal fraternity. Thank you so much once again. Thank you, Law Practice. I would now like to invite the Justice Project Pakistan to give their presentation of their product benchbook.ek. वेलकम बैक. मैं हूं इस वक्त हिबा खान साहिबा के साथ, मैनेजर लीगल पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड. थैंक यू सो मच आपके टाइम का. पहला सवाल तो ये है कि कितना ज़रूरी था और हम कितना लेट हैं पाकिस्तान की लीगल साइड को टेक से इंटीग्रेट करने में? Well, first of all, this is a very good initiative. थोड़ा टाइम लगा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, थोड़ा टाइम लगा है क्योंकि हमारी जनरल पब्लिक के पास इतना एक्सेस नहीं है. ठीक है, अभी you can have it, I can have it, some people who have access to social media they can have it, लेकिन जो आपकी जनरल पब्लिक है मोस्टली वो अभी भी उनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा. लेकिन it's a good start. I think eventually it will pick up pace, and I just feel like कि एक इंसान को उनके हकूक़ पता होने चाहिए जो कि नहीं पता होते मोस्टली. आप वैसे भी आप किसी से पूछते हो या नॉर्मल जो केसेस होते हैं, कहीं सुनी बातें होती हैं, उनसे आपको पता होता है. लेकिन जैसे ये जो प्लेटफॉर्म है, it gives access to a lot of people where you can just ask whatever you have to. So I think it's wonderful. अच्छा, आपके ख्याल में चैलेंजेस क्या आ सकते हैं इसमें? चैलेंजेस जैसे मैंने भी मेंशन किया है कि पहली चीज़ कि एक लिमिटेड तबका है जिसके पास ये एक्सेस होगा. विद टाइम वो जो आपके नॉर्मल जो आपके गांव के लोग हैं उन तक पहुंचने में वक्त लगेगा क्योंकि पाकिस्तान we're still struggling, हर चीज़ we don't have access to a lot of stuff. So सिर्फ क्योंकि एक्सेस का इशू होगा as such मुझे नहीं लगता कोई इशू होना चाहिए क्योंकि अगर देखा जाए वैसे पूरी दुनिया में it's already implemented. If you look at China, they have everything online, their case laws to even the contracts, they have everything done. They just put in whatever they want to find and they get it. So हमारे लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा. अच्छा, यहाँ पर कॉर्पोरेट लॉ का तो शायद उतना उसमें गिला ना हो, बट सिविल में लोगों को अक्सर ये गिला होता है कि जी बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं. तो क्या आपके ख्याल में टेक इंटीग्रेशन की वजह से उसमें भी कुछ तेजी आ सकती है? साल तो देखिए लगते हैं कोर्ट के प्रोसीजर से. कभी कभार आपको कोर्ट का प्रोसीजर चाहिए. ठीक है, अगर आपकी वो क्वेरी पहले से क्लियर होता है तो शायद आपको कोर्ट में आप जाएं ना, एक जो केस है जो आपको पता है कोई और तरीका निकाल सकता है. which I'm all up for outside court settlements जो पूरी दुनिया में होते हैं. ठीक है, कुछ केसेस होते हैं जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं जो कि आप बाहर किसी और चीज़ से आप सेटल कर सकते हो, which is a good thing. तो मेरे ख्याल में लॉन्ग प्रोसीजर्स कोर्ट का टाइम लगता है क्योंकि आपका प्रोसीजरल लॉ है वो फॉलो होना चाहिए. हाँ, आउटसाइड मतलब थोड़ी जैसे जज छुट्टी पे चला गया, मतलब एक्सेस नहीं है, लॉयर नहीं है, ये सारी चीज़ें तो ये तो पूरा सिस्टम अगर चेंज होगा तो वो चेंज आएगा. बिल्कुल ठीक. अच्छा, आपको इवेंट का एम्बियंस कैसा लगा? It's a lovely event. I'm all up for it.
and knowing these people personally as well, it makes my heart really happy to see how far they've come. I've studied with a few of them, and we baatein ki, it's such a proud moment to see what your friends, your colleagues are doing, and how they're changing things for Pakistan. So it's lovely. Thank you so much. Thank you so much. To save you from being tortured into giving a false confession. Although the Special Court Gujranwala found Iqbal to be a juvenile, it nevertheless sentenced him to die. Iqbal's death sentence was in gross violation of the UN Convention on the Rights of the Child and Pakistan's Juvenile Justice System Ordinance, prohibiting the execution of juveniles. Moreover, a presidential notification granting special permission to all juveniles was issued by President Musharraf. Despite the overwhelming evidence, international obligations, and domestic law, no judge or lawyer was aware of or applied the law correctly. Not only did the state fail to take Iqbal off of death row, instead, soon after Pakistan lifted the moratorium, Iqbal was scheduled to be hanged. Although Justice Project Pakistan was able to obtain a last-minute stay of execution for Iqbal, we were not able to get him the justice he deserved. Currently, there are over 88,000 prisoners languishing behind bars in Pakistan. Every prisoner is waiting for an appellate court to decide on his or her life or death sentence. Moreover, we have one of the largest reported death row populations in the world. The general backlog of cases is even worse. Just to clear this backlog of over 2.1 million cases, a Pakistani judge has to decide on average 530 cases. Currently, there are over 337,000 cases pending before the High Courts, and there are 50,000 cases pending before the Supreme Court of Pakistan. Now, this also means that there are 50,000 precedents to be set. International and domestic jurisprudence is evolving rapidly every day. How is any judge meant to do enough research and stay up to date with the most important case law, especially when that case law can save lives? The curated digital solution that is the benchmark app for judges is the only way to ensure that no important human rights jurisprudence slips through the cracks. Goodbye. Benchmark Rugby incorporates an advanced search engine that indexes all types of documents, whether they're PDFs, Word documents, or other वेलकम बैक। मेरे साथ हैं इस वक्त मुनीज़े जहांगीर। इनका मैं क्या इंट्रोडक्शन कराऊं, बहुत ही बड़ी सहाफ़ी और एक्टिविस्ट। मुनीज़े, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। और मुझे ये बताइए कि इस वक्त कितना ज़रूरी है हमारी लीगल साइड को टेक के साथ इंटीग्रेट करना। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। देखिए, सबसे जो ज़रूरी बात ये है कि जो हमारी लॉज हैं उनके पर अमल दरामद हो, इम्प्लीमेंट हो। जहाँ तक टेक का सवाल है तो अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ता है, क्योंकि हमने काफ़ी इसके अंदर हम फ्री लीगल एड कब से ऑफर कर रहे हैं, जब से 1980 से। जब हमने ज़्यादा पैरालीगल हमारी सेंटर्स हैं, उसके अंदर सैकड़ों औरतें आती हैं, अपना जो भी उनके मसाइल हैं बताती हैं, और फिर और औरतों के साथ भी उनका राब्ता होता है। उनसे मालूम पड़ा कि जो हमारी ख़वातीन हैं जिनको शदीद ज़रूरत है लीगल एड की, उनके पास फ़ोन नहीं होता। वो अगर फ़ोन होता भी है तो वो एक और शख्स के साथ, अपने ख़ानदान में उसके साथ शेयर करती है।
تو اکثر خواتین جو ہمارے پاس آتی ہیں جو لیگل ایڈ کے لیے درخواست کرتی ہیں ان کے پاس فون نہیں ہے. اسی لیے جب ہم نے بھی اس کے بارے میں سوچا کہ جی ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے آئے تو پھر کس کو ہم ریچ آؤٹ کریں, جن کو اشد ضرورت ہے ان کے پاس تو ابھی تک وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب تک ملک کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے, جب تک خواتین جو ہیں وہ نہیں آئیں گی, کام کرنے نہیں آئیں گی, تو ان کے پاس وہ ایکسیس نہیں ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے کہ بیفور وی گیٹ ٹو دیٹ پوائنٹ دیر از اے لاٹ مور دیٹ وی ہیو ٹو ڈو. آئی تھنک جو ایگزسٹنگ لاز ہیں ان کو نافذ کرنا صحیح معنی میں بہت ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہراسمنٹ کا لا بنا, پیکا آرڈیننس جاری ہوا, پیکا لا جب بنا تو وہاں کی اس وقت کی جو عروش رحمان صاحبہ منسٹر تھیں تو ان کو جا کے ایچ آر سی پی کا وقت ملا. انہوں نے کہا کہ آپ ایسا مت کریں, آپ کے لا نہ بنائیں کیونکہ یہ صحافیوں کے گلے پڑے پڑے گا. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو کیا خواتین کے بارے میں اپسیٹ نہیں ہیں, کیا ان کے اوپر جو ہراساں ہوتی ہیں خواتین آن لائن, کیا آپ کو ان کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں جب سے وہ لا بنا ہے ہمارے پاس خواتین آئی ہیں جن کو واقعی بری طریقے سے ایسا کیا گیا, مگر آج سے 2 سال ہو گئے ہیں یہ کمپلینٹ کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں کی. محسن بیگم تو ان کا کوئی نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ اس لیول کی وہ نہیں ہے, اس لیے شاید ان کی انویسٹیگیشن نہیں. جو ہم نے پتہ کرایا کہ کتنے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں تو پتہ چلا کہ ایک انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے پاس کیسز ہیں, تو وہ شروع کرنے سے پہلے ہی کر جاتا ہے. اسی لیے جب قانون بناتے ہیں تو اس وجہ سے تو بنائیں کہ آپ نے ان کو نافذ کرنا ہے, اس نظریے سے تو نہ بنائیں کہ اسی تے بنا دیتا ہوں اگلی باری دیکھیں گے. اچھا, لیکن تھوڑا سا یہ دیکھنے میں آیا کہ شاید ٹرانسپیرنسی آتی ہے ٹیک کی وجہ سے. وہی بات کہ سوشل میڈیا پہ جن کے تو ایکسیس نہیں ہے ان کا تو بیچاروں کا کیا کیا جا سکتا ہے, لیکن جن کی ہے کم از کم ان کی آواز ہی پہنچ جاتی ہے. دیکھیں جی آٹے میں نمک کے برابر ہے, میں آپ سے صحیح بات کروں گی. اس لیے چونکہ جو زیادہ تر خواتین ہمارے پاس آتی ہیں ان میں سے شاید ایک کے پاس بھی نہیں ہے اسمارٹ فون, تو پھر کیسے آپ ان کو ریچ آؤٹ کریں گے جو لوگ جن کو زیادہ ضرورت ہے. اور جن لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہیں ان کے پاس ذریعے بھی ہیں, ذریعہ معاش بھی ہے آپ تک پہنچنے کے لیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم بڑی اچھی بات ہے کہ ہم جدید ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں اور یہ آگے میں امید کرتی ہوں کہ ہوگا, مگر اس کا جو تعلق ہے بڑا گہرا تعلق معاشی حالات سے ہے ایک خاندان کے, اور عورتوں کے باہر نکلنے سے ہے. چونکہ کئی دفعہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر ایک عورت کام بھی کر رہی ہوتی ہے نا تو اس کو ایز اے پنشمنٹ سب سے پہلا کام اس کا خاوند ہی کرتا ہے, اس کا موبائل لے لیتا ہے. تو یہ بھی ہم نے بہت دیکھا ہے. اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آگے جا کے ایسا بنے گا, سچویشن بنے گی. فی الحال یہ سچویشن نہیں ہے پاکستان. اچھا, اب آپ کے خیال میں سچویشن تو نہیں ہے, حالات سازگار نہیں ہیں, لیکن اب جو یہ ایک انیشیٹو ہے اس کی راہ میں کوئی روڑے بھی اٹکانے کی کوشش کرے گا؟ دیکھیں راہ میں تو روڑے اٹک گئے. اب آپ سوشل میڈیا کی طرف دیکھیں, ایک زمانہ ہوتا تھا جب میں اور آپ ٹی وی چینلز میں نئے نئے آئے تھے تو سبھی ٹی وی چینلز کی طرف دیکھتے تھے, مگر اب آپ اپنا پروگرام کرتے ہیں, بڑا مشہور پروگرام ہے یوٹیوب پہ. میں نے آپ کو کہا کہ جی میں نے آپ کو ٹی وی چینل پہ دیکھا ہے, مگر میں کنفیوز, خود میں ٹی وی سے میرا رابطہ تعلق ہے تو میں نے آپ کو یوٹیوب پہ دیکھا تھا. تو اب وہ جو ایک لائن ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے کہ ٹی وی پہ کس نے دیکھا, یوٹیوب پہ کس نے دیکھا. اب وہی بندہ کنگ ہے جس کا پروگرام اچھا ہے, چاہے وہ یوٹیوب پہ آئے چاہے وہ ٹی وی کے پر آئے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح تو ہمارے لیے جو ینگر جنریشن ہے جس کو ایکسیس ہے, جو صحافی ہیں, ان کے لیے وقت تبدیل ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ وقت تبدیل ہوا ہے. مگر کیا ایسا رہے گا, آئی ایم ناٹ سو شیور, بیکاز ٹریڈیشنل میڈیا کو اتنی آسانی سے ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اچھا, آخری سوال یہ کہ آپ کیونکہ لاہور اور اسلام آباد میں بیک وقت رہتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا موڈ یہاں پر بہتر ہوتا ہے اور وہاں پہ خراب ہوتا ہے, جتنی گرمی ہے اور نہانے کو ٹھنڈا پانی نہیں ملتا؟ یہ آپ کو چونکہ میں نے کمپلیمنٹ دیا تو اب آپ انسپائر ہو گئے ہیں یہ سوال میرے سے کرنے کے لیے. دیکھیے یہ آپ نے ضرور بات کی, ہوں میں لاہوری, دل میرا لاہوری ہے. اسلام آباد میں ہم نوکری کرنے آئے ہیں, تو جو ہمارے ساتھ ہمارے ہیلپر بھی آیا ہے ایک, ہماری فیملی کے ساتھ بڑا اس کا لمبا عرصہ تک رابطہ رہا ہے اور ہمارے ساتھ رہے ہیں.
मुझे कहता है बीबी हम लाहौर चले, मेरा खून बदना वाला है, तो यहाँ पे आके उसका खून कम हो जाता है, उधर जाके बढ़ जाता है, और मुझे कहता है कि ये जो शहर है ये खास लोगों का है। तो वाकई में ये खास लोगों का शहर है, बबल है इस्लामाबाद, और असल पाकिस्तान हम कहते हैं कि इस्लामाबाद के बाहर। Thank you so much. इस्लामाबाद की बुराइयां करा ली। like Unsubscribe and Untag, and develop them in Pakistan. Furthermore, next slide. Secondly, we have a trade information portal. Over here, we have listed down entire domestic framework relating to trade and transit. Yes, it's not going down. Please check this. So all our domestic framework relating to trade, all the domestic laws, all the case law that is coming out is going to be part of this website. It's already available at port.rslpark.pk, and we are building further capacity. Furthermore, we are listing down all our import and export procedures, how to set up a company, etc. Another platform that we've developed is the DLP Forum, or Diplomacy, Law and Policy Forum. And what we're looking to do here is to help promote indigenous research from the region, from the global south, on issues of the law of war, or what we refer to as international humanitarian law. So we have a monthly team. We've been looking at issues such as cultural heritage in our conflict, climate change in our conflict, the 21st Amendment, and a range of these issues that impact us. What we also have is a dedicated podcast for this, the forum, and this is available in audio as well as on video. And we have a range of these. These are some of our very popular podcasts as well. What we also have is that we've mapped conflicts around the world, and we're using this through a number of databases. And you can see, countries that are involved in armed conflicts, military occupations, international armed conflicts, non-international armed conflicts. And you can go through these in quite a bit of detail as well. So if we were to make, say, Afghanistan, it gives you detail on what type of conflict is taking place there. But numbers of conflicts don't tell you the intensity of the conflict. So we've also mapped that out. How are, for example, reported fatalities around the world, or battles that are taking place, violence against civilians. This data isn't available very easily to researchers in Pakistan. That's why we've made it available on our website. We've also looked at enhancing our capacity building or our training initiatives through using technology. And we've done this by, spurred by COVID, we shifted a number of our trainings online. And one particular, this is just a range of some of the trainings that we have. One particular training, Jamal, that you'd like to perhaps explain is? The advantage that RSIL has is that over the years we have developed dozens of training guides on a range of different topics. And now what we are doing is that we are using technology to make this accessible to a wide range of stakeholders, from students, academics, police officers, prosecutors, judges. One of our trainings is related to money laundering and anti-terrorism, counter-terrorism financing, where we are recording lectures by international experts, domestic experts, providing interactive assessment exercises, uploading all our training material in readable format. And this we are doing through tablet-based trainings for prosecutors and police, where we've had immense success, I would say, in the learning outcomes. It has made the trainings much more interactive. A lot of money, donor-funded money in particular, is wasted on arranging conferences in big hotels like the Marriott or Serena, and then the training dies with the event. This kind of platform is intended to make it available on a long-term basis, on mobile phones, tablets, etc. Absolutely. So another platform that we have is Stop Money Laundering, or stopml.com.org. We developed this with our friend Abdul Ghani, who was here previously on stage. We're looking to advise real estate agents, precious gems and वेलकम बैक। मैं हूं इस वक्त समरा ताहिर साहिबा के साथ। समरा ताहिर की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं वकील ऑनलाइन ऐप के ऊपर, दूसरा इन्होंने एक सेशन किया टैक्स के ऊपर वकील ऑनलाइन पे विशाल के साथ, जिसके बाद बहुत ज़्यादा केसेस आए इनके पास। और इस वक्त ऐसे वकला जो कि वकील ऑनलाइन के तवस्सुत से बहुत ज़्यादा केसेस कर रहे हैं, उनमें इनका नंबर शायद पहले 5 में होगा।
तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. और Thank you for inviting me. कैसा एक्सपीरियंस है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और आई एम ए यंग लॉयर, प्रैक्टिस कर रही हूँ फ्रॉम पास्ट 2 years. तो क्लाइंटेज इतना नहीं था पहले, स्टार्ट में तो बिल्कुल भी नहीं था. और वकील ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अपनी एक्सपर्टीज़ दिखाने के बाद मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी क्लाइंट्स मिले और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. पाकिस्तान में इस तरह के इनिशिएटिव आपको नहीं मिलेंगे यंग लॉयर्स के लिए. और आपको इवेंट कैसा लग रहा है, और आपको अंदाजा था कि हम आपके शहर आ रहे हैं, क्योंकि पहले 2 लॉन्च इवेंट कहीं और हुए? नहीं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था. हाँ, मुझे बाद में आइडिया हुआ. मुझे बड़ी खुशी हुई और बड़ा अच्छा इवेंट है, काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ है और काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे. अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या वकील ऑनलाइन जैसी ऐप की वजह से वकला शायद सुस्त हो जाएंगे, शायद तैयार होकर अपने चैम्बर्स रोज ना जाएं, वो नहीं. ऑनलाइन ही डील कर लिया करें? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हाँ, ये है कि आपकी जो दूसरी तरह से आप एक तरह से कह लें कि आपको कचहरी में जो पारी होती है गर्मी में, आप बैठ जाते हैं चैम्बर्स में जाकर, इतने कंजस्टेड चैम्बर्स होते हैं जैसे हमने अपने कचहरियों का हाल आपने देखा ही होगा. तो इस तरह ये है कि आपको कम से कम ख्वारी से बच गए आप. और एक कॉल के ऊपर, जिस तरह आजकल तो वैसे ही 21st सेंचुरी है और सब कुछ ऑनलाइन है, कोविड की वजह से कि हमें एक नया पर्सपेक्टिव मिला है, तो मेरे ख्याल से आप ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे और आपकी जो एनर्जी है आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर सकेंगे. वरना आप कचहरी में इतने ख्वार होते हैं कि उसके बाद आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचता कि आप 4-5 बजे घर आए हैं, कि आप इतने रिलैक्स हों कि आप किसी और क्लाइंट को ले सकें या उससे बात कर सकें या आप अपनी रिसर्च भी कंडक्ट कर सकें. तो बिल्कुल क्लाइंट जो है वो एक ऐप की दूरी पे आपसे, तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है. अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि वकला जो हैं वो मतलब जाहिर है उनको हर चीज़ का नहीं पता होता, वो उनके अपने अपने शोबे होते हैं जिसमें वो बिल्कुल ऐसा स्पेशलाइज है. करते जी, हैं. बिल्कुल ऐसा है. तो क्या आपको लगता है कि आपको ये भी हेल्प मिली कि जिस चीज़ में आपका शौक था आप वही कर रही हैं, वरना ये भी होता है कि अच्छा इंटर्नशिप जिसके पास मिल गई फिर वो अपना लिया बजाय कि अपने शौक से कोई शोबा लेने के? नहीं, बल्कि मैंने काफ़ी कुछ सीखा वकील ऑनलाइन से. इवन कि कुछ क्यूरीज आती थी और नीचे जो कॉम्पिटेंट लॉयर्स कमेंट करते थे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनका मुझे भी नहीं पता था. और मेरा फैमिली लॉ में पहले बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था. वकील ऑनलाइन ज्वाइन करने के बाद मेरा फैमिली लॉ में इंटरेस्ट आया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लगता था कि वो मेरे टाइप की फील्ड नहीं है. मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में प्रैक्टिस करती हूँ तो वो ज़्यादा सही है मेरे लिए. लेकिन मैंने वहाँ पर बहुत कुछ सीखा और बड़े कमेंट्स जो कि कॉम्पिटेंट लॉयर करते थे उनसे बड़ा सीखा और मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ. फैमिली लॉ में भी डेवलप हुआ और क्रिमिनल साइड पे भी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है थोड़ा सा. अच्छा, और आपको लगता है कि आप एक दिन खातून होने के बावजूद आप लेंगी क्रिमिनल केसेस? सोचूंगी. अभी फिर भी मैं अभी कुछ कह नहीं सकती, कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकती कि मैं इमोशनल होकर कह दूं कि हाँ मैं करूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मैं सोचूंगी बिकॉज कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो मुझे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है. क्रिमिनल सेक्टर पाकिस्तान में अभी उस लिहाज से फीमेल लॉयर्स के लिए उस तरह से नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है और आपका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है. सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, मतलब ऐसे लोगों के साथ आपके कनेक्शंस होने चाहिए कि जो क्रिमिनल केसेस के लिए आपको हेल्प आउट कर सकें. तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक मेरे पास ऐसी कोई भी एक्विटेंसेस नहीं है, तो मैं उसके बारे में इंशाल्लाह सोचूंगी. थैंक यू सो मच आपके वक्त का. एंजॉय द इवेंट. थैंक यू. Using natural language inputs, you can find cases relevant to your cases. So if you have a question in mind, our website can identify specific occurrences, words, terms, and phrases in our vast database and prioritize the ones that are more relevant to your needs. You can exclude irrelevant material, SAP with Boolean capabilities, that sift through information for you. SAP gives you access to case law from different authorities within South Asia. SAP is easy to use and prioritizes user experience. So whether you use it in your legal practice or as a teaching tool, you can rest assured that you'll find your way. Allow us to revolutionize your experience. Subscribe now to gain access to South Asia's largest case law research site. Okay, so I'd like to explain the data coverage that we have. We have most of the cases from Pakistan, be it High Court cases or Supreme Court judgments. We have most of the cases from India as well. We have Bangladeshi Supreme Court judgments, Sri Lankan Supreme Court judgments, and Privy Council rulings from Singapore and Malaysia. This is like having 3 million rupees worth of books at the access of your fingertips. Now I'd like to
tell you about the features that we have. We have judgment search, and it's not just simple. You type in the word and it gives you judgments. It's basically much more refined. You can use many of our features, like you can use Boolean search, you can use derivative search, which just searches for different forms of the words that you typed in. And we have proximity search as well, which gives you relevant cases. For example, if you, I'll just show you a video at the end about how it works. Then you have citation search. You just need to put in either the court or the journal name or the page number, and it'll give you the case that you're looking for. Then you have statute search and case diary. Case diary is basically just for organizing your cases by case, by clients or by specific cases that you're working on. Note taking is also, you can take notes while reading a case so that you can have something to read afterwards, so that you don't forget such thing. We also have printable judgments. Before I show you the video, I'll just tell you a little bit about the technology that we're using. We're using Apache Solr, which is being used as search engine by most of the giants. It is being used by Apple, it's being used by Netflix, Instagram, Facebook. So we have incorporated the same search engine as that. This is the demo video that I prepared. You can just see that if I click on derivative search, it will not just give you the word that I typed, but different forms of it as well. Like for example, I type murder, it will give you murder, murdering, any form that is available. That gives you, then I did proximity search. Proximity search is what it does is basically whatever the words that you're typing, you just type in the number of words that you wanted to group that. For example, as you can see, murder and dawn, both of these are within 5 words of each other, which I specified before. That gave me very less cases that I have to sift through. वेलकम बैक। अगर मैं आपको नर्वस लग रहा हूं तो मैं हूं, क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूं सईदा जुगनू काज़मी के साथ, स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब। अगर आपको मेरा कोई सवाल बुरा लगे तो आप दरगुजर कर दीजिएगा। मैं अब सोच रहा हूँ कोई बहुत ही होम्योपैथिक सवाल कि कहीं भी कुछ खदशा ही ना पैदा हो कि आप बुरा मना भी सकें उस पे। मौसम कैसा है? अच्छा, जुगनू, कितना ज़रूरी है हमारी लीगल साइड को टेक के साथ इंटीग्रेट करना? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखें आप इस दौर में रह रहे हैं। हम 2022 में सब कुछ जो है हमारा टेक का कितना ज़्यादा यूज़ है। मुझे याद है बिकॉज़ आई एम आल्सो फॉर्मर जेपीपी कि जब ये वकील ऑनलाइन शुरू हो रहा था और इसकी ऐप भी लॉन्च हो रही थी, तो हमें थोड़े से खदशात थे कि ये हो सकता है कि लोग यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए थोड़ा सा, हर बंदा मतलब सिर्फ एक सर्टेन क्लास को ना केटर करे, सारी क्लासेस फ्रॉम ऑल सोशियोइकोनॉमिक बैकग्राउंड्स उसको केटर करे। आई थिंक द रिस्पॉन्स हैज बीन रिमार्केबल, क्योंकि आप access to social media या technology is not, I mean almost everywhere। मैं ये नहीं कहूँगी, blanket statement नहीं दूँगी पूरे पाकिस्तान में, वो काफ़ी अभी तक ऐसे पसमानदा इलाके हैं जहाँ नहीं, मगर आई थिंक जैसे जैसे वक्त जा रहा है काफ़ी उसकी यूसेज है। आपने खुद देखा होगा फेसबुक पे और दूसरे सोशल मीडिया वगैरह पे सवालात कैसे पूछे जाते हैं। अभी मैं किसी से डिस्कस करी थी कि इतनी अच्छी बात है कि खवातीन भी कितनी पूछती हैं। 90% आपके फैमिली के डिस्प्यूट्स के ऊपर होते हैं, फैमिली लॉ रिलेटेड होते हैं, फिर कुछ जो है वो आपकी प्रॉपर्टी के बारे में होते हैं। दीज आर वेरी एवरीडे प्रॉब्लम्स। अच्छा, तो मसला ये है कि अक्सर लोग ये एतराज़ उठाते हैं कि जी जो बहुत ही पिसा हुआ तबका है, जिसके सबसे ज़्यादा मसाइल हैं,
उनके पास तो एक्सेस नहीं है, तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा जब उनके पास स्मार्टफोन आएगा जो वो शेयर भी नहीं करते, फिर वो आपके पास आएंगे। लेकिन वही वाली बात कि यहाँ पे अमीरों को कौन सा इंसाफ मिल रहा था पहले। हाँ देखिए, आपने बुरा नहीं बनाना। अच्छा, तो ये मैं आपको अब इनकी शिकायत भी लगा दूं जेपीपी की, कि आपको पता है लाहौर में जब ये इवेंट हुआ था तो खाना पहले था और इवेंट बाद में था। यहाँ पे इवेंट पहले हो रहा है, ये इनका मिसट्रस्ट मुझे लग रहा है इस्लामाबादियों को लेकर। जैसा ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज आप ये बताइए कि अब आप इस्लामाबाद में रहती हैं, मैं इस्लामाबाद में रहती यहाँ पे मौसम इतना बेहतर है। हूँ। नहीं तो हम लाहौर से आए हैं। लाहौर से तो शायद थोड़ा सा नहीं, शायद नहीं, देखें ऐसे ना करें। चले। इतना बेहतर मौसम है, आप लोगों का एसी इतना कम इस्तेमाल होता होगा, आप लोगों का बिजली का बिल इतना कम आता होगा, आप लोगों पे टैक्स ज्यादा नहीं लगना चाहिए? अव्वल तो आपकी जो ये स्टेटमेंट है मैं उससे मुत्तफिक हुई है। मुझे लगता है वाकई 19-20 का फर्क है, शायद हब्स एक किसी शहर में ज्यादा हो सकता है। ये इस्लामाबाद में तहमत लगती है कि इस्लामाबाद बड़ा ही खुशगवार मौसम होता है इस्लामाबाद में, ऐसा कुछ नहीं। कहाँ है वो खुशगवार, मुझे तो नहीं दिखती। उसी तरह हम सड़ते जलते दफ्तर जाते हैं और वापस आते हैं, और जो कोर्ट की प्रैक्टिस करते हैं मैं उनको दाद देती हूँ क्योंकि वो अपने काले कोट के साथ जाते हैं, उनको जल्द भूल जाते हैं। मगर ये कि वैसे टैक्स जो है वो किसी पे लगना चाहिए जो एक खास किस्म का, ये नहीं कि अमीरों पे कम लग रहा है और गरीबों पे ज्यादा लग रहा है। मिडिल क्लास है वो ऑलरेडी उसका मैं बहुत ही एहतराम के साथ इख्तलाफ करना चाहूंगा क्योंकि मैं आज ठंडे पानी से नहाया हूँ। ये सिर्फ इस्लामाबाद में मुमकिन है। अच्छा ठीक है, हाँ। हाँ। अच्छा, तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपको इवेंट का एम्बियंस कैसा लगा? और कुछ लोग ये भी एतराज करते हैं कि यार हम T4JF के इवेंट लॉन्च पे आते हैं तो वुकला का इवेंट ही नहीं लगता, ऐसे लगता है कोई फैशन शो हो रहा है या कुछ और हो रहा है। तो इस पे आपके क्या तासुरात हैं? मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। मतलब आप अगर वुकला का इवेंट इस तरह यूजुअली नहीं होता और ये थोड़ा हट के है तो ऑल द मोर रीजन टू लाइक इट। बहुत अच्छा है, देखिए आप यहाँ बैठे इंटरव्यू कर रहे हैं, वहाँ साइड पे फोटोग्राफी चल रही है, वीडियोस हैं। आई फील लाइक टीचर्स से तो कहीं बेहतर जो पब्लिक को समझ आता है वो वीडियोस के थ्रू समझ आता है, वो ज्यादा लोग उसको उसे समझ पाते हैं। मेरा हाल बहुत अच्छा है। इट्स अमेजिंग क्योंकि T4GF का थ्रू आउट इन ऑल 3 सिटीज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। और इनफैक्ट हम इस्लामाबादी तो स्पीकिंग हमारे से वी वर वेरी एक्साइटेड कब आए ना, तो आपकी टीम से 10 दफा पूछा कि T4GF हो कब रहा है। Thank you so much. Thank you. Absolutely encouraging. I'm so happy. Refreshing, so re-energizing actually to be here and to see all these young people coming up with these applications using technology. We didn't have all this in our time, but it's absolutely brilliant. These platforms, several of them have been mentioned, but I want to also point out a few others which are there, and then comment about how we need to proceed further. I'm sorry about this incapacity of mine to go through my notes because of the lack of the rostrum here, but let me just, some of the projects were already discussed here, we saw them. And at the same time, there are others which I wanted to highlight, and I'm very happy that this is happening. For example, we have the quoting the law also, in addition to the ones that were discussed and were displayed today. Two of them, I think, I'm very happy to note that they really help out the court proceedings. The bench book was very important and it helps the court proceedings, and the law practice is also very helpful. I'll be, trying to reach out. I've already reached out to the bench book people that are working with our research center, but I'll be very happy if the law practice people could also come visit me sometimes. I think we can work on something as far as the Judicial Academy and the training program is concerned. The other ones are the quoting the law, which does a lot of good work. Qanundan, Insaf Camp. We have motasib.pk, we have the Keel Online, which you've already heard about. There is gathersense.com, there is loyher.pk, and there is parksign.pk. I won't get into what they do, but in essence, these apps are all providing a lot of awareness, making people understand their rights, making people understand that they could agitate these rights in a court of law. So in essence, I think that these apps are actually advertisers. You see, they're trying to tell people what the rights are, and perhaps they're going to help
bring these people to court. There's going to be an increase in litigation, to my mind, because anybody who understands their rights will agitate those rights, and there will be a combative kind of a situation where they will try to come to court. So these apps at this stage, to my mind, are advertisers which are bringing a lot more people onto the courthouse. My concern today is to understand how to sort out the courthouse problem. You see, if everybody gets into the courthouse, how do we regulate? How do we bring technology to solve our courthouse? And what is our courthouse? And I refer to courthouse as judiciary, which is the district courts, which is civil court, which is the high court, which is also the Supreme Court. But as a generic term, I use the term the courthouse. So, what does the courthouse actually look like at the moment? Now, courthouse has about 2.2 million cases in Pakistan, all these courts put together. And if we have 2 litigants per case, we're talking about 5 million average litigants who come in to these courts. We have about 5,000 judges in the country, starting from Supreme Court down to the trial courts. We have about 200,000 lawyers in the country, and say about 200,000 paralegal staff that works with them. Then we have the statutory corporations, we have the government, we have the departments, and the in-house lawyers representing them, then the court staff itself. So we're looking at a minimum of about 10 million people accessing the courthouse, and 2.2 million cases that need to be handled and taken care of. That's the level of the problem. That is what the courthouse is all about. I do not see any app solving the problems of the courthouse, which is the actual main course. And I'll be very happy, and I tried to do this in Karachi also, I'll be very happy if all the technological experts sitting here, the young ones, would come reach out to us and give us solutions. How do we really work out a solution for the courthouse, which would actually affect and change the life of an ordinary person in Pakistan? Well, I have some suggestions which I'll be sharing with you in just a while, but you see, we judges are not technical experts. We just think about these ideas, maybe some deep thinking on part of some of the judges, but the answers must actually come from the floor. So you're most welcome. You can reach out to me anytime you want if you have ideas on how do we look at these problems and how do we sort out these 2.2 million cases that we have. I will, however, share some of my ideas with you in just a minute. I want to also, statistics are important. In 2010, we had about a pendency of 1.5 million cases in the country. In 2021, we have 2.2 million cases. This is an increase. The institution of cases in the country in the year 2010 were 2.6 million, and the institution now is 38.5 million cases. So it is pretty worrying, and unless we have a mechanism for dealing with all these cases, we are heading towards a problem. To me, the biggest challenge the courthouse has today is delay, and delay. Nothing else. We are just not handling our trials. The trials, it takes years. I mean, it's now a cliche. I mean, generations pass in deciding cases. So delay, to my mind, is the biggest challenge that we need to address. And to all the techies sitting here, I'm saying, if you have to focus on something, you have to talk about delay reduction. You have to see how do we cut down this delay, because it actually devastates the families, it devastates litigants, it devastates the economy if cases are delayed. And that's how the problem is, which subsists right now. What are the reasons for this, to my mind? And I don't speak here for the Supreme Court, I speak there as a judge who's been thinking about these issues. So don't sort of ascribe it to the institution, it's just a personal thought that I'm sharing. So what are the reasons for this delay as I see it? I see no case management techniques. I see poor case management, maybe no case management maybe. I talk about no technology there to monitor what's really happening. How do we look after this 2.2 million cases? Is there any technology at work? Is there a science behind it? Is there a strategy? Are we monitoring all this? No, perhaps. Adjournments, role of the bar comes up, and I'll talk about that in a minute. Strikes. Every day, once in a while, in Punjab especially, we have strikes. You see the lawyers go on strikes. So, okay, no work today. Training of judges is also important, which takes place, but not as effective as required.
unstructured load of work. We have all sorts of cases, all sorts of subjects, not organized. How are they being fixed? So the case management comes up once again. And lack of communication between the three tiers of judiciary. I mean, we're not really talking to the district judiciary. We're not really talking to the High Court that much. It's not, I mean, I don't know of an occasion when this institution sat down together and talked, the three tiers talked about their problems. I don't know if the session judge knows. I know what the session judge's problems are. Has the session judge ever walked into my room and told me what his problems are? No, unless I take interest. The institution isn't talking to each other. There's lack of communication in an institution which has lack of communication, things don't get sorted. So what we did at that time in early 90s, we thought, let's automate our systems. So automation was the answer that we got. We provided computers to type orders. We get all these typed computerized orders. We came up with a website which had orders, some of the main judgments. We came up with a website that also had a cause list and helped a lot of people, find out what their cases were that were fixed. We came up with an SMS service for the lawyers to find out what cases are fixed and when they are fixed, just to give them more access. We came up with a database also to find out how many family cases we have and how many murder trials we have, stuff like that. We also came up with mobile apps, which I'm sure most of the lawyers are familiar. Supreme Court has it, High Courts have it. And then we came up with the CNIC as a number identification for the lawyers so that it can easily identify who the lawyer is. And we tried to capture as much data as when the cases were filed. So this is what automation was all about at that time. We thought this would make a difference and everything would change and the courts will get rid of all these cases and things would become very efficient, but nothing really happened because to my mind, behind this computer facade was a manual stuff at work. We were manually doing everything. When we're talking about case management, which the computer was showing, there was a manual stuff going on. I mean, there were judicial branch officers who were actually putting those cases for fixation manually. However, they've been displayed as a part of the computerized system. There was no intelligence-based system installed in this. वेलकम बैक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल्ताफ कुरैशी, अब्दुल्ला साहब, उस्मान साहब के साथ। ये ऑल कराची पैनल है और इससे पहले कि हम गुफ्तगू शुरू करें, आपको पता है कि हम अभी जब मिले तो मैंने मिलते साथ लाहौर की बुराइयां की। तो हमारा इधर कोई आर्गुमेंट ही नहीं है, हम एक ही साइड पे हैं। सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, अभी मंसूर अली शाह साहब तकरीर कर रहे हैं और उन्होंने आपकी मेरे ख्याल में जो इनिशिएटिव है उसका जिक्र भी किया है, तो आपको कैसा इस वक्त महसूस हो रहा है? शीरीन हो रही है, कराची से आए तो कराची वालों को पहले समझाइए और जो समझने वाले हैं समझ गए। जबरदस्त। आप लोगों ने क्यों फैसला किया कि इकट्ठे एक पैनल में वकील ऑनलाइन के बॉक्स में आएंगे? आप चाहते थे कि मैं घबरा जाऊं? नहीं, कराची वाले साथ नहीं हमारी आदत है। तीन बोरियां भी साथ ही निकलेंगी। चलते हुए हाथ भी पकड़ा होता है। वो और टीम आती है उठा के लेके जाती है। अच्छा, तो मुझे आप ये बताइए कि आप लीगल साइड पे ज्यादा इन्वेस्टेड हैं या टेक साइड पे? आप बताएं सबसे पहले। ये बड़ा मुश्किल सवाल है, बहुत ही मुश्किल सवाल है। पैसे के लिहाज से तो अभी लीगल साइड पे इन्वेस्ट है, लेकिन जो दिल और दिमाग है ना और जो विजन जो मैं देख रहा हूँ वो तो टेक साइड पे ही है। आपकी तरह लोगों से मैं सीख रहा हूँ कि भाई टेक को किस तरह काबू में आए, किस तरह हम इस पर आगे बढ़े। इन चीज़ों को देख के तो जाहिर सी बात है एनर्जी तो मिलती है, लेकिन अभी मेरी पैनल होने वाली है तो मैं कुछ असलियात और रियलिटीज बताने वाला हूँ, क्योंकि जब तक लोगों को एहसास नहीं है कि भाई ये सब चीज़ें तो सही हैं, लेकिन वेयर आर द रियल प्रॉब्लम्स, उन पे फोकस करके उनको ही निकालना चाहिए। फिर तो हम पूरे टेक्नोलॉजिस्ट ही बन जाएंगे ना। फिर तो वकालत को छोड़, और वकालत क्यों इस तरह देख रहे हैं हम? क्योंकि मतलब ऐसा लगता है जैसा मोबाइल फोन ईमेल रखना ही एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है हमारे मुल्क। ये क्यों है ऐसी बात? मतलब आपके अकाउंटेंट्स और डॉक्टर्स इंजीनियर्स कितने आगे चले गए। हमारे वकीलों की एक वो है कि भाई नहीं, हम जितना पुराने हैं, जितना जिन्ना के जमाने के रहे हैं उतने ही बेहतर है। क्यों? बाकी दुनिया तो आगे बढ़ रही है, हम और पीछे जाते जा रहे हैं।
अब इनकी क्या कहानी है, आप इनसे पूछिए। मेरा बड़ा सिंपल सा इसका जो है ना आंसर है, आफ्ताब साहब आप ये अप्रिशिएट करेंगे कि वकालत एक बहुत नोबल प्रोफेशन है। ऐसी कभी केस लेकर आएंगे मेरे पास, बात खत्म होगी। I don't think my answer is safe to say. नहीं, लेकिन वो तो बिल्कुल है कि टेक की वजह से ट्रांसपेरेंसी आती है हर चीज के अंदर, इसमें भी आएगी इंशाल्लाह। Automation भी आती है। This is for you, Sohaib Salim. तो लेकिन ये बहुत एतराज उठता है, हम लोगों पे भी ये एतराज उठता है कि जी अभी वो जो सही पिसा हुआ तबका है वो उसके पास तो अभी सेल फोन ही नहीं पहुंचा, या वो सेल फोन शेयर करता है तो कितना टाइम लगेगा, और उसमें तो हम कोई रोल ऐसा प्ले नहीं कर सकते कि वो ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी हो जाए, वो तो लोगों के जरिए मुआश से जुड़ी हुई है। Look, the answer is actually quite simple. एक होता है चैरिटी, एक होता है दुनिया बदलना, एक होता है बिजनेस चलाना। भाई आखिर में हमको कस्टमर्स चाहिए, हम कस्टमर्स को चैरिटी से पैशन करके जस्टिस दिखा के कस्टमर्स नहीं बनाने वाले। कस्टमर्स जो चाहते हैं वो पैसे देने के लिए जो तैयार होते हैं ना, वो इनको पहले से पता है कि क्या चाहते हैं, उनको हमें खुश करना होता है। So we are entrepreneurs, i.e. businessmen, first and foremost. जस्टिस साहब जो डिलेज की बात कर रहे हो that doesn't really require technology. It requires authority, discipline, danda. मतलब there are things they can do right now that would revolutionize this legal system. करना हो तो, और जो जिसको करना है, वो मसला ये भी है कि एक बड़े जज करना चाहता है, छोटा जज नहीं मानता, एक पैनल एक बेंच करना चाहता है, एक शहर करना नहीं चाहता। तो these things don't have a technology solution. हम we're very straightforward. कस्टमर है, पैसे देना चाहते हैं, सर्विस है, सर्विस ले ले। अब उससे जो लार्जर लीगल इकोसिस्टम में फर्क पड़ेगा, ग्रेट, लेकिन नहीं भी पड़ता, that can't be our agenda. I mean, if you go and speak to Microsoft or Adobe or Roblox, Minecraft, are they changing the world? Is that their mission? तो ये एक बड़ा डिस्कनेक्ट है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि टेक्नोलॉजी है क्या, और लीगल के जो इश्यूज हैं वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड ही नहीं है। But we do still want to revolutionize behaviors, mindsets. तो ये जो कॉन्फ्रेंस है, हमारी जो मेहनत है, इसको दुनिया खुलवाने के लिए, दिमाग खुलवाने के लिए। और शायद प्रॉब्ली एक वो भी जो हर कोई उसमें से एक एलिमेंट ढूंढता है ये वाला, उसकी एक वजह ये भी है कि यार अगर मतलब ये प्योरली बिजनेस उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है तो फिर मैं आके इस पर क्यों बोल रहा हूँ, फिर तो मुझे इन्फ्लुएंसर होना चाहिए और फिर तो मुझे उसके आप पे कुछ मिलना चाहिए, तो वो उसमें से कोई आंसर निकाला जाता है नेकी का। नेकी के मिशन डालना जरूरी है। अच्छा, तो आप लोगों को इस्लामाबाद आके उतनी खुशी होती है जितनी हमें लाहौर से आके होती है? बेहतर मौसम, ठंडा पानी। सर मुझे तो आपसे मिलके खुशी हुई है। आप बताएं, आपको हमसे मिलके खुशी हुई है? बेतहाशा। सर आप झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोले, उन्होंने पहले ये नहीं कहा था। जब आए उन्होंने बोला यार कहाँ से कराची में लोग आ जाते हैं, लड़ने देते हैं, पर्दों के पीछे बात करने देते हैं। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। इनका जवाब इतना लंबा था, मैं भूल गया सवाल क्या था। But then again, that's most lawyers. चलिए next question please. कितने दिन आपकी तो हो गई है ना प्रेजेंटेशन? अच्छा, तो यानी कि अब आप खाने के लिए रुके हुए हैं? अच्छा, अब हम खाने के लिए आपका भी पैनल है मेरा, बिल्कुल ठीक है, आपको मैं कुछ नहीं कह सकता। ये आपको भी कुछ नहीं कह सकता। ऐसे तो ये आपका जो ये सारा ब्रेन चाइल्ड है, ये कब तक, मतलब इन मोशन तो ये है, ये आएगा कब, या आ चुका है? आ चुका है। अच्छा, अब मेरे we have paying customers, we have traction, we have, मतलब आहिस्ता आहिस्ता बात बन रही है। मसला ये है कि यहाँ पे लोग, everybody wants the Instagram, Facebook experience, लेकिन पैसे भी नहीं देने और पैसे लगाने भी नहीं, right? So that disconnect needs to be fixed. तो जाहिर सी बात है भाई, traction छोटा है, आहिस्ता आहिस्ता है, but in the technology work that is validation. इनके लिए तो जब तक 26 मिलियन केसेस को रिजॉल्व नहीं किए, आपने दुनिया में कुछ किया। हमारी वैलिडेशन इस फैक्ट से आती है कि आपने शायद सुना है प्लेटफॉर्म है वकील ऑनलाइन, उस प्लेटफॉर्म पे 45,000 लॉयर्स करंटली इनरोल्ड है
and our platform, उसकी value आप इस चीज़ से अंदाज़ा निकालें that recently the founder of Vakil Online, Ismail Bisuri himself, reached out to us and said कि मैं आपके platform को अपने साथ integrate करके एक lawyers के लिए एक capacity building उसके angle में बनाना चाहता हूँ. Because the problem that he wants to address through his app is not just one fold. It's a multitude of issues, and one of those issues is कि एक बंदा client एक दफा तो वकील के पास आ जाता है, लेकिन उसके बाद कभी भी गलती से भी नहीं वापस आता. तो to resolve that issue, access to justice के साथ साथ access to quality justice भी बढ़ाना बहुत जरूरी है, ताकि आप जैसे लोगों से हमारा वास्ता और regular basis पे बनता है. उसके साथ साथ मैं भी ऐड करूंगा in all seriousness साहब, I'm actually here in Islamabad and also going to Lahore inshallah soon, in the coming week, to make sure कि जो हमने प्लेटफॉर्म खड़ा किया capacity building जैसा बिल्ला ने कहा, उसकी जो dissemination है, उसका जो access है, वो यहाँ की localized teaching centers में हर किसी के पास मौजूद हो. I'm already in talks with multiple universities in 3 cities, Peshawar, Lahore, and Islamabad. More than in fact 15 of them have agreed in letter of spirit कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को इस प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिले. तो एक्चुअल जो हमारा इस कॉन्फ्रेंस के बाद मोटो है वो यही है, इसके लिए यहाँ पे आएंगे. आप इस वक्त टूर पे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है. जबरदस्त. थैंक यू सो मच आपके वक्त का, और मैं भी यही हूँ, खाना इकट्ठे खाएंगे. Thank you very much. Thank you. Related, I mean, there are some examples also, but there has to be a mandatory mediation process within these statutes. For example, SCCP here or NADRA or OGRA, whatever. There must be a dispute settlement within first before you come to the court. That would also reduce litigation and maybe sort out a number of matters right there. They would probably understand the matter much more than by the time the matter gets to the High Court, because a lot more legalese that comes into it. Matters resolved at the locale are far better, and one should do that. Then we need to also see if we can open a portal. Every time you file, and this is where technology comes in, every time a case is filed, a portal or an e-filing system is, generated. Everybody, it's all e-filing, it's all electronic. Anybody who has to file a reply, files the reply in that account number. So there is no such thing कि मुझे कॉपी नहीं मिली, मुझे उसका जवाब नहीं मिला, ये कागज नहीं दिया. Everything goes into the electronic system and they get approved. If anybody wants an adjournment, that adjournment goes into the system, comes to the court through electronic system, and must be supported by a certificate from the hospital. Adjournments have to be seriously addressed, and unless there is an adjournment which is supported by a certificate of the doctor directly uploaded by the hospital for that case for the judge to see the next day, there is no adjournment. So only then, and there has to be also a system which is very important, that there has to be a security. A litigant, while he files a case, must submit a security also. And in case he doesn't show up, he runs away after getting a stay order, some sort of a security is forfeited. So the whole system is electronic. It gives all these, there's inbuilt systems, and inbuilt costs that are imposed, there's inbuilt system of adjournment, and everything is electronic. Everything is coming up before the court, so that there is no running around. You see, you can't just get out of this. So technology has to be, we have to curate something around this, that the whole case moves through electronic system. And in that system, everything is filed, adjournments are filed, costs are coming in case nobody shows up, how the ex parte system moves, everything is electronic. We need to, the next thing which is important, which is connected, is to redefine the concept of hearing. I think gone are the days that we have a synchronized physical presence of hearing. The world has changed. If you read Professor Susskind, who writes about online courts and the future of the courts and justice system, we are now talking about hearings which are not synchronized. Synchronized hearing means that both the lawyers are there at the same time, all the parties are there at the same time. That is not going to happen. And as you see every day, the major cause of adjournment is that the lawyer is not showing up, or one of the parties is missing, and we say, okay, let's wait for a while, and then he doesn't show up, we say, okay, let's adjourn the case.
and that we should not be dependent on the physical presence of the parties anymore. Thanks to video linking, which is doing a fantastic job at the Supreme Court as well as some of the high courts. So video linking facility is available. So if we were to redefine the word hearing, which would mean that yes, it could be asynchronized also, in the sense that it need not have everybody there at that very moment. So whoever is there is being heard, and who is not there can send in their submissions later. We don't need to see the lawyer, the pleadings are there, skeleton arguments are there. The judge can very well decide the case by looking at the pleadings, by looking at the skeletal argument, and that's good enough. And if the lawyer wants to be heard in person, he must make a special request to the court with a security there also. That I want to, sir, appear personally, and I want to have be directly. In that case, if he doesn't show up, he can send an audio clip, he can send a video clip to the court. And while I've heard the case today, I've heard the other lawyers, I've heard everything, I've gone to my chambers and I have this electronic file. I open the electronic file, and by the evening or by the next day, I receive the audio or video recording of the other lawyer also. So I get to hear him and I say, okay, this is the skeleton argument, this is what he had to say. I've decided the case now. I think we'll have to move to that way of hearing. We have to get on to bringing in technology into hearing and not rely on everybody's physical presence every day in the court. Court is not a place, it's a service. And the service has to be rendered by people, putting in their inputs. And the inputs can keep coming. The techie sitting here could evolve something to this effect. You see, we do not have to see everybody's face to decide a matter. The pleadings are there, skeleton arguments are there, I can read and decide the matter. I don't need to see the lawyer. And if the lawyer insists that he wants to argue. वेलकम बैक. मैं हूं इस वक्त जावेद इकबाल साहब के साथ, चीफ कमर्शियल ऑफिसर हैं SZTA के. सर, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में प्लीज समझाएं मेरे जैसे को कि ये जोन्स क्या होते हैं और आप उसमें किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं. श्योर, बहुत शुक्रिया पहले तो बुलाने का. स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी क़याम हुई है मुल्क में टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के फरोग के लिए. अब टेक्नोलॉजी बेस्ड इकोसिस्टम होता क्या है? आपने देखा है कि टेक्नोलॉजी किस तरह एक सेक्टर से हट के अब हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रही है, जो कि हर चीज़ के थ्रू कट थ्रू कर रही है. आप फाइनेंस टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं कर सकते, एग्री नहीं कर सकते, हेल्थ नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह वगैरह. आप देखें किस तरह घर बैठे बैठे आप कुछ चीज़ खाना मंगवा सकते हैं, करीम मंगवा सकते हैं, वगैरह वगैरह. बहुत सारी चीज़ों के अंदर टेक्नोलॉजी आके अपने आप को इम्पैक्ट कर चुकी है. जैसे पहले इलेक्ट्रिसिटी. अच्छा, हमारा मुल्क कुछ इस तरह के ट्रेन्स मिस कर गया. इंडिया मुतफरक मुल्कों ने बाकियों ने 20-30 साल पहले इस पे काम शुरू कर दिया था, जिसका अब वो फल खा रहे हैं. हमने कोई ऐसा इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं बनाया जिसके अंदर टेक्नोलॉजी बनाने वाले, सिखाने वाले, इस्तेमाल करने वाले, एक्सपोर्ट करने वाले साथ एक साथ काम करें ताकि पूरी चीज़ उठे. और वो हर शोबे के लिए, स्पेशली लॉ की जिस तरह बात हुई, इस तरह कंपनी एक्ट, बहुत सारी और चीज़ें. तो STZA 2021 में 6 अक्टूबर को एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास हुआ था, जिसको लोअर हाउस, अपर हाउस, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने यूनानिमसली पास किया था कि हमारे यूथ के लिए ये एनवायरनमेंट्स बनाने बड़े ज़रूरी हैं. तो पहले फेज में हमने इस्लामाबाद में इधर एक चकशदाद में 140 एकड़ का लैंड पार्सल लेकर उसको जोन डिक्लेयर किया है, और वहाँ पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा. वो हमारा सिग्नेचर वो होगा. उसके बाद पूरे मुल्क में जोन्स बनेंगे. पंजाब और KP के ऑलरेडी शुरू कर दिए गए हैं, जिसमें उनकी गवर्नमेंट्स के साथ मिलके कहाँ जोन डिक्लेयर होना है, कौन सी बिल्डिंगें बननी है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है. उसके बाद सिंध, बलूचिस्तान, AJK, गिलगित बल्तिस्तान उसके बाद वाले फेज में आ रहे हैं. तो ये इस तरह का पहले कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया गया है हुकूमत की जानिब से जो कि इस पूरे मामले को फरोग दे. और हम सारे बहुत एक्साइटेड हैं कि ऐसा फोरम जो है जो बन रहा है वो हर तरह के एस्पेक्ट को, चाहे वो गवर्नमेंट है, एकेडेमिया है और इंडस्ट्री है, इन तीनों को जोड़ के
جو کہ ایک ٹرپل ہیلکس ماڈل کہا جاتا ہے. ان تینوں کو جوڑ کے اس کو ساتھ لے کے جا کے ایک پورا ٹیک ایکو سسٹم بناتا ہے ملک کے. زبردست. سر ایک بڑا مسئلہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی ٹیکنالوجی کی بات ہوتی ہے, جب بھی پروگرس کی بات ہوتی ہے, وہ حکومت سے ہی کئی دفعہ اس قسم کی آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ اس سے کہیں فحاشی نہ پھیل جائے. تو یہ اب آہستہ آہستہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس میں سے نکل رہے ہیں؟ دیکھیں ٹیکنالوجی کے فوائد بھی بہت ہیں اور نقصانات بھی. ڈارک ٹیکنالوجی is detrimental to a lot of things, but good technology is an enabler for a lot of things, right? اب آپ فائدے کی اگر بات دیکھیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے دیہات میں ایک بیچاری عورت اپنی چیز جو چھوٹی سی اس نے بنائی ہے اس کو کہیں اور بیچ سکتی ہے. ٹیکنالوجی نے فروغ دیا اس چیز کو. اس کے علاوہ آپ دنیا بھر میں کرونا میں کیا ہوا ہے, لوگ پاکستان سے بیٹھ کے دنیا بھر میں کام کر رہے تھے. تو امپاورمنٹ زیادہ ہے. ہاں یہ والے معاملے بھی موجود ہیں, اس میں نہ صرف فحاشی بلکہ مس انفارمیشن, مس نیوز, جس کے بیسس پہ وارز ہو رہی ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں, وہ بھی اپنے ایسپیکٹ. لیکن ہر ایسی چیز کی طرح ٹیکنالوجی بھی لوگوں کو کنیکٹ کر کے لوگوں کے جذبات سے کھیل رہی ہے. ٹیکنالوجی لوگ نہیں, لوگوں کے جذبات ہی. اس میں پازیٹیو لوگ پازیٹیو طرح سے استعمال کر رہے ہیں. یہ والے ایسپیکٹ بھی ہیں, ان کو ہمیں طریقے سے مینیج بھی کرنا ہے اور پازیٹیو کی طرف لے کے جانا ہے. اچھا سر, آپ کو آج کے ایونٹ کا ایمبینس کیسا لگا؟ ایمبینس ایک تو بہت انبلیویبل ہے, اور دوسرا اس کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ بہت زبردست ہے. اس ملک میں 2 ملین سے زیادہ کیسز انفلفل پڑے ہیں. 2 لاکھ سے اوپر لائر ہیں, 2 لاکھ سے اوپر پیرالیگل اسٹاف ہے. تقریباً ابھی وہ جج صاحب بتا رہے تھے کہ 10 ملین لوگ اس معاملے سے جڑے ہوئے ہیں, جو کہ جن کا کورٹ سے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی تعلق ہے. اور 20-20, 30-30 سال, 2-2, 3-3 جنریشن کبھی کبھار تک وہ جسٹس نہیں مل پاتا, چاہے وہ سول کورٹ ہے آل دی وے اپ ٹو سپریم کورٹ. اس پورے معاملے کا حل صرف ٹیکنالوجی ہی ہے, کیونکہ جب تک آپ آٹومیشن, انٹیلیجنس اور پوری چیز کو ٹرانسفارم کر کے ان پلیٹ فارموں پہ یہ کیسز نہیں لے آئیں گے جہاں پر بیٹھ کے جو کیس کی شروعات ہے وہ ٹیکنالوجی ہو, جو کیس کے ایسپیکٹس ٹیکنالوجی کے انٹیلیجنس بلٹ ان سے ہو, اور پھر ایون فار دیٹ میٹر آپ زوم ٹائپ چیزیں امبیڈ کر کے ٹیکنالوجی کی بہت سارے کیسز کیے جا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ اگر جو ہے کوئی لڑکانے میں کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو وہ اسلام آباد کے لیے اس کو آنا پڑے, وہ پورا ایک ملا کے اس معاملے کو آگے لے جا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. سر یہ اس میں جو ہے اس چیز کا بہت فرق پڑے گا کہ جو آپ کا انیشیٹو ہے, یہاں پر اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ اچھا چلیں ہم لوگوں کے پاس تو ایکسس ہے, اصل جو ڈاؤن ٹراڈن ہے اس کے پاس تو شاید موبائل ہی نہیں ہے یا وہ شیئر کرتا ہے, تو اس کو اس پلیٹ فارم تک آنے میں دیر لگے گی, اور آپ ان کے لیے بیسیکلی ایک کام کر رہے ہیں کہ یہ جتنی جلدی ہو سکے اس کا اسپریڈ ٹیکنالوجی کا اور ہر چیز کا ایکسس اس کی بڑھ سکے. تو میرے خیال میں یہ T4JF اینڈ STZA گو ہینڈ ان ہینڈ. بالکل جی, اس میں آپ اس طرح دیکھیں کہ جو زونز جب تک بنتے رہیں گے, کچھ زون ہم بنانے پہ توجہ دیں گے, کچھ ڈکلیئر کرنے پہ توجہ دیں گے. اس کے علاوہ ہماری کلوز پارٹنرشپ ہے متفرق اداروں کے ساتھ, جس میں اسٹیٹ بینک آتا ہے, FBR آتا ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن آتا ہے. لیکن یونیورسٹیوں کو بھی یہ سمجھنا ہے کہ کون کون سے ایسے کورسز ہیں جو انہوں نے پڑھانے ہیں ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے, اور جو دیہی علاقوں کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں نہ صرف ٹیکنالوجی کو پہنچانا لیکن وہ ایجوکیشن ٹیکنالوجی کو پہنچانا بہت امپورٹنٹ ہے. اس طرح کے ادارے ہیں, PTA جو ہمارا ٹیلی کام اتھارٹی ہے, دوسرا ایک یونائٹڈ سروسز فنڈ ہے USF جو PTA ہی کے ساتھ منسلک ہے, جو کہ دیہی علاقوں میں یہ براڈ بینڈ اور موبائل ٹیلیفونی پہنچا رہا ہے. جتنی کنیکٹیوٹی ہوگی چاہے وہ زون کے اندر ہو یا زون کے باہر ہو, اتنی ہم ٹیکنالوجی کے استعمال سے ایجوکیشن دے سکیں گے, ان کی زندگیوں میں فائنینشیل انکلوژن دے سکتے ہیں, اکنامک انکلوژن دے سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس سے اچھے کوئی فورم نہیں ہو سکتا جو لیگل اور ٹیکنالوجی کو ہمارے ساتھ جوڑ کے ان سارے کاموں کو کرے.
Thank you, sir, and good luck. Thank you जी, बहुत शुक्रिया. If nothing works, then you can kind of come up to the court. Okay जी. हो गया So I सर. think that needs to open. The whole world is trying mediation. The whole world is experiencing arbitration, but we seem to be away from that. One other technological instrument or technology that could be very helpful for us, and the techies could come up with, is recording of evidence in the trial court. I mean, that's one hell of a pain. So why can't there be an app which actually records not only the audio but the video of that person, and then also transcribes it in English and gets it typed out immediately? I think that'd be wonderful. Keep a record of the witness, his audio maybe or his video, and his transcription can come by using an app. He just simply answers and nobody does anything, records him, and that gets transcribed. Could be a hugely beneficial thing for the justice sector, because evidence, the way it's recorded, the way it's written, and a lot of it lost in translation also. So I think a wonderful app in this regard would be helpful. And lastly, there was a talk about judgment writing. I think Grammarly and other apps in the world are used. We need to make sure that when the judgment is written, we can run it through a system which looks after its legalese, which looks after its English maybe or Urdu maybe, and makes it a very wholesome document. I think there could be a software which could help judges who probably do not, to improve in case there's an English issue or there's an issue relating to legalese. A judgment writing app would also be very helpful. So these are some of the ideas whereby I think we could transform the way justice sector needs to move, or the courthouse has to change, because just by mere automation, things aren't really happening. And I think technology can really make it happen. So let's get on with this work. If we can do that, we have a limited period at the Supreme Court, and I hope you'll be able to do something and bring transformation. So as they say, Carpe Diem, seize the day. Thank you so much. Thank you indeed, Your Lordship. Thank you for asking the very hard questions and showing us, giving us guidance on how to move forward on these pertinent issues. Now we'll move on to our panels. We have 3 panels. The way we have organized the panels is that the discussion will incrementally grow from the first panel to the next. And the first panel is access to justice through technology. The second is how do we digitize the legal landscape of Pakistan? And the third is what actions do we need to take to realize a digital legal landscape? वेलकम बैक. मैं हूं इस वक्त वैलेरी खान के साथ, जेंडर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्सपर्ट. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. कितना इस वक्त ज़रूरी है इंटीग्रेशन टेक का हमारी लीगल साइड के साथ, और इससे आपकी जो फील्ड है जेंडर और चाइल्ड प्रोटेक्शन, उसका कोई ताल्लुक है? तो ताल्लुक बहुत है जेंडर और चाइल्ड प्रोटेक्शन और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि जब पाकिस्तान में 2017 से GBV कोड्स और चाइल्ड कोड्स एस्टैब्लिश कर शुरू किया, the fact of having a video linkage and including new technology in the SOPs in the process of the trial was actually very important to protect the children from secondary victimization and secondary trauma. तो ये न्यू टेक्नोलॉजी बेसिकली बच्चों तहफ़्फ़ुज़ के लिए और सेंसिटिव ट्रायल के लिए बहुत ज़रूरी है. न्यू टेक्नोलॉजी के साथ फॉर एग्जांपल बच्चों एक दूसरी कमरा में बैठ सकते हैं और वीडियो लिंकेज के थ्रू आपकी टेस्टिमोनी वो दे सकते हैं without facing the accused or the perpetrator. So that's an example of how to do it. दूसरी बात, हमारे काफ़ी विक्टिम्स है जो कि अपने बाप और माँ के साथ इतने पैसे नहीं है ना, so the new technology also allows more affordable justice basically. ये ज़रूरी नहीं है कि आप दूर तक जाएं, आप आपकी डिस्ट्रिक्ट या तहसील लेवल पे शायद कनेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं इस टेस्टिमोनी के लिए. तो ये सारी चीज़ को ज़रूरी है. और दूसरी बात है विक्टिम के अलावा जब आप लॉयर्स के साथ जाएंगे और इवन जजेस के साथ जाएंगे, you can have a lot of access to resources, coaching and mentoring via digital platform. For example,
गुजरांवाला दीर में है या पिशीन में है, लेकिन जब एक कानून ढूंढ रहे हैं, एक jurisprudence ढूंढ रहे हैं वगैरह वगैरह, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इस किस्म का इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। ये adequate jurisprudence के लिए and informed jurisprudence के लिए ये बहुत जरूरी है। अच्छा, आपके ख्याल में चैलेंजेस क्या सामने आ सकते हैं? मतलब वैसे तो बड़ा ऑब्वियस है ना कि अभी इतने नंबर ऑफ पीपल हैव एक्सेस टू ब्रॉडबैंड, दिस नंबर ऑफ पीपल हैव cellular phone and all that. The number will increase, it will not decrease. So what are the hurdles that we can face? जब आप न्यू टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, I think I'm not an expert in new technology, but from a gender and child protection practitioner perspective, एक मसला है हमारे साथ which is the digital gender gap. तो मैंने है digital literacy और digital gender gap, which also needs safeguarding standards. ना वो जब female, for example, इस्तेमाल कर रहे हैं, now you need to be protected from bullying, from potential abuse, from inappropriate messaging, whatever. So, it's also very much linked to cybercrime, all these things too. You need a holistic approach where you can have basically safe, inclusive, and meaningful access to those digital platforms, all within the logic of increasing access to justice, basically. और आपके ख्याल में इसकी वजह से जो विमेन पार्टिसिपेशन है इन लॉ, उसके अलावा जो सवाल करना है वो उसमें भी इजाफा हो रहा है? And so there is still much work to do. हमारे ख़वातीन फ़िलहाल 15% represent करते हैं justice sector में, लेकिन on the service provision perspective, we certainly are seeing an additional momentum to recruit more police women, to recruit more judges, also promote them into leadership position. वकीलान को हमारे female ख़वातीन वकीलान ज़्यादा भी आ रहा है, but this is work in progress. Much more is still needed. Other फीसद हमारे population female के हैं. We need to see them reflected in the justice sector. And given the gender dynamic and gender sensitivities of Pakistan in particular, I strongly believe that the more women we will see in the justice sector, the more women will be encouraged to access and seek remedy whenever they are facing abuse or denials of their fundamental rights, because they will feel more comfortable to approach a lady than a man. We've got those gender considerations at play. Thank you so much for your time. Thank you. अभी एक और गेस्ट के साथ हम दोबारा मिलते हैं. At the time, there is this law that within 18 kilometers of the conflict area or line of control, the state authorities can actually bar the internet. But they extended it much beyond the 18 kilometers. So most of, Kashmir, all of Waziristan, north and south, all these places did not have access to internet. And there was this picture of this young boy who had climbed up the hill and he was holding his phone hoping for a network. So I think that we can talk about technology moving us into the future, but essentially it is controlled by human beings. And it is, in some ways, it is hindered by state rules, laws, and regulations. And if you really want an open society, where you can really take advantage of being progressive, it won't be technology. It will have to be a democratic culture. It will have to be a democracy. It will have to be a rule of law. Just a quick comment to that. You just talked about the democratization of technology. Don't you feel with the inception of social media, the democratization is already there because there's hardly any check and balance on this? I wouldn't say that at all, because we've just been through a year of sedition charges being leveled against all journalists. And it has been under the PICA law that was brought in by Nawaz Sharif's government. So I would not say that we have full freedom of expression. In fact, journalists have been on the streets protesting against this. So I think, again, technology has to be used, but I mean, if you want progress, then it has to come from the state. It has to come from the lawyers' movements, the judiciary, the journalists,
and it has to come from the politicians. Let's involve Mr. Kanuri in the discussion as well. Sir, I have a very different sort of a question for you, and I asked this question as a complainant. I would say I remember last year filing a form application on behalf of my wife, and I'm representing her here, in addition to being the moderator. That was regarding the equivalent certificate attestation. And it has almost taken 1 year, but there's nothing and there's no response. So the whole part of introducing that technological bit or that technology was to get things expedited. Since you're heading the Higher Education Commission, I would just want you to comment on that. That why is it not being expedited? Why is it not working in the first place? Because I've made several complaints, and there are other people who must have done that. Thank you very much for raising that question, and thank you to the organizers for inviting me. I'm going to say two things. One is specifically on the point that you raised. When I took over, one of the tasks that I set for myself was what is called process re-engineering. I looked out the window and I saw all of these people waiting in lines, and I basically asked my staff and myself, okay, how do we make these things easier for them? As far as attestation is concerned, we made significant progress. But please don't hold me to account, because I was pushed out for a year and we've had quite a bit of a regression in that period. We are trying to sort of get back in. So the issue for us was, that to what extent can we use both technology and also process re-engineering to make people's lives easier. Right? So we actually created a web portal. You apply on the portal, you get a date. You don't have to come to any office. You send it to TCS, you get it back to TCS, etc. As far as attestation is concerned, I think we made quite a lot of progress. There's some regression now, but by and large, I'm happy with it. Equivalence between foreign and national degrees is still a problem, because we do need to involve an external university. And there is much greater potential for both opaqueness and for people to try to manipulate things. So there we've not been able to introduce the kind of transparency that we pay for. Just to give you an example of NADRA, which is where I was coming actually, because NADRA has just completely optimized the whole thing. And now it has become very easy. I've tried myself for applying for the cards and all. Since you also had a government department of an institution, what do you think is the importance of technology? Yeah, you see, one of the things which we are now, in fact, I started it before I was thrown out, and now I've picked it up again, is that we want to get rid of this attestation problem altogether by creating an electronic signature for all of the degrees. Once that is there, you don't have to apply to anybody. You already have the signature, and that will enable you to get the certification that you need. We will still have some problems with equivalence, but I think we'll be able to solve it. But you see, the problem is slightly bigger, and in fact, this is one of the things that I was trying to reflect as I came here. I see HEC's role primarily as a way of protecting the rights of the students. Right? I see HEC's role primarily in terms of protecting the rights of the students. Right? Students deserve a good education. Students deserve not to be harassed. Students deserve to be treated, properly and so on. They basically deserve to be treated fairly, on merit, etc., etc. And we found that many of these things are not happening. And part of the problem was that HEC was not really working in such a way as to enhance the rights of the students. It was working much more to strengthen its own institutional basis. Right? So our initial approach was transforming it through what I call process re-engineering, in which we make the policies transparent. We create systems of monitoring of the staff and systems much more transparent. And we use technology as a way of both speeding up the process and making it more open and accessible to everybody. And we did start with this thing. But there are two types of problems there. One type of problem is that
We do have a staff which is used to doing other things, which is used to doing things in a different way. But the main thing is that, lots of people benefit from it. So transforming it is actually a little bit of a problem. I think, as Justice Mansoor Ali Shah said, that you can put any technology, if the people you're using are not interested in using it, we're not going to get any results. And we are facing that difficulty significantly. The second thing is that, in a lot of cases, we don't need to reinvent the wheel. The technology is there. It is expensive. And when we try to use domestic technology, it's clunky and it creates problems. So we are also now trying to raise... Welcome back. I'm honored to be here with His Excellency, Mr. Schlagig. Thank you so much for your time, sir. Thank you for having me. Sir, how important do you think it is for us to integrate our legal side with the technology? Well, I think nowadays it's hardly imaginable that you can, let's say, differentiate these areas. I mean, as we have heard in a very impressive presentation by a member of the Supreme Court some minutes ago, I think in order to organize properly and streamline judiciary, particularly the, I would say, enormous caseload, I mean, you cannot do that without technology. And so the question of access to the justice system, but also the question of equitable judiciary is, I would say, intrinsically related to technology and technological solutions. So, do you think, although we know we're late, but we can still catch up with the rest of the world? Without any doubt. I have to say, I'm very impressed by, I would say, the enormous progress that has been made, particularly in the digital area, by, I would say, the private sector. Young entrepreneurs, there's a lot of talent in Pakistan, of course, across the board of digitalization. We have seen remarkable startup. I have seen remarkable startup. And I mean, what we have been seeing today here at this conference, is testament to the, I would say, very innovative power of lawyers, of legal practitioners, also in the technological field. So I'm absolutely sure that due to this great innovative talent of young Pakistani lawyers, you will make up it easily. So, thank you so much for your time. Thank you. I'll pick it up, sir. Thank you very much. Thank you, sir. जिसमें आजकल आप एप्स आ गई हैं और बहुत सारी चीजें हैं जिसके जरिए आप एक्सेस कर सकते हैं. तो मैं अपने ऑफिस में बैठ के I can manage my case, I can argue my case before the High Court and similarly before the Supreme Court. I should be given. ये जो कुछ उन्होंने टेक्नोलॉजी दी है, लोगों को ये एक्सेस दिया है, it is a good thing. ये भी अभी शुरू हुआ है 2-3 साल से, लेकिन it is insufficient. ये insufficient है. अब एक शख्स अब सक्का से जाता है, he will go to Karachi and thereafter he will argue his case. It is not a facility. Facility should be if you are sitting in your office, you have an access, you should argue the case. जैसे मंसूर शाह साहब कहते हैं, लेकिन वो उनसे मैं इस हद तक जरूर इख्तिलाफ करूंगा कि आप ऑडियो लिंक वीडियो लिंक भेज दें. आपने बेसिकली तो आपने लिख के भेज दिया है, आप सिखाएंगे कैसे, पढ़ाएंगे कैसे, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको कैसे एग्रेसिवली परस्यू कर सकेंगे, उनको कायल कैसे कर सकेंगे, उनको कैसे बताएंगे कि मेरा केस क्रक्स ऑफ द मैटर मेरा ये है. वो आर्ट ऑफ आर्गुमेंट से होता है. वो अब उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता. और हमारे मुल्क में जिसपे आपकी सम टाइम बिजली नहीं है, सम टाइम आपका नेट कनेक्शन नहीं है, सम टाइम बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, दैट इज एन इट. अब हमारे जो एसोसिएशंस के लेवल पे है या काउंसिल्स के लेवल पे है, हमारे यहाँ से भी एक प्रॉब्लम है. वो ये है कि हम सिर्फ प्रपोजल्स दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं.
decision making is with the courts. اور ہمارے یہاں وہ ڈیسیژن میکنگ بار ایسوسیشن کو 90% افیئرس میں، اب جیسے لائیو اسٹریمنگ کا ایشو ہے، اس پہ اکرم عدالہ صاحب نے کمیٹی بنائی، اس میں ہم آلسو ون آف دی ممبر، ہم اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں، چیزوں کو کر رہے ہیں. 99% یا 95% آپ یہ کہیں گے تو جو کورس فیسلٹیٹ کرتی ہیں بار ایسوسیشنز جو کہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، کیونکہ ہم وی آر دی ریپرزینٹیٹیو آف دی ناٹ اونلی دی بار ایسوسیشن بلکہ اسٹیک ہولڈرز جو ایکچولی دی لیٹیگنٹس ہیں، ان کی بات ہم نے پہنچانی ہے. ویلکم بیک. میں ہوں اس وقت فاطمہ بٹ صاحبہ کے ساتھ، بہت ہی ایکٹیو ممبر ہیں وکیل آن لائن کی، بلکہ جو ٹاپ ابھی تک ہمارے رہے ہیں موسٹ ایکٹیو ممبرز ان میں سے ایک ہیں. تھینک یو سو مچ. ایک چیز جو مجھے بڑی عجیب لگی اور وہ یہ کہ ہم سوشل میڈیا پر پروگرامز کرتے ہیں، دیگر چیزیں کرتے ہیں، ہمیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی بہت چھوٹا رکھا کریں، بہت کرسپ رکھا کریں، اٹینشن لوز کر جاتے ہیں لوگ. جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ وشال کے ساتھ لمبے لمبے سیشنز کرتی ہیں، لیکن لوگوں کا انٹرسٹ بھی قائم رہتا ہے، آپ کے پاس کلائنٹس بھی آتے ہیں. یعنی کہ اگر گفتگو جو ہے وہ میننگ فل ہو تو پھر لوگ لمبی چیز بھی دیکھتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی چیز ڈسکس کر رہے ہیں جو لوگوں سے ریلیونٹ ہے، لائک فار ایگزامپل اگر میں کوئی لیگل ایشو کو ڈسکس کر رہی ہوں اور اگر جیسے میری ایکسپرٹیز سائبر ہراسمنٹ کے کیسز کی ہے، سائبر کرائمس کے یا ورک پلیس ہراسمنٹ کی ہے، تو آئی بلیو کہ جو بھی یوزر انٹرنیٹ پہ ہے، چاہے وہ ہمارے گروپ کا پارٹ ہے یا نہیں، بٹ اسٹل اس کو کہیں نہ کہیں آن لائن اسپیسز پہ ہراسمنٹ فیس کرنی پڑتی ہے. اب اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اگر میرے ساتھ ہراسمنٹ کا ایشو ہو رہا ہے تو میں اس کے لیے لیگل میکانزم کیا ہے، کس فورم پہ میں جا سکتا ہوں. تو جب لوگ زیادہ انٹرنیٹ یوز کریں تو ان کا ٹاپک، مطلب جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں وہ آف کورس ان کے انٹرسٹ کا ہوتا ہے. تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ لوگ اس چیز کے بارے میں اویئرنیس حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر ان کو انفارمیشن حاصل ہوتی ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا لیگل ایشو ہو رہا ہے تو اس کے لیے وہ کس فورم پہ جا سکتے ہیں، کون کون سے لاز ہیں اور اینڈ پہ کیا ریمیڈیز ان کو مل سکتی ہیں. بالکل. اچھا، یہ سائبر کرائمز کو لے کر ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، جو ججز ہیں وہ ان کی تعداد بہت کم ہے. تو آپ کے خیال میں اس طرح کے انیشیٹیوز ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ جب کرتے ہیں ہم لا کے ساتھ، تو کیا اس سے ججز کو آسانی پیدا ہوگی، وہ جلدی میں زیادہ مقدمات نپٹا سکیں گے، اس طرح کے جلدی سے ٹرن اوور بہتر ہو جائے گا کیسز کا؟ میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں جو سب سے بڑا ایشو ہے جوڈیشل سسٹم ہے. یہاں پہ ججز کی ایسے ٹریننگ نہیں ہوتی، ججز نے LLB کی ڈگری لی ہوتی ہے، کچھ عرصہ وہ پریکٹس کرتے ہیں اور ایک سمپل سے ایگزامز ہوتے ہیں جس میں ایون سائبر کرائم سے ریلیٹڈ یا فورینسک لا سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن نہیں آتا، ان کو اویئرنیس ہوتی نہیں ہے. انہوں نے ایک سمپل ڈگری کی ہوئی ہے، یہ کسی کو نہیں پتا کہ ان کا چاہے سول میں سول لا میں ان کی ایکسپرٹیز ہے یا انہوں نے سول لا کی پریکٹس کی ہوئی ہے، فیملی کی ہوئی ہے. بٹ بہت سے کم ججز ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے جب پریکٹس کی ہے تو وہ سائبر کرائم لا سے مطلب اس سے اکارڈنگ کی ہو. تو یہ چیز ہوتی ہے جب وہ مطلب لائک ایک سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ان کو ایک مطلب ایک پوزیشن مل جاتی ہے اور وہ ان کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ کیسز کا ڈیسیژن لیں، بٹ ان کے پاس انف نالج ہی نہیں ہوتی اس چیز کی. تو آئی بلیو کہ جو اس طرح کے سیشنز ہیں وہ آف کورس ججز کو جو ہے وہ مطلب لیگل نالج ان کی لیگل نالج زیادہ ہوتی ہے، ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کون کون سے ریسنٹلی لاز ہیں، اگر کوئی کیس آتا ہے تو اس کی بہتر طریقے سے ٹرائل کس طرح کر سکتے ہیں، اور جو فرینسک رپورٹس آ رہی ہیں ان کو ریڈ کرنا ایک لائر یا ججز کا اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی کہ وہ ان ڈیجیٹل فرینسک رپورٹس کو پڑھ سکے. بٹ اگر آپ ان کو ٹریننگز دیں گے تو اس کے بعد ان کو اتنی مطلب نالج حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ ڈیسیژن جو ہے وہ کیس کے اکارڈنگلی اور کیس کے سارے سرکمسٹانسز دیکھ کے بھی وہ ڈیسیژن لیتے ہیں. اچھا، تو آپ اپنا کس طرح سے وقت نکالتی ہیں؟ آپ نے کو ہفتے میں سوچا ہوتا ہے کہ اتنے گھنٹے میں ضرور کوئی سیشنز کروں گی یا لوگوں کے سوالوں کے جواب دوں گی؟ اگر نہیں کوئی اسپیسیفائڈ نہیں ہوتا، وہ اویلیبلٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، بٹ آئی ایم آلویز اویلیبل، کیونکہ آئی بلیو کہ نالج شیئر کرنے سے بڑھتی ہے. اگر وہ صرف میرے مائنڈ تک لمیٹڈ رہے گی تو وہ لوگوں کا اس سے فائدہ نہیں ہے. تو میری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کروں، اور میرے سے لیگل ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں تو آئی آلویز ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں اپنی اویلیبلٹی کو کنفرم کروں. مشکل ہو جاتا ہے بٹ میں اپنی پوری کوشش کرتی ہوں. تھینک یو سو Thank مچ. you so much. I think it's a relevant question, but I mean, look at it this way, where we are right now, and my friend over there explained to you why certain things cannot be open, and they cannot be in open court. But at the same time, what we have noticed, because I'm in the media, whenever some victim calls the youth, please, we do not
Now they say the opposite. They say to us that please put our name in it. Please put our case before. Because one media know about this case, that is when we can expect some justice. In certain cases, I'll give you a small example of this one girl called Farah Shaheen, is a minor, possibly converted and married to an older Muslim man. And when we went to file the FIR at Islamabad, the IG, at the police, not the IG, but the police at the time said that we will not because it happened. We have converted this little girl into this, converted her to Islam. So once the case came into the media, that's when the Human Rights Committee in the Senate had a look at it, and they summoned the IG. The IG then had to file the FIR. The girl had to be produced before a magistrate. The magistrate knew that the media was watching the case. There was a forensic that was carried out, and the girl was repatriated back to her father. And that could only have been done because there was a media presence there. So that is one of the justifications, one of the reasons why we also started voice speaking. Because we felt that more and more there was less space for victims like this on mainstream. Because, it was basically the statement journalism that was going on. The story of the people had gotten lost. So I think you're absolutely right that you have to be very creative in the way that you access justice. And it's no longer just the lawyer. Now the media has to play a very big role also in accessing justice. But having said that, I think there is also a very big backlog in all our courts, and my brother here will probably tell you more about it. But we've had cases going on for years. But we've seen political cases being resolved within months. So I think that the suggestion that the politicians have made, that under the Charter of Democracy there should be a special constitutional court, I think that should be made, so that these courts are free out to listen to other relevant cases as well. And I think that would be a very welcome thing if that does happen. I just need to quick comment on two things. A, you made a very interesting comment that we need another constitutional court, because presently almost all the high courts and Supreme Court are just busy discussing. That's part of the Charter of Democracy. The original, yes. So the second part, A, you comment on that. Do we actually need a constitutional court at this stage? And secondly, freedom of expression vis-a-vis the social media at the moment. So I want your comment on that. Should the freedom of expression be capped? Should there be any check and balance, or it should be without any check and balance, somewhere in between? I need your comment on that as well. Well, firstly, with the Constitutional Court, I think that was something that was decided between Benazir Bhutto and Nawaz Sharif in 2006. It was part of the Charter of Democracy. And it's something that all politicians have talked about, that there should be a Constitutional Court. And I think that's a very good idea if there is one. When you talk about freedom of expression, we've never really enjoyed complete freedom of expression in Pakistan. Whether that's mainstream or whether that's social media, most of our journalists who are picked up because they were exploring a story on corruption. Let's say there are certain no-go areas. And now journalists cannot travel to North Waziristan, South Waziristan. They cannot actually report from these areas. So Balochistan is one no-go area, has become a no-go area. There are certain institutions that you cannot report on. What about the corruption of the army? Have you ever seen a story on that? Never. So I mean, it's not because they don't exist, it doesn't exist. It is इस वक्त ज़ैनब सरताज के साथ लीगल पे में सॉरी सादा पे में हेड ऑफ लीगल हैं. थैंक यू सो मच. यहाँ पर भी एक ऐप लॉन्च हो रही है. ये लीगल, आपको पता ही है, लीगल साइड को इंटीग्रेट किया जा रहा है. आपका भी, बल्कि आपका तो शायद इससे भी ज्यादा वो नाजुक मामला है, क्योंकि फिनटेक पैसे इन्वॉल्व हैं, साथ में टेक है, और लोग जो हैं यहाँ पर उनको बड़े कंप्लेंट्स होती है कि जी हमारा ये नहीं हुआ या हमारे साथ नहीं हो गया. That's right. तो आपके ख्याल में अभी मतलब एक तो ये कि कितना जरूरी है इंटीग्रेट करना टेक्नोलॉजी हर चीज के अंदर, और दूसरा ये कि हमें अपने मसाइल से बाहर आते हुए कितना टाइम लगेगा? I think that's a very pertinent question. There is no escaping technology. हमें पता है कि this is the future. इससे हम escape नहीं कर सकते. So जितना जल्दी हम
अपने सर्विसेज को टेक बेस्ड करेंगे, not only is it better for improving the quality of our lives, but it's generally very important for our economy as well. जैसे कि आप सुन रहे होंगे स्टार्टअप स्पेस में अब एक के बाद एक ऐसे स्टार्टअप्स आ रहे हैं जहाँ जो जिसकी वजह से पाकिस्तान में फॉरेन फंडिंग आ रही है, जॉब जनरेशन हो रही है, एक्सेट्रा. सो द होल इकोसिस्टम जो है वो इज रियली सपोर्टिंग द इकोनॉमी क्वाइट सिग्निफिकेंटली. जहाँ तक आपकी फिनटेक की बात है तो उसमें ये है कि ऑब्वियसली एज ऑलमोस्ट ऑल फिनटेक्स ऑपरेट अंडर अ लाइसेंस फ्रॉम द स्टेट बैंक, तो हम रेगुलेटेड एंटिटी के तौर पे इंक्लूडिंग सादा पे ऑपरेट करते हैं. और हम लोग ना सिर्फ स्टेट बैंक से रेगुलेटेड हैं, बट हम लोग SECP जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उससे भी रेगुलेटेड हैं, और हमारे ऊपर जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन है वो भी लागू होते हैं. सो इट्स अ फेयरली रेगुलेटेड रेजिम. एंड आई वुड से कि अब पाकिस्तान का जो लीगल लैंडस्केप है वो भी कैच अप कर रहा है विद ऑल दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. एंड ओवर द लास्ट 4 or 5 years at least there has been a significant activity on this front, and now we see more secure ways of sending money and receiving money, Sada Pay being one of them, of course, and so many other wonderful initiatives. So I would say that obviously regulatory जो फ्रेमवर्क होता है उसको इम्प्रूव करने में थोड़ा टाइम लगता है, स्पेशली जब पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे रेड टेप और ब्यूरोक्रेसी जैसे बहुत से मसाइल होते हैं. बट आई स्टिल फील दैट इट्स कमेंडेबल दैट our bureaucracy is actually catching up with this whole technological advancement ecosystem. अच्छा, मेरी तो बाकी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है इन सब चीज़ों की वजह से. मतलब अब वो जो था कि आप एज अ कंपनी चेक ज़्यादा बड़ा नहीं दे सकते, चेक दे सकते हैं, कैश में नहीं दे सकते. अब अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हो तो इट इज़ एज गुड एज चेक, इवन फॉर FBR. तो इस तरह की बहुत सारी आसानियां हैं, लेकिन फिर कुछ दिक्कतें भी हैं कि कई जगहों पे अभी तक सब कुछ ऐप में होने के बावजूद आपने बायोमेट्रिक करवाने जाना ही है, यहाँ से बैठे बैठे नहीं होगा, और इस तरह की चीज़ें. ऑब्वियसली जैसे कि हमने देखा है वर्ल्ड ओवर, ये कोई पाकिस्तान स्पेसिफिक मसला नहीं है, वर्ल्ड ओवर ऑब्वियसली फ्रॉड और इस तरह की मिसक्रिएशन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ लेवल पे चेक्स जरूरी हैं. हम ये नहीं कह सकते कि हम सिस्टम को अभी एटलीस्ट अभी एट दिस पॉइंट हम इसको फुली ऑटोमेट करने के लिए रेडी नहीं है, ऑल्दो ऑब्वियसली उस तरफ हम जा रहे हैं. बट लाइक आई सेड हम एक रेगुलेटेड एंटिटी की तरह ऑपरेट करते हैं तमाम फिनटेक्स, तो कुछ रेगुलेटर की तरफ से भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं. लाइक आई सेड इवन दो द रेगुलेटर इज कॉन्स्टेंटली कैचिंग अप, but still there's some like manual sort of controls in the process which we simply have to comply with. And the objective at the moment is to move as fast as possible towards a system that is fully automated and removes इस तरह की जो hardship जैसे कि आप mention करें. But I feel we'll get there really fast, but it is in the works. आज का इवेंट कैसा लगा, ambience and everything? It is amazing. I don't think these events happen often enough. Especially, I don't think young lawyers have this kind of access to meeting judges, etc. so often. So I think this is amazing. So it's a wonderful initiative. We are asking all the right questions, we are having all the right conversations, and it's really heartening to see that particularly legal space maybe we are introducing technological tools that will help lawyers automate their processes and provide more efficient service to their litigants. I must say, as a lawyer who has practiced in the past, this is really badly needed, because litigants जो हैं पाकिस्तान में they suffer significantly on account of lack of automation in the legal profession. और वो बेचारे मतलब केस किसी सिटी में लगा होता है, वो खुद किसी और शहर में रहते हैं, उनके लिए रोज सुबह पेशी पे आप ट्रैवल करके आना एक्सेट्रा. आई थिंक इफ अगर इन प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर दें, जो कॉमन मैन है, जो लिटिगेंट है, जो उसकी लाइफ सिग्निफिकेंटली इंप्रूव. आप बाहर से पढ़ के आई, जब एक वकील बाहर से पढ़ के आता है और यहाँ पर प्रैक्टिस शुरू करता है, अगर उसने खास तौर पे वहाँ पे भी उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, तो उसके लिए कितना बड़ा शौक होता है? I think बहुत बड़ा शौक होता है. Obviously, I think the legal profession in Pakistan still needs to catch up. बहुत बड़ा फासला है बाकी की दुनिया में और हमारे legal profession में. Although post COVID हमने कुछ improvements देखी हैं, जैसे कि अब hearings online होना शुरू हो गई हैं, but अभी भी बहुत बड़ा room है improvement का. And I think इसीलिए I feel like इस तरह के events और इस तरह की conversations बहुत जरूरी हैं.
like I said, there's no other way to put it. It's a big shock, but it's also उसमें positive बात ये है कि we are bringing lessons from God, and we hope that यहाँ जो stakeholders हैं, they will listen to our ideas and be able to provide platforms through which we can implement them. अच्छा, एक आखिरी सवाल और वो ये कि अमूमन हमने ये सुना है, पता नहीं ये बात ठीक है या नहीं, लेकिन जुबान ज़द आम है कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स डू रियली गुड व्हेन दे गो अब्रॉड एंड प्रैक्टिस देयर और सारा कुछ। तो पाकिस्तानी वकीलों के बारे में भी ये मशहूर है कि जब ये बाहर जाते हैं तो बहुत I don't think you can make a generalized statement about this. Obviously, अगर आप बाहर जाते हैं, आप मेहनत करते हैं, तो आप you will do well. अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, तो you will probably not do well. But I do feel पाकिस्तानी talent जो है वो अब हर profession में, हर university में, हर field में सामने आ रहा है. Like I think 10 years ago, कई सालों बाद हार्वर्ड की क्लास में कोई पाकिस्तानी बच्चा होता था. अब इट्स वेरी हार्डनिंग टू सी कि हर साल तीन चार बच्चे होते हैं. सो इट्स अ मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस, एंड आई सी कि अब बड़ी यूनिवर्सिटीज में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड, येल एटसेट्रा, you see Pakistani students in pretty much every batch. I think that in itself is an indication of the fact that we are making it there. But I feel like if we have more support from regulators, from bodies that are responsible for making these decisions, I think we can do even better. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Manik Pandey, and really appreciate the time given us and your kids. Next panel is Building a Digital Legal Pakistan. Sadia Khan, Commissioner SCP. Mr. Taf Qureshi, Barrister Taf Qureshi, co-founder of Bukla Online, Bukla and Pak Sign. Please come to the stage. Faisal Aftab, co-founder and CEO of Dan Capital. He's a venture capitalist doing phenomenally well for the tech landscape in Pakistan. And Mr. Hassan Kamal Bhattu, advocate, who's going to be a moderator. Thank you. Faisal Aftab, is he there? वेलकम बैक. मैं हूं इस वक्त तारिक बिनोरी साहब के साथ, चेयरमैन HEC. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर. आपको इवेंट कैसा लगा, एम्बियंस कैसा था? It was very good. I think ये जो नई innovative programs लोगों ने present की, technology solutions for various legal, I think that was very, very inspiring. It's good. I hope that some of them will now work on education issues as well. But I was very pleased. सर, आपके ख्याल में इस वक्त हर चीज़ के अंदर और हर चीज़ की तरह लीगल साइड के अंदर टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन कितनी ज़रूरी है? देखें, टेक्नोलॉजी और sort of human action actually needs to go together. So we can't think of technology as a way of bypassing the human. Right? एक तरीका है. What we need to think about is how do we transform our actions, the way we do things, and use technology as a means. इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि काफी हमें रेजिस्टेंस जो है वो ह्यूमन एलिमेंट से आ रहा है. And so we need to transform that first and then use technology as its handmaid. I mean that's a very simple way of putting it. सर, हमारे वही बात के रवैयों में वो जो तब्दीली चाहिए, वो आपको कैसे लगता है आएगी? मतलब हम अभी तक वो कागजों पे अटेस्टेशंस और वो वाले दौर में हैं. तो उसमें देखें दो बड़ी बुनियादी चीजें. एक ये है कि ये जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है इससे लोग फायदा उठा रहे हैं. If you want to throw your weight around, if you are corrupt, you want to make money,
ओपेक सिस्टम से आपको फायदा पहुंचता है। सो इस वक्त जो ना जो एक इंस्टीट्यूशन है वो ऐसे नहीं है कि इट्स जस्ट कि हमें पता नहीं था टेक्नोलॉजी में, इट्स एक्चुअली दैट दे आर बेनिफिटिंग। सो पार्टली यू हैव टू ओवरकम दैट रेजिस्टेंस, बट पार्टली ये भी है कि capacity नहीं। So we have a large institutional network which doesn't know how to use that technology, so they are afraid that they'll be left behind. I mean, I'll give you one example. In HEC, very early in 2002, 2003, they introduced the enterprise management system SAP. For 20 years, nobody used it. We paid a fees every year, and people were not using it. और जब उनसे पूछा गया कि जी हमें वो ट्रेनिंग नहीं है इसमें, अरे भाई ये तो इट्स अ सॉफ्टवेयर, इट्स जस्ट लाइक सेइंग कि जी हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ट्रेनिंग नहीं है, मगर ये एक सिस्टम था। तो जस्ट गेटिंग द टेक्नोलॉजी is really almost secondary. Right? I mean, the real thing is कि आप प्रोसेस को री-इंजीनियर करें, उसमें फिर आप टेक्नोलॉजी यूज करें, right? उसमें थोड़ी सी overcoming resistance, but also capacity building. These are the issues that are. Thank you so much for your time, Thank sir. you. Has actually already disrupted the industrialization, the industrial age altogether. And as we move forward, you're going to see the pace and velocity increase more and more. So coming to law, the way you have to look at this is that anything that is logic-based, whether it's lawyers, accountants, or even OPD doctors, most of these professions will not exist. And when I say that, it's not going to be 20 years. By 2030, I don't think we'll need probably 70 to 80% less lawyers than, compared to what exists today, because AI will be able to put together a motion in literally 30 seconds by using historical case laws. And I'm talking about very baseline motions that you're submitting, that you generally submit, and lawyers will take 40 hours just to kind of read and research. It's already happening on Wall Street. If you look at it today, about 90% of trades are being done by algorithms, and they're much faster than most hedge funds are actually becoming obsolete. And so the same logic is going to play out in that profession as well. So now, obviously, there's precursors to that before we get to that stage, and a lot of that is data-driven. So a lot of the projects that you've seen, including Looking Online and many others that are trying to aggregate case law as well, a lot of this stuff first has to become symmetric, put into databases, and then based on that, you can have algorithms that are written that can utilize that data. So it's a gradual journey. And if we don't take action in Pakistan to actually address this and start to harness this power, you will see foreign law firms actually step in. And as Mr. Muzaim Adamuda identified in Karachi, aptly so, is that effectively will just turn into a rubber stamp. Local lawyers will just kind of be that filing fee component of it. So what he had shared was that a lot of foreign law firms historically would reach out for local cases. Now many of them have such strong AIs in place that they've already written the motion and they literally just send it over with the local law firm to file. So that should kind of give you the initial signs of the disruption, and it happens initially gradually, then it accelerates, and then suddenly it disrupts. So I wouldn't put it past, I wouldn't put this in the back burner. This is not 20 years away. This is literally 5 years and 10 years away. Right. So just to involve Ms. Sadia in the conversation, as we've seen when it comes to technological innovations that are disrupting industries and are bringing in new challenges, new progressions that are unprecedented in the history of that country, a major role is that of the regulator. So as the regulator, what is your view in the SCCP of the challenges and how you're going to go about making a वेलकम बैक। मैं हूं इस वक्त एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सैयद अहमद हसन शाह साहब के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। पहला सवाल, आपको इवेंट कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा इवेंट है और बड़ा मैं समझता हूँ कि आपने सही मौके पे इसको किया है कि जैसे ही हम वकालत, मैं जो बात कर रहा हूँ अपनी वकालत और प्रैक्टिस के हवाले से, हमने देखा है कि हमारी वकालत अभी पोस्ट कोविड और ड्यूरिंग कोविड बड़ी डिस्ट्रप्शन का शिकार है। और वकालत डिस्ट्रप्शन का मतलब ये है कि कॉमन मैन को उसकी सर्विस डिलीवरी इन द जस्टिस सेक्टर नहीं है। और टेक्नोलॉजी जो है उसको एस्पाउस करना, टेक्नोलॉजी को समझना, उसको अप्लाई करना,
یہ بہت اہم ہو گیا. ہم میں سے کچھ وکلا جو خوش قسمت رہے ہیں جنہوں نے ڈے ون سے ہی ٹیکنالوجی انٹرفیس کچھ نہ کچھ رکھا ہے, ان کو تو ٹرانزیشن میں ہوتی ہے آسانی, لیکن بلک آف وکلا جو اس ملک میں ہے ان کی ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی وہ نہیں ہے اس کی ہم آج بات کریں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے, یہ ایک سسٹم ہے, یہ اسٹیٹ لیول پر بھی, یہ وکلا کی باڈیز جو ہیں ریگولیٹری باڈیز کاؤنسلس کے لیول پر بھی, اور ان کی نمائندگی جو کرتی ہیں باڈی ایسوسیشنز ان کی لیول پر بھی, ان کو یہ اس بات کا ادراک ہونا لازم ہے کہ ٹیکنالوجی سے ان کی ایفیشنسی, اپنی پرسنل ٹائم مینجمنٹ بھی بہتر ہوگی اور ایونچولی ان کے کلائنٹ کی سروس. اب میں آپ کو اپنے پروفیشن کے حوالے سے دو پہلو بتا رہا ہوں. ٹیکنالوجی کے دو بڑے واضح فائدے ہیں وکلا کو. ایک ہے ایکسیس ٹو دا ریسورس, قانون کیا ہے, سرکار کی نوٹیفیکیشن کیا ہے, ججوں کے فیصلے کیا ہیں, عدالتوں کے فیصلے کیا ہیں, یہ ہے ریسورس. اور دوسرا ہے اس کا انٹرفیس ود دا جوڈیشل سیٹ اپ جو ہمارا ہائرارکی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم دونوں انٹرفیسز میں ٹیکنالوجی میں بہت ڈیفیکلٹ ہیں. پاکستان, مجھے بڑی خوش قسمتی رہی میری کہ میں شروع میں جب کہ پاکستان لا سائٹ, میں نے آج ان کا نام نہیں سنا یہاں پر, مگر یہ وہ پہلا میں سمجھتا ہوں ایفرٹ ہے جس نے کیس لا, جو پاکستان میں پرنٹڈ کیس لا تھا, اس کو آن لائن کنورٹ کیا, اور یہ ان کی سروس ہے جس کو لوگوں نے پھر بلڈ آن کیا آگے جا کے. سو بٹ جدھر چیز لیکنگ رہی ہے علی, وہ یہ رہی ہے کہ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں امریکہ میں یا انگلینڈ میں, اور ہم لوگوں کو, جن لوگوں کو وکلا کو موقع ملا ہے کہ باہر بھی پڑھ سکیں, کام کر سکیں, وہاں پر جو سرچ انجنز ہیں جو کیس لا سرچ کرتے ہیں وہ کافی انٹیلیجنٹ ہے. ہم نے ڈیٹا کو آن لائن تو کر دیا ہے, لیکن ابھی ہم وہ انٹیلیجنس نہیں لے کر آ سکے اپنے سرچ انجنز میں جو اس کوالٹی کے ہوں جو باہر کچھ ممالک میں. تو یہ جو یہاں پر مجھے بڑی خوشی ہوئی آج دیکھ کر کہ ہمارے ینگ وکلا خاص طور پر ٹیکنالوجی کے لوگوں سے بڑا اچھا انٹرفیس کر رہے ہیں, اور ہم خود کوشش کرتے رہتے ہیں اپنے لیول پر. میں نے سال ڈیڑھ سال پہلے ایک خود ایپ ایک ڈیولپ کی تھی اپنی بار کے لیے, جس کو میں آئی بار کہتا ہوں, تو وہ بھی ہم لانچ کرنے لگے ہیں. وہ وکیلوں کی انٹرنل ممبرز اونلی بار ہے, وہ پبلک کے لیے نہیں ہے, وہ ہے اٹ از ٹو بلڈ کیپیسٹی ود ان دی لائرز. سو یہ ریکگنیشن ہے. سو آئی سی دس از اے گریٹ ایفرٹ, اس کو بارہا ہونا چاہیے, لیکن فوکس لوز نہیں کرنا چاہیے. فوکس ہے ٹیکنالوجی سمجھ کے اڈاپٹ کر کے اس کو اپلائی کرنا. ایسے سائلین کے جہاں بات ہوتی ہے وہاں تو سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہر ہے ذریعہ معاش کا مسئلہ ہے, روزگار کا مسئلہ ہے, سب کے پاس اسمارٹ فون ہے نہیں, کچھ شیئر کرتے ہیں, بہت سارے پرابلمز ہیں. جب وکلا کی بات آتی ہے, جب ہم بات کرتے ہیں تو بڑا آرمز وائڈ اوپن وہ ہوتا ہے کہ جی ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن جب ہم نمبرز دیکھتے ہیں تو وہ کوئی بہت ایکسپونینشل گروتھ اس میں شاید نہیں نظر آتی. دیکھیں, میں آپ کو اپنا پرسنل اگزامپل اگر دوں, میرے دفتر میں یہ سہولت ہے کہ ایک سے زائد کمپیوٹر موجود ہے, یہ سہولت ہے کہ آن لائن سروسز ہیں, سبسکرپشنز ہیں, سارا کچھ ہے, مگر یہ ہر وکیل کو نہیں ہے. نمبر ون. دوسری چیز, یہ ریسورسز جوڈیشل سسٹم میں جج صاحبان تک نہیں. جب تک دونوں کو یکساں سہولیات مہیا نہیں ہوں گی, ان کا مس میچ آف پرفارمنس رہے گا. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیسے میری جو ایکسیس ٹو کیس لا ہے یا ابیلٹی ٹو سرچ لا ہے وہ لاپ سائڈڈ تو نہیں ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو سوال جواب ہو رہا تھا اس میں شکایت کی کہ بھی ہم کیس کو ہی آرگو کرتے ہیں اور فیصلہ کچھ اور ہے. وہ کیوں ہے؟ بیکاز دیر از اے مس میچ. سو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مل کے ایک ایون لیول پر دونوں سائڈز کو, بیکاز ڈیلیوری آف جسٹس ون سائڈڈ نہیں ہو سکتی جب تک ججز اور وکلا دونوں یکساں لیول پہ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کریں گے, بات آگے نہیں بڑھے. اچھا سر, آخری سوال, عموماً
देखने में ये आया है कि जहां पर सरकार कुछ भी रेगुलेट करने की कोशिश करती है तो वो रिग्रेस करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर क्या लगता है कि सरकार विल लेट इट बी, लेट द प्राइवेट सेक्टर टेक इट्स कोर्स, या लगता है कि शायद वो बीच में आके कुछ देखिए, सरकार के अपने इश्यूज होते हैं। सरकार ने तो रेगुलेट कुछ करना ही है, कुछ चीजें हैं जो रेगुलेट नहीं होनी चाहिए। हम इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते, हम सिर्फ इस कोर प्रिंसिपल पर या इस बेसिक वैल्यू पर चलते हैं कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये टू असिस्ट द डिलीवरी ऑफ सर्विस इन द जस्टिस सेक्टर। अब मैंने यहाँ पे बहुत आज अच्छी गुफ्तगू हुई, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हम क्या बहुत कोई लॉफ्टी ख्यालात भी रखते हैं। एकदम तो चांद पे नहीं चले जाते, ग्रेजुअली चांद पे जाने के लिए रॉकेट बनाना पड़ता है। पहले ख्वाहिश तो सबकी है, लेकिन रॉकेट बनाने का अपना एक तरीका कार है, तो पहले उसको सीखना पड़ता है। इसी तरह अगर हम जस्टिस सिस्टम में, जिसने आपने पहले भी कहा, लिटिगेशन को फायदा तब होगा, लिटिगेंट को फायदा तब होगा जब उसकी केस की इंस्टीट्यूशन लेस कम्बरसम होगी, प्रॉम्प्ट होगी। उसको फायदा तब होगा कि उसकी केस की लिस्टिंग के बाद जो डिफेंडेंट है उसका जवाब जो है वो प्रॉम्प्ट आएगा और केस फैसले की डायरेक्शन की तरफ जाएगा। हमारे सिस्टम में टेक्नोलॉजी का इस लिहाज से यूज नहीं है। आज भी मैं इलेक्ट्रॉनिकली केस नहीं फाइल कर पाता पाकिस्तान में। ये मुमकिन होना चाहिए कि मैं अपने दफ्तर से बैठे हुए रजिस्ट्री में केस फाइल कर दूं और इलेक्ट्रॉनिकली डिफेंडेंट्स को वो मिल जाए, इसी तरह वो अपना जवाब इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर दे और मुझे मिल जाए। मगर ये आप और मैं इस्लामाबाद में बैठ के तो लाहौर में, कराची में बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि कड़क में क्या होगा, जैकबाबाद में क्या होगा। सो हमें एक ड्रॉ करना पड़ेगा मीडियम और देख के कि कहाँ सहूलियात कहाँ तक है, हमें उस लेवल से लेके चलना पड़ेगा ताकि ये पूरे पाकिस्तान में इसका यकसा असर पड़े। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है, या मैं ये नहीं कह रहा कि हम इस्लामाबाद को पीछे भेज दें, नो, यहाँ पर भी करें, लेकिन ये जहन में रखें कि हमने सबको साथ लेके चलना है, फिर ही आवाम का फायदा है। तो यही एक्सेस टू जस्टिस है। मेरे ख्याल में सुशा साहब ने आगे जो ये ऑब्जर्वेशन दी, ये बहुत ज़बरदस्त बात उन्होंने दी कि एक्सेस का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि मुझे रसाई अदालत करती है, इसका मतलब ये है कि मेरा फैसला, हतमी फैसला जज से चलेगा। तो टेक्नोलॉजी के एड यूज़ होने चाहिए, बट इसमें कॉशियस ये भी रहना चाहिए कि टेक्नोलॉजी है जो वो डिसरप्टिव भी हो सकती है। तो हमारे जो प्रोसेसेस हैं, हमारे वो उनमें प्रॉपर तरीके से जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी डिजिटल प्रोटोकॉल्स हैं, वो उसको मरूज़े खातिर रख के वो प्रोसेस लाई जाए। और इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम, एक है डिजिटाइजेशन, कि मेरे पास जो चीज़ लिखी हुई है, मैं तहरीरन है, वो मैं उसको कंप्यूटर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूँ। एक है डिजिटलाइजेशन, ये फ़र्क है। हमारे यहाँ मुझे ये महसूस होता है कि लोगों को इसकी तमीज़ नहीं है। एक जो है वो कन्वर्जन प्रोसेस है और एक सिर्फ प्रोसेस है, तो हमें उन प्रोसेस पे लेके जाना है। और आखिरी बात, मैंने लंबी बात कर दी, जो मैं आपको मुझे भी ज़्यादा बोलने का शौक है। सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में एस्पाउस करने का प्रॉब्लम मैं समझता हूँ ये है हमारा बाइलिंगुअल स्ट्रक्चर। जब मैं वकालत में या अदालत में कोई केस, अभी मैं आपसे बात करता हूँ तो मैंने कितनी बाइलिंगुअल गुफ्तगू की, ये हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी है कि वो बाइलिंगुअल इंटरफेस को अडॉप्ट कर सके। तो अगर हम हकीकी मानो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जस्टिस सेक्टर में टेक्नोलॉजी इंटरफेस आए, तो हमें ये बाइलिंगुअल सेंसिटिविटी का फीचर डेवलप करना पड़ेगा। कोर्ट की ट्रांसक्रिप्ट्स दोनों, जब अक्सर यहाँ पे भी लोग बोलते हैं, ये नेचुरल है, हम इसी तरह कोशिश करें तो हम एक ज़बान में बोल पाते हैं, लेकिन रोजमर्रा में हम उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी मिक्स करते रहते हैं। तो क्या हमारे ये जो यंग लोग यहाँ बैठे हैं वो कॉन्शियस है कि उन्होंने ये बाइलिंगुअल इंटरफेस को भी देखना है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि जी सारी चीजें उर्दू में कर दो, सारे फैसले उर्दू में कर दो, और भाई उर्दू में प्रोग्राम कौन बनाएगा? तो टेक्नोलॉजी कैसे आएगी? टेक्नोलॉजी तो सारी
अंग्रेजी में बनती जा रही। तो ये डिलेमाज हैं और मैं समझता हूँ कि इस तरह की गैदरिंग्स जो है उससे ये इश्यूज आइडेंटिफाई होंगे, हाईलाइट होंगे और इंशाल्लाह उसमें आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन द experiment that is called Pakistan. So I hope. सर एक मेरा आपकी बात से और भी सवाल था और वो ये है कि वो जाहिर है सबको साथ लेके कोशिश तो यही होनी चाहिए कि चला जाए, लेकिन वही वाली बात कि सारे पाकिस्तान को तो स्कूल्स भी वैसे मुयसर नहीं है जैसे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में अस्पताल भी नहीं है। जब हमने इतना कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया है, या कम से कम हमने उन जिनके पास पैसे हैं उनको इंजॉय करने दे रहे हैं हम, तो ठीक है फिर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से ही फाइल करने की इजाजत दे दें केस, कम से कम वो उनका ऑप्शन देते हैं। मैं इसलिए नहीं कहूँगा आप एक्सक्लूड किसी को नहीं कर सकते। स्टेट फैसिलिटी एक साथ सबको प्रोवाइड, आप ये नहीं कह सकते कि जी अमीर का बच्चा पढ़ने के लिए करा, ये नहीं। आप फैसिलिटीज इंट्रोड्यूस करें, ऑप्शन दें। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। यूके में कई ऐसे केस हैं जिसमें ऑन पेपर फैसला हो जाता है, आपको पर्सनल अपीयरेंस नहीं करने की जरूरत, क्योंकि जब आप अपनी शिकायत लिखते हैं या अपना केस लिखते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि तुमने ऑन डॉक्यूमेंट्स फैसला कराना है या तुमने इन पर्सन कराना है। तो ये हम भी कर सकते हैं ऑप्शन। जो शख्स चाहता है कि जी नहीं मेरा कागज देख के फैसला कर दो, फिर उसकी जिम्मेदारी है कि वो कागज सही लगाए। अगर कागज सही नहीं हो तो केस। इस तरह की चीजें हैं जो हम लोगों के लिए, लिटिगेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और ये चीजें ऑनलाइन भी हो सकती हैं। और इसमें आखिरी में आपको बड़ी प्रैक्टिकल बात बता दूं, बड़ा प्रॉब्लम वकील को फेस हुआ। वकील बनने के लिए आपको एक आध टेस्ट देना पड़ता है, वो टेस्ट कंप्यूटर में देना पड़ता है। अब जो फार ऑफ एरियाज हैं बलूचिस्तान में, सिंध में, केपी में, वहां पर लोगों की एक तो एक्सेस नहीं है। जब उनकी एक्सेस कंप्यूटर तक आ जाती है, उनकी फेमिलियरिटी नहीं है। कितने बच्चे हैं हमारे स्कूलों में जो इंग्लिश कीबोर्ड से वाकिफियत रखते हैं, बल्कि मैं दावे से आपको कहता हूं कि हमारा पढ़ा लिखा वकील उर्दू कीबोर्ड से वाकिफ नहीं है, तो फिर हम उससे क्या गिला करें जो इंग्लिश कीबोर्ड से वाकिफ। सो ये रियलिटीज है। अगर आप टेक्नोलॉजी को चाहते हैं कि एम्ब्रेस किया जाए, उसको यूज किया जाए, तो मुझे आपको इक्विप होना है कि मुझे इंग्लिश कीबोर्ड भी समझ आए, चाहे मैं फोन पे कर रहा हूँ, चाहे मैं कंप्यूटर पे कर रहा हूँ, और मुझे उर्दू कीबोर्ड भी समझ आए। जब तक मैं उर्दू और अंग्रेजी कीबोर्ड पे यकसा कंफर्ट लेवल नहीं फील करूंगा, मेरे ख्याल में मेरी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन या इंटरफेस टेक्नोलॉजी के साथ मैक्सिममली फ्रूटफुल नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर गिविंग टाइम। कहीं मत जाइएगा, अभी मिलता हूँ एक और गेस्ट के साथ। थैंक यू। I remember reading something that really hit home with me, which is that in technology there's no innovation. Okay, technology already exists. It has, I mean, the legal tech space is using technology that in theory was invented in the 1960s or 70s. Okay, so we're only just deploying it in 2020. Okay, the real innovation is the business model, the monetization of data, the monetization of your service. So if people want to be innovative in Pakistan, they need to think, how will this be sustainable? And one of the key reasons why I'm in legal tech is because it's called B2B SaaS, B2B software as a service. We are inherently profitable. We provide a service that is less the cost of delivery and higher at the price point. Whereas a lot of the B2C elements that you see in investor burgers is subsidized. So you need money to keep the business going. And I perfectly understand that why. But I'm hoping for the day that we enter a B2B space for SaaS purposes, because that's globally where the largest amount of investment comes. But for that, we have a problem. Pakistan is not seen as a country that can compete globally for B2B SaaS. Even India is just entering this space. But do I believe there's lack of talent here? Absolutely not. There's tons of talent. And the perfect example of this are the 400,000 freelancers who make far more money today than they do in a job. So could they all become B2B SaaS players? Absolutely. For that, we need to attract the investor audience to us and create that marriage between what the investors want to see and what the locals are capable of delivering.
Yes, sir. Would you like to comment on how Pakistan can compete on that international level, especially in the context of rising developments, and perhaps how the particular developments in law, with, as we mentioned earlier, with, as we've seen in several international law firms, entire areas of work which were previously done by associates are now solely done by machine learning algorithms. And it's come to the point where several law firms have policies wherein a document can't be seen by the eyes of a client until it goes through an artificial intelligence checker. Now, do you think that obviously Pakistan is nowhere near, we've spoken at length already, reaching that level wherein we create a conducive environment? But how can we move forward to convince the policymakers and create a conducive environment wherein we can compete on an international level to bring Pakistan to that level? Yeah, so I feel like the market is so big in Pakistan that we don't really need to compete at an international level. We just look inwards. I mean, I think. वेलकम बैक। इस वक्त मैं हूँ यासिर लतीफ़ हमदानी के साथ, वकील भी हैं, ऑथर भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम एक तो आज के इवेंट की बात कर रहे हैं कि कैसा है, दूसरा मैं गिला कर रहा हूँ उन तमाम लोगों के साथ जो इस्लामाबाद में रहते हैं अच्छे मौसम में। बिजली का बिल भी उनका कम आता है, नहाते भी ठंडे पानी से हैं, तो आप लोगों पे टैक्स ज़्यादा लगना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपको एम्बियंस कैसा लगा, इवेंट कैसा लगा? आई थिंक इसका एम्बियंस जो है वो बहुत ही अच्छा है। आई थिंक कॉन्फ्रेंसेस, लीगल कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान में जो होती हैं वो इस तरह की नहीं होती। ये जो इंटरनेशनल बार एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस होती रही है दुनिया में मुख्तलिफ जगह पे, ये उस तरह का एम्बियंस आ रहा है। आई थिंक इट्स वेरी पॉजिटिव थिंग, वेरी टेक फोकस्ड है, टेक्नोलॉजी फोकस्ड है, दैट्स आल्सो वेरी पॉजिटिव। अच्छा, हमें जब हम अमूमन सोचते हैं अपनी बुकला बरादरी के बारे में तो थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं, और थोड़ा सा हमें ये भी लगता है कि शायद वो उस तरह से टैक्स सेवी नहीं है। तो अब इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब पूरी बुकला बरादरी को जो है वो मतलब इंगेज करने में कितना टाइम लग सकता है? देखिए, आई थिंक पहली बात तो ये है कि रेजिस्टेंस आएगी विद इन द बुकला बरादरी। वो रेजिस्टेंस अगर आप कर लें तो अल्टीमेटली हर वकील ने इन ऑर्डर टू सर्वाइव उसको टेक्नोलॉजी के साथ तो चलना पड़ेगा। तो कुछ अर्सा तो लगेगा, मगर अल्टीमेटली यही है जो जिसे कहते हैं मार्च ऑफ ह्यूमैनिटी, वो टेक्नोलॉजी की तरफ है, तो उससे वापस कोई नहीं चल सकता उल्टे पैरों। अच्छा, जो साइलिन की अगर बात की जाए तो क्या इवेंचुअली इस तरह की इनिशिएटिव से उन तक भी फायदा पहुंचेगा, या सिर्फ ये वकला की हद तक महदूद रहेगा सब कुछ, वकला या अदलिया? देखिए, अगर हम डिले को ख़त्म कर सकें, जैसे कि जस्टिस साहब ने भी कहा था, तो उससे साइलिन का फ़ायदा होगा। और वो जितनी टेक्नोलॉजिकल होगी, जितनी मैकेनाइजेशन होगी, उससे आप देखेंगे कि शायद हम डिले को ख़त्म करने में कामयाब हैं। और ख़ासकर ई फाइलिंग और इस तरह की चीज़ें अगर होना शुरू हो जाएँ और प्रोसेसेस कट आउट होना शुरू कर दें, और जैसे आपने देखा मुख्तलिफ वेबसाइट्स और मुख्तलिफ ऐप्स जो बन रही हैं, खासकर वो वर्ल्ड एग्रीमेंट्स वाली मैंने देखी थी, तो इन सारी चीज़ों से साइलिन का ही फायदा। अल्टीमेटली इट इज़ द प्लेंटिफ और द जो है आपका क्लाइंट, वो क्लाइंट ही सबसे मेन स्टेक होल्डर है इस सारी सिचुएशन। आखिरी चीज ये कि हम जो हैं वो मेरे ख्याल में 2011-12 से तो दोस्त हैं, तो तस्वीरों के अलावा पहली दफा मैंने फिजिकली देखा है आपने काला सूट पहना हुआ है वकीलों वाला। तो ये आज कैसे? सुबह काम करते हैं कोर्ट्स में तो ऑब्वियसली। अच्छा, वरना हम जब अमूमन मिलते हैं तो आप बड़े रंग बिरंगे कपड़ों में होते हैं। हाँ, नहीं, मैं कोर्ट्स ऑब्वियसली जाना होता है, आज कोर्ट में थे सारा दिन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। But the hindrances often fall upon their ears. We don't find audiences where we can communicate to the policy makers, the people in charge who are creating those decisions and are in the position to create a conducive environment or the lack thereof for that digital legal Pakistan to flourish. So if there's any one thing you could say to those policy makers, any single decision, any mindset, any change in paradigms that could allow for that conducive environment to be made, what would it be? Please, anyone in the panel, please feel free to jump in. So I think having a proactive approach and being receptive to change, and also we want to underestimate the power of synergy. I think there's power in collaborating and working together, and only when all stakeholders unite can we achieve outcomes that are truly sustainable. And I think that's why
important to have these open discussions and make sure that we understand each other's perspective. And with that, I mean, just a quick comment on how we could open it up to even greater number of incorporations. The role of the regulator, look, ease of doing business has two sides. One is, of course, we want the market to develop. We want to reduce the barriers to entry. We want to reduce the compliance costs. But then, at the same time, we have to protect the rights of the stakeholders, the shareholders, the small policy holders. And just to give an example, the number of tech-enabled services, number of companies is mushrooming. But at the same time, we hear of cases where there's illegal deposit taking happening from various platforms. So we do need to check on these malpractices as well, where it's not legally allowed. So it's a fine balance that the regulator has to maintain between promoting the industry and making sure that malpractices don't flourish, which are to the detriment of the small investors and shareholders. You would like to add anything? So the question is, how do we move forward? What do we advise do we give policymakers? Exactly. You've seen the piece of advice to the policymakers on that. I think I go back to the original position on mindset. Now, so I'm also a British Pakistani, so I could open this startup in London, or if I'm very lucky, I could open it in Silicon Valley because I raised money there. What is the key difference? The key difference is I'm not being prevented from doing it in the first place. I'm allowed to do whatever I want. But if I do breach laws, breach regulations, I will see enforcement hit me very hard. So I am regulated from that perspective. But the sense of getting permission, getting consent, getting access, that actually isn't in the environment. The environment is already open. It's just for me to take advantage of. In my capacity as a lawyer, I've had this conversation with the SEC in the state bank, etc., is that we need to shift our mindset away from regulating, which is opening the door, to just enforcing. Now, it is a concern. I completely agree. There are cases of fraud, there are cases of money laundering, illegal activity happens. More often than not in the informal sector. So the sector we're not even actually looking at properly. But if we are going to look at the formal sector, I'd rather have 2 million firms out in the market playing, and we capture the 2,000 that are bad. Rather than having वेलकम बैक। मैं हूं इस वक्त बैरिस्टर बाबर इमरान के साथ, एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहला सवाल आपको आज के ऐप लॉन्च का environment कैसा लगा, ambience कैसा लगा? It's lovely. For the first time, I've been to many conferences. I've done so many conferences myself, but this is the first time where it feels that Pakistan is now going towards the developed side. It's becoming more and more developed, and it's so nice to see that this whole digitization is now slowly it's picking pace, and I think very soon I see everything from being manual to being digitized. बिल्कुल सर। और वो आपको ये तो नहीं लगता कि हम बहुत लेट हो गए, हम अभी भी कैच अप कर सकते हैं? I think अगर हमारी आप देखें there are different countries in the world. Some are developed, then there is West, then there is East. Now we are somewhere in the middle, in between. So we had to catch up, but now I think we are rushing towards it, and very soon we'll catch up. अच्छा सर, अमूमन ये भी देखा जाता है कि जब भी कोई इनिशिएटिव लिया जाता है, तो इसकी बात नहीं कर रहा, कोई भी हो, तो उसमें से फिर उसके कोई फिलैंथ्रोपिक एलिमेंट्स ढूंढे जाते हैं, उसके अंदर कोई नेकी की चीज ढूंढी जाती है, क्योंकि प्योरली एज अ बिजनेस वेंचर पीपल डोंट अप्रिशिएट थिंग्स। तो इस रवैये को भी मेरे ख्याल में तब्दील करने की जरूरत है कि मतलब अ गुड बिजनेस हैज मेनी पॉजिटिव्स टू इट। वो इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, इट क्रिएट्स अ चेंज इन सोसाइटी, इट क्रिएट्स मतलब इट डज सो मेनी थिंग्स। तो I was actually listening to one of the panelists and I was very impressed. He said something. उन्होंने कहा कि जी हम आया ग्लोबली हमें ज़रूरत है, the funds coming
from the outside. I think we are a country of the registered people, or the census result is 22 crore people. 22 crore people on this, if you compare it to the US, it's a very small country and it's the 7th populous country in the world. तो आपकी यहाँ पर इतनी डिमांड है कि देयर इज नो वे कि आपका बिजनेस जो है वो फेल होगा. नंबर 1. नंबर 2, obviously everybody thinks about how to earn money, but that would bring some word. The demand is there. They are actually interconnected. जैसे आपको मैं इसकी एक ऐसी मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान में आप कोई भी बिजनेस करें, जैसे बहुत छोटी सी मिसाल है, आप नान भाई की दुकान खोल लें, उसने चलना ही चलना है क्योंकि उसकी डिमांड होगी. सो सेम गोज फॉर दिस. हाँ, आई वुड डेफिनेटली से कि जो बिजनेसमैन है वो ऑब्वियसली प्रॉफिट की तरफ तो सोचेंगे, बट दे शुड आल्सो थिंक अबाउट द पॉजिटिव गुड दैट विल बी कमिंग फ्रॉम ऑल देयर बिजनेसेस. आपके ख्याल में टेक, हमारे जो लीगल साइड है, उसका अब गुजारा है बगैर टेक्नोलॉजी के? I'm gonna appear on Wednesday morning in front of the Honorable Supreme Court of Pakistan through video link, sitting in Peshawar. And we've got many cases in Supreme Court. For example, we are sitting in Peshawar, Supreme Court is in Islamabad. And many of our officers come here for the cases, but now we don't. And so that is something which is saving everybody's time. And it's the same thing that we do there or either here. I think abhi Sheikh Shaheen Saab aaye huए the Islamabad Bar Association के president. So I think very soon we are going towards a point where the lawyer will be sitting in his chambers and the judge will be sitting in the court or in his chambers, and justice will be served. Amen to that. Thank you so much. Thank you very much, Ji. Thank you for that. Brilliant tech lawyer, Pakistan. Thank you. Yeah, I think everyone can hear me. Hi to everyone. This is Boris speaking. Already introduced the panel, so I'll also just jump right in. I think the point of the panel today is to discuss what technology-related policy can be made by regulators in Pakistan or institutions in Pakistan to enable the regulators to deliver the service better and to manage their own internal processes better, to increase the public trust in regulation and regulators generally. So starting off with Amir, STCA has publicly taken this very important initiative, and I think this is the first real tech initiative in Pakistan, the One Window operation, which is to facilitate foreign investment in Pakistan. Can you just share more how you're leveraging technology? वेलकम बैक. मेरे साथ हैं इस वक्त सादिया खान, कमिश्नर हैं SECP. थैंक यू सो मच आपके टाइम का. पहला सवाल, आपको एम्बियंस एनवायरनमेंट कैसा लगा आज की ऐप लॉन्च का? It's excellent. I'm really impressed with the entire organization. This is the first time I'm attending one of these conferences and getting an insight into the issues facing the legal community. So it's a real eye-opener, and I'm very glad that I got the opportunity to be here. आप इस्लामाबाद ही होती हैं? जी, it's a 3-year term with the commission, and I'm based in Islamabad for that period. अच्छा, मैंने देखा यहाँ पे लोग ज़्यादा खुश मिजाज हैं. उसकी वजह ये है कि लाहौर वाली गर्मी नहीं है ना, पानी भी ठंडा आ रहा है. मैं तो कराची से हूँ, मगर अब वही मसले तो वही हैं, पानी, बिजली और रेस्ट, और मौसम भी आजकल तो नहीं, वैसे मौसम भी यहाँ बेहतर रहता है, और the view of the mountains, it's always nice to be here. अच्छा, ये आपके ख्याल में, मतलब जाहिर है हमारे वो जो मसाइल उस किस्म के होते हैं कि अभी भी यहाँ पर वो अटेस्टेशन पर्चियों पे और स्टैंपों के साथ और वो सारे मामला, तो कितना टाइम लगेगा? मतलब एक तो
वो चैलेंज है ना कि सबके पास स्मार्टफोन नहीं है, सबके पास ब्रॉडबैंड नहीं है, दैट्स अनदर थिंग। रवैयों में भी तब्दीली आने में कितना टाइम लग सकता है? लेकिन काफ़ी चीज़ें डिजिटलाइज हो चुकी हैं, जो आपके ना स्टैंप लगाना, ऑथेंटिकेट करना, वो सब कुछ हमने ख़त्म कर दिया है। इनकॉर्पोरेट करने के लिए भी हैव ऑनलाइन सबमिशंस, वी गिव अ डिजिटल सर्टिफिकेट, वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन हो जाती है। तो जो थप्पे लगाते हैं दफ्तर में, वो हमने सब बंद कर दिया है। And it's all part because of this new mindset that we need to automate, we need to embrace change and make sure that whatever we do is with the objective of enhancing user experience and enhancing internal efficiency and in terms of promoting transparency and accountability. तो अब हमें सबको ये पता है कि चाहे लीगल साइड हो, चाहे कोई और फील्ड हो, टेक्नोलॉजी के बगैर अब गुजारा नहीं है। नहीं, बिल्कुल जी, technology is there to stay and I think those who resist it will become irrelevant, so we all have to adopt it. अच्छा, मैं तो खैर सिर्फ वकील नहीं हूँ, आप वकील हैं? नहीं जी, मैं लॉयर नहीं था, that's what I'm saying, this is the first time I'm attending a legal हाँ, conference. मेरी तीसरी है कॉन्फ्रेंस। मैं अच्छा। बहुत मुतासिर भी होता हूँ और मरूब भी हो जाता हूँ। ये वकला बड़े खुश लिबास पाए गए हैं, या फिर ये मेरे ख्याल में अपने सारे शौक पूरा करते हैं, क्योंकि सिर्फ काला पहन के। तो तभी आपने नोटिस किया होगा, मैं भी काला पहन के आई हूँ। मैंने सोचा कि I'll be in a group of lawyers, might as well pretend to be one. Thank you so much for your Thank you, time. Ali. To make their companies grow from whether they were $10 million to $1 billion. We don't even have $500 million revenue company in Pakistan. So the incentives, I think, will, as we go around, will explain what they are, from tax to forex, because the state bank, it's hard to move money between their companies, to duties. Pakistan cannot do quantum computing because the religious duty on supercomputing, no one knows how to do quantum computing because you can't bring in a supercomputer cost, it's just too expensive. So many incentives that the state has now provided to companies. Thank you very much for that extensive response. So, Dr. Daud, I would jump to you. It's one thing for governments to offer incentives, and it's another thing for people to be able to access those incentives. Typically, applying for licenses, applying for incentives requires going through a stream of paperwork and red tape in order to access that. Having been practicing as a lawyer for considerable amount of time in Pakistan, do you know or have you seen specific examples from regulators where they have either leveraged technology or taken specific policy initiatives to make it easier for people to comply? Thank you very much. So I will speak from the perspective of a practitioner. I had been practicing in New York at an international law firm in Pakistan, and so I've experienced a lot of the work I've done here has been on the regulatory side with the Higher Education Commission. The chairman was here recently. I worked closely with him. The Public-Private Partnership Authority and the Planning Commission, and also part of an initiative in line with the vision of the Honorable Chief Justice of the Islamabad High Court to come up with actionable policy recommendations to come up with efficient sort of course, initially looking into the Islamabad territory. The Planning Commission is kind of leading that mission. So to answer your question, I've seen some of that. I've seen some of that at the Higher Education Commission. Some discussion was held earlier. Certainly the PPPA, which had the advantage of being a slightly newer body, without sort of a lot of legacy issues, under effective leadership was able to undergo a sort of transformational program in the last few years, and through legislative changes, regulatory changes, as well as kind of organizational change within, was able to do some of that. And so the regulated entities over there are slightly kind of more sophisticated entities, perhaps investors and so on who would be coming to get project approvals. So I've seen some of that, but I'll make a general observation, which is that I think that we are incredibly slow. And Ahmed Saab has actually mentioned that as well. We're behind, but you know the quantum of how much we need to change is quite large. And with that, I think I'd like to say one thing with respect to the discussion I've heard today.
I think some of the initiatives that were discussed earlier are laudable. They're extraordinary initiatives, and we're seeing a lot of kind of change happening with startups tech. But there's also, I think, a need, and sometimes there's an assumption, perhaps, folks give up on the government or think that change will first come from society and then will lead on from technology to society, and then the government will kind of a bottom-up kind of thing. But I think that will be too slow. And in Pakistan, I think we need rapid transformation from above. And there's nothing wrong with that. The East Asian countries did that. There's kind of public sector-led growth. A lot of the sort of examples there. And certainly there are very important key entities, regulatory entities and other institutions, including courts in the countries, where I think the countervailing set of interests are sometimes too disproportionate. On the one hand, like Islamabad, the district courts have about 50,000 pending cases. On the other hand, if you want to reform, there are certain kind of interests on the other side which maybe are important, but resistance to change and so on. But I think that it is time to go in. वेलकम बैक। मेरे साथ हैं इस वक्त मॉडल, वकील, एक्टिविस्ट और सबसे बढ़ के वकील ऑनलाइन के पीछे सबसे बड़ी फोर्स रमला अल्ताफ। रमला, इतनी सारी चीजें कैसी कर रही हो तुम? Honestly, I think modeling is part-time, so I wouldn't like you to start from that. आप पहले बोले lawyer because I practice, but also वकील और I भी manage करते हैं. But पता नहीं यार, बस हो जाता है. There are things that I want to do, and आप मुझे बताएं आप कैसे कर लेते हैं all of this? मैं तो नहीं करता। अच्छा, so why don't I interview you and मुझे बताएं कि what do you think about the conference? कैसे आपको कैसा लग रहा है conducting all these interviews, and you've been a part of T4JF for the last 3 months. तो क्या ख्याल है? कैसा experience रहा? आप तो काफी stakeholders को मिल रहे हैं, काफी lawyers को मिल रहे हैं, partners of these law firms को मिल रहे हैं. तो आपका क्या experience रहा? वो जब आप ज्यादा किसी से मिल रहे होते हो ना, तो अंदाजा नहीं होता, few months नहीं, साल से ऊपर हो गया। No, I meant for T4JF. वकील ऑनलाइन तो आप मतलब आप तो वकील, you're the face of वकील ऑनलाइन। अच्छा, दूसरा ये कि मुझे बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आ रहा है, बहुत सीखने को मिल रहा है। आज भी बहुत मजा आया, सब कुछ हुआ। थोड़ा सा ना मैं कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता हूँ इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस पे आके। वकील सारे इतने अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, मैं बार बार अपने आप को देखता हूँ कि मैं गलत जगह पे आ गया हूँ। आपको अच्छे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, you're so good looking as it is। मतलब आपका तो वो रॉक स्टार स्टाइल है ना। अभी आपने wear your shades, अभी आप सुबह आए थे shades पहन के एंटर किया हॉल आपने, तो आपका तो स्टाइल जो है वो आपको देख के लोग कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। अच्छा, अब चलो मेरी तारीफें होगी, अब मैं तुम्हारी करता हूँ दोबारा से। आज तुमने जो प्रेजेंटेशन दी, बहुत मुश्किल काम है अकेले खड़े होके बोलना। नहीं, I've been doing it for a while now, especially if you get trained as a lawyer, तो आप advocacy में सीख जाते हो how to address a crowd, how to speak on a platform, on a stage. So I think it's just, और बचपन से करती आ रही हूँ, so it's been I'm good with that. ये जो one-on-one interviews होते हैं ना, यहाँ पे I get nervous। मैं सिर्फ अगर पंजाबी में आपको याद नहीं बोलूँ, है when we were doing community gupshup, so it would be so hard for me to gather myself for a session with you, but मैं सिर्फ अगर पंजाबी में हो ना कोई भी चीज, तो मैं उसमें फंबल नहीं करता। बाकी मुझे किसी भी चीज में बोलना पंजाबी में कंडक्ट करें इंटरव्यू, आपको किसने रोका? हम किसी ने रोका। वो बल्कि ये बड़ा अच्छा शो हो सकता है अगर हम पंजाबी में करें। करें जी, हमारा cater to a larger audience, why not? हाँ, तो अच्छा, इससे पहले कि आप जो इंतजामिया है वकील ऑनलाइन की, वो आ जाओ, ये बंद करा दे। हम खुद ही इजाजत मांग लेते हैं। बिल्कुल। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, अभी इसके बाद और गेस्ट्स आएंगे और हम उनसे बातें करेंगे। On the past tragedy, predicting future. If I simplify, कुछ और ही बोलो अली, क्या मॉडल? Would it always work out? Would it take away innovation? Would it take away the challenges of circumstances? All that needs to be understood before the policy comes. And sorry to say, please don't mind it, but we had technology glitches here in this session, right? We are talking about transformation. Are we prepared? I'm not saying don't do it. Please don't get me wrong. All I'm saying is, do we have the quality? Before you have that quality and you bring in processes, it can be catastrophic.
try to understand the consequences before you implement anything. This is something you do all in policy making. Now, what have we done for the e-platforms? Competition Commission is a very insignificant institution which sectors all sectors of economy. And what do? We are for fair play, right? Creating a level playing field, removing entry barriers, prohibiting deceptive marketing, and abuse of dominant position. These are the 3-4 essential pillars. I'll not go into the lecture. What have we done? I joined in 2020, in July. I've been earlier with Competition Commission, but I'll just focus on what we've done. Now, for 6-8 months, the internal team, along with the outsourced consultants, we have reviewed what's happened around. Because in order to be competitive, you must know what's happening. You can't just look inward as far as regulation is concerned, right? So we have looked at US, EU, China, and the regional side, the South Asia. And we looked, how can we regulate these e-platforms, or is there a need to regulate? And our starting point after all the review and all the understanding is we should begin and end with self-regulation. That's the ideal goal. Now, what do you mean by self-regulation? The highest form means that the regulators should be there to provide a minimum benchmark as guideline. So there are, since this has to be put up to the commission, and right now we are only 2 members and we require a quorum of 3. So hopefully that will be appointed soon, because it just happened 2 members have resigned. Not resigned, sorry, they have completed their term. This will be put as soon as we have a quorum, which we are expecting it to be soon. This is an acronym, A, C, and E. Now, A stands for adequacy and adequate disclosures. C is the competition principles to be followed and the cautionary lines. E is the effectiveness. And if you follow those guidelines, you'll ace it, right? Now, what are these? If you want, I can share it. Otherwise, I don't want to. I know I'm standing between their dinner, so I don't want to do that. Just major concerns that have come across over other jurisdictions. The first one, starting point, and that happens in Pakistan so much, is who are you dealing with? Your disclosure about the entity. That's so important, because we don't know next day that company disappears, that entity disappears. How do you get after them and what? So your adequacy is about anything and everything, as much disclosures and for transparency reasons. So and quickly, just adequate and sufficient disclosure, simple, understandable language, and all policies and hyperlinks to be displayed. Displaying proper company entity information. Redressal mechanism must be provided. The refund policy must be disclosed and bulleted. Advertisement directed towards children entail a higher duty of care, ensuring minimum product verification, proper description. Like, I will not name the website, but I have seen different properties advertised and someone else's property being placed there. So you have such a minimum. If you're providing that marketplace, you have a job to verify. You have a job to detect. You need to see that you are giving to the customer and the consumer the right information. Clear discount policy to prevent any predatory pricing. Caution towards exclusive arrangements to ensure that there is no anti-competitive behavior. Transparency in user review and rating mechanism, because the rating system says 5-star, 4-star. Please explain at the outset what is the modality of rating and how it's done. Data privacy and security, which is right now the biggest issue globally, and data has become the currency which we'll all deal with. So these are the broader bullets, and we have
technology for Pakistan right now, because we're really hurting, and this conference is very good for the lawyers, is the fastest recovery to our economic goals. I believe, and I think a lot of us, is to enable technology in the government. So there was a question on digitization of the government, transparency. Mansoor Ali Shah Saab gave some very good examples. And I remember when he was, I think, in the Lahore High Court, he hired an American company that had software to customize it for the Pakistani court system in Punjab. And it worked really well. So उन्हें एक और बात की थी ADR. So the law in the STTA Act is our ADR. We need, of course, we need your community's help. We need the Ministry of Law. We need the courts to help and give us guidance. So it's really exciting. The pipeline, just to share the numbers with this crowd, because they haven't been in some of the STTA meetings, $600 million worth of tech investments already in just 3 tech zones, Lahore, Islamabad, and KBK Manipur, right? No government funding. They're going to come build their infrastructure. Pakistan does not have world-class data center. Mansoor Ali Shah talked about a data room or something. It's actually a data center. For the Supreme Court, we can set it up. For the High Courts, we can set it up. Companies will come and invest their own because they have a recurring revenue stream. They put up the heavy equipment. So that entire enabling environment is the strategic purpose of STG. We don't call ourselves a regulator, to be quite honest. In our act, the word regulator is not there. We like to think of a facilitator to the technology community globally and in Pakistan. Thank you very much. And those are very impressive figures as well, $600 million worth of investment. Dr. Daud, you know, I mean, my firm belief is, so my experience in Pakistan in advising small businesses is that it's harder to do a regulated or registered business in Pakistan as opposed to an unregistered business in Pakistan or undocumented business in Pakistan. That comes down to very small initiatives or small requirements by the regulators that make it harder for smaller businesses or businesses to register. How do you feel about what Pakistani regulators could do for businesses generally? Like Amr spoke about all these foreign entities coming in and investing substantial amount of capital. What do you think generally can Pakistani regulators do to make their lives easier? Well, a very large number of things, but I'll just touch upon one principle, and which is about kind of this seesaw of kind of regulatory balance. I talked about the Higher Education Commission where I worked, and which has a quite a large regulatory mandate to regulate 200 plus universities and 3,000 colleges in the country. So there have been over time an imbalance where in a lot of places there was under-regulation. For example, faculty members were regulated in certain ways, and you know, the quality aspect of it was not regulated as much. It was just kind of number crunching, how many papers do you have, and so on and so forth. But there had to be some regulation to capture the quality element in promotions and so on, and that was not done. And in other areas, there was over-regulation. And I think that's a big issue because when we talk, again, coming back to digitization, and so one of the purposes to do that is to create efficiency in the system. And when we talk about judicial overload, one of the things is that why do cases go to courts in the first place? And sometimes it's because there are too many regulations and regulations that don't make sense. And then people adjudicate on that. Sometimes it's just technicalities and so on, and the whole project falls apart. So what we did then in the Public-Private Partnership Authority is something unique in the PPP framework in the country compared to the provinces, as well as the previous framework, where any PPP transaction that was happening in the country had to be approved by the PPP authority. Even if you had to outsource a canteen, for example, you had to kind of come and get an approval. So we came up with a sort of a list of triggers that would qualify a project for approval, and that at the end of the day would sort of carve out about possibly, it's a rough figure, about 80 to 85% of the transactions that implementing agencies, government agencies could undertake without that additional regulatory approval, which I think is helpful. This
kind of thing is sometimes unfortunately called regulatory guillotine, which is a very unfortunate term to use, which has its downside as well, because regulations exist to protect people from things, but it's a very sophisticated task to sit down and really understand what. वेलकम बैक, हम हैं इस वक्त सलमान अफरीदी के साथ और थैंक यू सो मच आपका टाइम. आपको कैसा लगा आज का इवेंट? आज का इवेंट बहुत ही नॉलेजेबल इवेंट था, काफ़ी सीखने को मिला है हमें. टेक्नोलॉजी जो है वो एक बहुत अहम रोल प्ले कर रही है दुनिया भर में. आपका जस्टिस सिस्टम में, लीगल रिफॉर्म्स में, और जैसे हमें यहाँ बातें सुनने को आई है तो पाकिस्तान को भी अभी ज़रूरत है कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें अपने एक्सेस टू जस्टिस को इम्प्रूव करने में, अपने लीगल सिस्टम्स को इम्प्रूव करने में. तो उस लिहाज से तो ये इवेंट बहुत ही एक कामयाब इवेंट मैं समझता हूँ. अच्छा, कोई इस तरह की तहरीक चलाई जा सकती है कि जिस मुल्क में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती हो वहाँ पे वकला के यूनिफॉर्म का रंग काला नहीं होना चाहिए? मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल होनी चाहिए कि दुनिया भर में जहाँ भी यूनिफॉर्म्स है, ये काफ़ी मुल्कों में ख़त्म हो चुका है. मैंने इंग्लैंड में भी एक वक्त में प्रैक्टिस किया था, वहाँ भी जो आपके बैरिस्टर्स अपेयर होते थे कोर्ट्स में, तो उनका जो सूट होता था दैट कुड बी ऑफ एनी कलर. खाली उन्होंने ribbons जो होते हैं, when they have to go into court they would have to wear that, and once they're out of the court they could be wearing whatever they were wearing in court and as per whatever they felt comfortable. अच्छा, अब कोई भी फील्ड हो, बी इट लीगल और एनी अदर, हमारा टेक्नोलॉजी के बगैर गुजारा है? नहीं, 21वीं सदी में तो बिल्कुल नहीं. और क्या आपको लगता है कि हमें तो चले इस बात की समझ आ गई है, लेकिन हमारी सरकार को भी इस बात की समझ आ गई है? हमारी सरकार को समझ आनी चाहिए अभी तक, और अगर नहीं आएगी तो काफ़ी नुकसान उठाएंगे, अपना भी और मुल्क का भी. बिल्कुल ठीक है. आखिरी सवाल मेरा ये है, अमूमन हम देखते हैं कि जब भी सरकार किसी चीज़ को रेगुलेट करने की कोशिश करती है तो वो एक्चुअली रिग्रेस करना शुरू कर देती है, क्योंकि थॉट प्रोसेस होता नहीं है. ज़्यादातर चंद इंडिविजुअल्स का विश लिस्ट के ऊपर चल रहे होते हैं. जब भी आपने एक चीज को रेगुलेट करना होता है, जो पॉलिसी बनानी होती है, जो भी करना होता है, वो एक इंक्लूसिव प्रोसेस होता है. उसमें आपने काफी लोगों की राय लेनी होती है और वो राय एनालाइज करना होता है और फिर आपने एक डायरेक्शन लेना होता है. तो वो डायरेक्शन में प्रोग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और उसमें जो भी मैं समझता हूँ कि any process has to be democratized. Unless it is not democratized, तो फिर ये regression होएगा. बिल्कुल ठीक है. थैंक यू सो मच. वेलकम. कहीं मत जाइएगा, अभी हम आएंगे एक और गेस्ट के साथ. They don't have to be there at the same time unless they press for it. Otherwise, we are giving as per the availability. All communication beyond office hours is even entertained. If Germans land up at us at 12 at midnight, then they are not available, and we respond to them also. So we are trying to not get stuck with procedures. I am very much an admirer of technology. We are doing. I'm just saying, when policy making, we need to be aware of the risks. And we have recently also, in our investigations, we have always been having these attestations to the forensic attestation that is required to FIA. Now we have got the approval and we are in-house establishing a forensic lab as well. We have access to Westlaw, we have access to the PLD, Pakistan Law House, we have access to Competition Policy Institute, all articles and everything that comes, and we have subscription for the Global Competition Review as well. So we try to keep ourselves updated as much as we can, and by law we are required to put all our decisions and all our inquiries and everything that we do in terms of decision making on the website. So the digitization process, that is the conversion process, has already been there since inception. The digitalization process, which is the process through which you make things more efficient, we are doing it in piecemeal, and we've made quite some progress. So yes, we are committed to this. I'm all for it, but I still believe that policy making requires open discussion, more deliberation. We have been part of Ministry of Commerce and done quite some work on that. Still,
there's more to do. That's what I strongly believe. And by the way, I also want to know, sorry if I'm taking that time, His Lordship, Justice Masood Ali Shah said that what to do with the backlog and how to prioritize. Now, we have been one of, I would say, we have really suffered on that end. In that sense, the delay is part. One basic constitutional issue, whether competition law should be a federal subject or a provincial subject, took over a decade to be decided, whereas it exists in over 140 jurisdictions as a federal law. So what can we do? I have just one request. I think matters of economic importance need to be prioritized. I'm not saying that means humanitarian cases should not be taken or political not. But in all your artificial intelligence, whosoever manages it, you have three distinctions: political, social, and economic. Which one you want to prioritize and how, that should be the test. But matters of economic importance, the Carters are eating away the economy, and we have stays grounded and they are not. What can we do about it? People say that you write down orders over 100 pages, but what good it is, because when it's not recovering the penalty. And I say, what can we do? There is a process which we cannot cut short. So I want to share and I want to highlight that in the cement carton case, there have been over 24 hearings and we have not been able to convince Sindh High Court that this is a matter of public importance and allow us to complete the inquiry where we have hardcore prima facie evidence to show that there has been cartelization. I'm not a person who will do that, but I want to thank Chief Justice Islamabad High Court that the number of cases that are disposed in time in Islamabad High Court is the best in terms of disposal. So thank you very much. Thank you. Thank you for that. I'm actually really glad for that insight as well, and seeing the challenges that you face on both the enforcement side and the delays caused there. Unfortunately, we're almost out of time. One last thought from Ms. Rahat and Amir about how can the public approach you in order to help you make laws that work for us? How can we help and support you in this journey? So sorry, in your first question, you asked about the one window. So STJ has attempted to take one window. Of course, in business, it's difficult in Pakistan. So we mapped out, we have a team that mapped out 86 days that it takes for a business to go through all, whether it's Ministry of Commerce, SECP, FBR, Ministry of Interior for visas, etc., etc. So we've called it the journey from red tape to red carpet, right? So we brought it down to 15 days right now. The software is being developed, and there's been about 100 states from different academia, corporate, and government. So we have a facilitation desk, improved with STZA. We have a helpline as well as an online bot, I think, we're developing to give out because technology zone is new in Pakistan. Silicon Valley started in the 60s and it was done. Shenzhen was an example we used. Korea started much later. India, at $150 billion export, they have over 60 large tech zones and about 400 tech parks. So it's the way the entire industry age, and we have that facilitation. So we want any more views, and we have a board which is headed up by the Prime Minister. वेलकम बैक। मैं हूं इस वक्त हबरा सिद्दीकी साहिबा के साथ, हेड ऑफ लीगल हैं टीसीएस में। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने का। कैसा लग रहा है इवेंट आपको, और ऐप पे आपने रजिस्टर कर लिया है या नहीं, और क्या अब फील्ड कोई भी हो, हमारा टेक्नोलॉजी के बगैर गुजारा है या नहीं? वालेकुम अस्सलाम। बहुत थैंक यू पहले इनवाइट करने का।
सबसे पहली बात तो ये कि अच्छा लग रहा है काफी एंड अभी आई वाज जस्ट टॉकिंग टू वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स एंड आई वाज जस्ट मेंशनिंग इस तरह के प्लेटफॉर्म्स एंड इनिशिएटिव्स इट्स सो गुड टू सी सच अ बिग टर्नआउट और इस तरह की चीज हमें अपने तमाम लीगल एक्सपीरियंस के अंदर बहुत कम देखने को मिली है एंड इट्स वेरी गुड टू सी कि इस तरह का टर्नआउट आ रहा है और ये इनिशिएटिव्स हो रहे हैं जिससे ये भी पता चलता है कि टेक्नोलॉजी के बगैर वाकई नहीं है गुजारा किसी भी फील्ड के अंदर there's so many people who resonate to the access of touch in everything to the access of information और हमारी स्पीड इतनी चेंज हो गई है अब लाइफ की जनरली इंफॉर्मेशन कंजम्पशन की स्पीड मतलब आप तो हम वॉइस नोट भी 1.5 और 2 की स्पीड पे सुनते हैं तो हमें इतनी जल्दी जल्दी हर चीज प्रोसेस करनी है कि हम डिलेज और मैनुअल काम और उस सब के अंदर इट्स अ लॉट ऑफ इनएफिशिएंसी एंड आई डोंट थिंक एनी फील्ड एंड एनी प्रोफेशन विल सपोर्ट इट तो यस ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी की बड़ी जरूरत है बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के ऐप तक नहीं रजिस्टर किया लेकिन इसके बाद जरूर जाके करेंगे आई विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन व्हाइल मूविंग आउट एंड आई रजिस्टर बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपको लगता है कि जब इंटीग्रेशन हो जाएगी, एम्बेड हो जाएगी लीगल के साथ टेक, तो वकीलों का ही नहीं, अदलिया का ही नहीं, बल्कि साइलिन का भी फायदा होगा? बहुत ज्यादा फायदा होगा और सबसे ज्यादा आई थिंक उन्हीं का फायदा होगा बिकॉज जो ऑपरेशनल नेचर में इन्वॉल्व है सारे प्रोसेस के अंदर वो तो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने इन एनी केस अपनी रोजी रोटी इस प्रोफेशन से कमानी है अब चाहे वो आप टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू करें या चाहे उनको लाइन में लग के और ढेरों पेशियां लेके करना पड़े बट वो तो अपना काम इसके अंदर चल रहा है क्योंकि वो इस प्रोफेशन के अंदर आ चुके हैं ज्यादा फायदा आई थिंक उन तमाम कंज्यूमर्स का उन तमाम लोगों का होगा जो कि सर्विस के रिसीविंग एंड पर है बिकॉज उनको जैसे कि अभी बात हो रही थी कि हम ई कोर्ट्स ले आए या हम हेयरिंग्स को ऑनलाइन कर दें हम वीडियो लिंक्स प्रोवाइड कर दें access to justice जब visible हो जाएगा तो a lot of people who are sitting at the back end not knowing what things are going on in courts not knowing what things are happening with their particular cases because a lot of people who would take their cases up go do something और पीछे उनको कोई आइडिया नहीं है कि क्या मामला है so those people can sit and witness whatever is happening तो आई थिंक उनकी अवेयरनेस बढ़ेगी प्रोफेशन की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी इन लोगों का एक्सेस ज्यादा बढ़ेगा और आई थिंक they'll be able to be more accustomed to the entire process of whatever happens in courts court procedures how legal things are done और आई थिंक उससे शायद लोगों को और ज्यादा इंकरेजमेंट मिले टू फाइट फॉर देयर राइट्स बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल उनके दिमाग में एक सर्टेन रिजर्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू दिस इंडस्ट्री विद रिस्पेक्ट टू द कोर्ट procedures the delays the corruption whatever you may like to call it just stating the elephant in the room तो आई थिंक जब वो देखेंगे तो ईजी हो जाएंगे शायद कि अच्छा मे बी इट्स नॉट दैट ऑल बैड और शायद वो भी एक्सेस कर सकते हैं और अगर कोई हुकूक है उनके जिनके लिए उनको लड़ने की ख्वाहिश है लेकिन वो डर रहे हैं उस प्रोसेस में एंटर होने से शायद वो डर थोड़ा कम हो जाए and then probably they'll be able to be encouraged to go into it and just get fight for their rights. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इधर ही रहिएगा, अभी फौरी तौर पे एक नए गेस्ट के साथ आने लगा। When Sharoz came to invite me, I suspected that probably he knew, or the organizers of this conference knew, what we were doing at the Islamabad High Court. How important today's conference is for us. I felt as if this conference was arranged to assist the Islamabad High Court in its struggle or its endeavor. We are judges. We started with a very important information that came to us internationally. And that was the ratings done by the World Project, Justice Project. I went to my village and people there actually believed that the courts in Pakistan have been rated internationally to be 130th out of 138 countries. I heard analysts saying this. I heard the politicians saying this. But then I went back
we went back to the report, and the report was actually altogether different. There were 8 basic factors that were taken into consideration, and there were 44 other sub-factors, starting from the quality of legislation, accountability, the status of human rights in the society, the criminal justice system, resolution of disputes. But that document was very important. I have to confess that it is very painful, the human rights violations in Pakistan as a Chief Justice of a High Court. I have to admit that it is not appalling, but it is embarrassing. I'm not defending the judicial system, but the reality is that the judiciary, particularly the most important tier of the judiciary, that is the district judiciary, has never been a priority of the state. The High Court, the Supreme Court, where the citizens who are termed as ordinary citizens don't have access. It's too costly for them. But that most important tier is not a priority. So we went to the district courts in Islamabad. It's a planned city. There was a master plan prepared by a legendary Greek town planner. For the last 60 years, the Supreme Court building was first constructed, then work started on the High Court building, but the district courts were established in rented commercial buildings in shops. The conditions there were deplorable. They were inhuman. The existence of those district courts in the capital of Pakistan in itself was violation of human rights. The litigants were not a priority. That is from where the Islamabad High Court started. The first priority was to shift those district courts to a place, to a complex where the working conditions are at least in conformity with a decent environment. That was achieved with great difficulty. The bureaucratic hurdles, because that was not a priority. But simultaneously, what we realized was that the High Court building is also under construction. But what we realized was that the consultants had no idea. They only believed in planning designing the brick and mortar buildings. We asked them to take into account the technological tools and also to cater for that in the buildings. The government had no provision for that. But what we achieved was that the district courts complex
would be completed within in the next 2 or 3 months. And technologically, we are trying our best to make all the courts e-courts and to provide all the available technological facilities that are available. But then we have been making efforts. Say, for instance, our High Court is probably the first High Court which uploads all its daily interim orders on its websites, so that the litigants can simply download their orders from there rather than applying and, you see, waiting for a certified copy. Likewise, during the COVID, Islamabad High Court was the first High Court which extended the facility of video linking to lawyers who were outside the country. And even from outside the country, they argued their cases. When we introduced the live streaming, now live streaming in my court is available and operational. But simultaneously, where technology has benefits, it also has certain challenges. We started receiving feedback from the litigants who did not want their disputes to go on the social media. There were matrimonial disputes. There were other factors, for instance, how to ensure fair trial. So these were challenges for which we have constituted a special committee. But again, what we understood was that, yes, we want drastic reforms, as Mr. Kasuri said, that we have reached a stage that there has to be a movement. And as Justice Mansoor Ali Shah used the expression transformation, what we require is a movement and transformation. We live in the 21st century, but we have a legal system inherited from our colonial past. We have the Civil Procedure Code and the Criminal Procedure Code, which are outdated, which were drafted by the English almost a century ago. But who was to do all this? We are judges. We have no expertise in technology. Technology and what we do as judges are worlds apart. We do not have expertise in institutional reforms. We are not experts of re-engineering or redesigning processes. We have been struggling. But then we found an answer from the Constitution. Article 7 of the Constitution defines the state. And in the same chapter are the fundamental rights and the principles of policy. Clause D of Article 37 makes an obligation of the state to ensure inexpensive and expeditious justice. The
President of Pakistan has a constitutional obligation, and all the respective governors of the provinces, to review the progress on the principles of policy and submit their respective reports to the legislatures. The President to the Federal Majlis-e-Shura, while the governors to their respective provincial assemblies. And the state, as defined in Article 7, includes the federal government, the Majlis-e-Shura, the provincial governments, the provincial legislatures, and all those organs that are empowered to raise, to impose tax or cess. As I already stated, we did not have the expertise. We were not experts. Yes, we had ideas, but we could not put those ideas together. We were dependent financially. We are not independent financially. As someone suggested, we could not approach directly the donor agencies because we did not feel that to be appropriate. So we did find that answer in the Constitution, that it was yes, it is our responsibility, but it's the basic responsibility of the state. So what we did was, we requested the government, we invited them, and we invited the Planning Commission. It is very heartening to see that Malik Ahmed, who is the chairman of Public-Private Partnership, he's here, and the Planning Commission has appointed him as a focal person. So the first idea was to set up or create a platform for judicial reforms so that they are dealt with professionally. But it should be led by the state. We are one of the stakeholders. We don't have expertise in technology. It is the state which can hire those expertise, which can hire the consultants. And we told them that as things stand today, we want to start with a clean slate. And we will work together. And our vision is manifested in the title that we have given it. And the title is, because it was important for us that what do we want? It was reimagining the judicial system in the 21st century. Overhauling the judicial system so that justice is seen to be done. This was our vision for the government. And I must compliment the organization. Someone spoke about alternate dispute resolution and mediation. Yes,
most important. But more important is for the state to not only ensure that the dispute resolution is expeditious, there should also be effective prevention of disputes. I can refer to you certain judgments that we have authored in the Islamabad High Court. Reforms are not only required, it has to be an integrated movement. But we have already laid the foundation for that. We have created that forum. And I will invite all of you with all these bright ideas to come to that forum. Let us bring the change. It is the user of our system, our judicial system, who must be satisfied. The user rightly is not satisfied. Because for the user, it's a very elitist society, and I'll be honest about that. Why should only the Supreme Court and the High Court be in focus? The district judiciary should be in focus. So it also requires changing of mindsets. There is no other option than to change ourselves, to reimagine the judicial system in the 21st century. Societies which do not have effective dispute resolution mechanisms, those societies end up in chaos. So, at the Islamabad High Court, we have already taken this initiative. We have created that forum. But we need everyone's help, everyone's assistance, everyone's cooperation. And anyone who's interested with the ideas, I would suggest to contact the focal person who is the chairman of the Public-Private Partnership Authority. We also we had a very, very useful meeting with them. And in the course of meeting, we suggested to them that probably one of the most significant project for them to consider would be a public-private partnership in mediation and alternate dispute resolution field. So it's a start, and I'm grateful to the organizers of this conference that they arranged it, and the young professionals had brilliant ideas, but those ideas have to be given effect. And the forum has already been created and set up. As a Chief Justice, I can tell you, even this is a very, very elitist gathering. I wish today's or some other such gathering is held in the Adiala prison to see how people are suffering, to see, because
At least I witnessed that and I experience it every day. I don't want to say it again, but I have to confess that there has to be a change in mindsets. This elitism is the major cause of grave human rights violations. This elitism has to come to an end. The Constitution, the fundamental rights in the Constitution have to be given respect. And that is what will bring the change. As far as Islamabad High Court is concerned, I, on behalf of the Islamabad High Court, invite all of you to come and join us on the forum, which is, we would also want all of you to reimagine the judicial system in the 21st century. Let the technology bring that transformation, and let us all put our hands together to bring the miseries and grave injustices happening in this society to an end. Thank you very much. Thank you, Your Lordship. Thank you so much for gracing us with your time. With that, the Islamabad chapter of the Technology for Justice Forum has now come to an end. I would like to thank everyone for attending, all the organizers, all the media persons. Thank you so much for coming today. Dinner has now been served. You just go straight from the corridor, take a right, and in the upstairs lobby. Thank you.